भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, मकबूजा कश्मीर में मजीद 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस और बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने बारहमूला और गंदरबल के इजलास से 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक NIA के एहलकारों ने 2 नौजवानों राशिद मुजफ्फर गनाई और नासिर मीर को जिला बारहमूला के कस्बा सोपूर से गिरफ्तार किया। भारतीय पुलिस ने जिला गंदरबल के इलाके सहपुरा से अरशद अहमद मीर नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। भारत के इलाके रांची में हिंदू इंतहा पसंदों का कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद। भारतीय रियासत झारखंड के इलाके रांची में हिंदू इंतहा पसंदों ने 3 कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया और इन्हें पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किया। ज़राए के मुताबिक रांची में तजारत की गर्ज से आए कश्मीरी नौजवानों बलाल अहमद, शबीर अहमद और वसीम अहमद को हिंदू इंतहा पसंदों ने गन पॉइंट पर पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किया और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा इन्हें धमकी दी कि वो फौरन शहर से चले जाएं, नहीं तो इन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। बलाल ने सहाफियों को बताया कि वो मौसम सरमा में गर्म कपड़े बेचने के लिए रांची आते हैं, ताहम गुज़श्ता चंद दिनों से इनके साथ मुकामी लोगों का रवैया अचानक बदल गया है और वो मुसलसल इन्हें हरासा कर रहे हैं। उधर कश्मीरी नौजवानों ने खुद पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले और पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किए जाने के बारे में डोरांडा पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी दरख्वास्त दी है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर TV USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर TV USA के साथ मैं हूं डॉक्टर सहरिश। आइए चलते हैं आपको आज की खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा है कि पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मंसूबे खित्ते की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए संगे मील साबित होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुआशी तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रही है। पार्लिमानी कमेटी बराए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद मंगला मीरपुर एक्सप्रेस वे गेम चेंजर मंसूबा है, इसको स्पीड अप किया जाए। इसकी तामीर से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तमाम अजला मुख्तसर रास्ते से आपस में मुंसलिक हो जाएंगे और ये मुल्क के इस हिस्से के राब्ते के लिए मुख्तसर तरीन शाहराह भी होगी। रोटोशोंटर टनल के जरिए मशरकी शाहराह की तामीर से आज़ाद जम्मू और कश्मीर और पंजाब को गिलगित बल्तिस्तान तक रसाई के लिए मुख्तसर तरीन रास्ता
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सिख वफ्द की नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने पर जोर दिया गया है। सिखों के एक वफ्द ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इन पर पाकिस्तान में करतारपुर साहब गुरुद्वारा की यात्रा को यकीनी बनाने के लिए करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने पर जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब, दिल्ली और मकबूजा जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं के 11 रुकनी वफ्द ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सिखों की करतारपुर यात्रा को मार्च 2020 में कोरोना वबा की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। सिख रहनुमाओं ने 19 नवंबर को गुरु नानक देव के यौम पैदाइश से पहले करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का मुतालबा किया है। भारतीय रियासत त्रिपुरा की पुलिस ने 2 सहाफियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। भारतीय रियासत त्रिपुरा पुलिस ने रियासत में हालिया फिरकावाराना तशद्दुद की रिपोर्टिंग करने वाली 2 सहाफियों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर दी है। ज़राए के मुताबिक FIR कंजन दास की तरफ से दर्ज की गई, जिन्होंने दावा किया है कि समृद्धि के सकूनिया और जहां सवरना नामी 2 ख्वातीन सहाफियों ने पाल बाजार के इलाके में मुसलमानों से मुलाकात के दौरान हिंदू बरादरी और त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की। याद रहे कि त्रिपुरा की पानी सागर सब डिवीजन में 26 अक्टूबर को हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद के मुजाहरे के दौरान मस्जिद और मुसलमानों के घरों, दुकानों और दिगर अमलाक पर हमले किए और इनकी तोड़ फोड़ की, जिसके बाद से त्रिपुरा में कशीदगी पाई जाती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का इस्लामी तशख़्ख़ुस, रवायात और सकाफत भारत के निशाने पर है। पासबान हुर्रियत के चेयरमैन का बयान। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है और इलाके can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. In US, and obviously has a very good heart for humanity, has done a whole lot of work for disaster relief in Pakistan, especially after the earthquake of 2005, has built an hospital in the city called Tikar, and travels around the world wherever the need for the humanity is. He is there. He is an activist. I'm very honored to have him on the show. Todd Shia. Todd, welcome to the show. Thank you, Mujib. It's an honor to be on your program. Thank you. And I know you are joining us live from Sri Lanka. So what triggered you to be in Sri Lanka today? Well, for the last 16 years, I've been invited by a family that I helped out during the tsunami when it happened in late 2004. So I came in January, February of that year, of 2005, after the tsunami, to do relief work.
So I've been invited here, and I've never had a chance to go back. But this year, I decided to take advantage of some really good pricing flights, and stayed here at a place in southern part of Sri Lanka where I worked. It was hit by the tsunami, just to kind of meet that family and also see how much the country and that area has changed. And it's amazing because it was really, really destroyed when I was here last time I saw it. And to see it built back up now, it was really neat to see that. And it's a beautiful country with beautiful people. So it's just been a nice visit. In 3 days, I'm going back to Islamabad, and then I'll go to the States, I think on October 15 for about 6 weeks of fundraising for Pakistan. So basically, the Sri Lanka trip was just to go back and bring my family and see the area that I had helped out in before. By profession, you're a musician, and what triggered you to do what you do now as a full-time, dedicated yourselves to serve the humanity, and you're there wherever the need is. So can you give a short introduction of yourself, please, to our audience? Sure. Well, I played music my whole life. I basically had a childhood where music was kind of my one thing that I did well and that I was interested in. I lost my mom when I was 12, and she had given me a guitar before she died, and I kind of used that guitar as a way to stay close to my mother. I practiced it all the time, and unfortunately, I got into drugs when I was, in my teenage years. But I finally was able to get out of drug addiction and play music professionally, and used music as a way to live my life. And I played in many bands and performed all over the United States in my youth, and finally got a record deal in 2000. I went to New York, and the gentleman, Sid Bernstein, who brought the Beatles and the Rolling Stones to America and worked with many great performers like Tony Bennett and Frank Sinatra in the 60s and 70s, and I think even as back as the 50s. He worked with some of the biggest names in the business and brought the Beatles to their famous concert at Shea Stadium. And so he was a very storied music icon in the music business, and he liked my music and he signed me. But by that time, I'd already soured on some of the music business side of things. It's kind of it's a business that has a lot of problems in it, and there's a lot of I guess you could say obstacles and pitfalls and perils in that business. And I really loved the music, to do the music, but I didn't like the business part of it so much. So when 9/11 happened, I was in New York to play a big concert for a bunch of big record labels to get my big break, and Sid had set that up for me. But instead of that concert, which was supposed to be September 12th, September 11th happened, and I was in the hotel and I saw the whole thing unfold in front of me. And I went down to Ground Zero later that day, and I worked there for a week getting supplies for doctors and rescuers and firemen and police officers, and getting them things like food and medicines, and even for the rescue dogs, food and supplies. So from that point on, it really changed me. I realized down at Ground Zero that I was actually had a natural ability at logistics and getting people who are trained to save lives and go into destroyed and collapsed buildings, which I had never had any training for, and never thought that I would be able to do anything like that. But being in that situation, I realized that these people who are trained for these things, they need people to help get their supplies together and back them up. And so that's what I did. And I realized I was quite good at that naturally. So after that, I started going to disaster zones and helping out wherever I could. Sri Lanka here being one of them. I've also been to Haiti, Japan, the Philippines, Iraq, the Rohingya camps in Bangladesh, Japan, Haiti, and of course, Pakistan earthquake in 2005. I had just come home from working at Hurricane Katrina in New Orleans. Same day of the earthquake, I got back home
And I was sitting with my son. I just had gotten in the door, and we saw this terrible earthquake on the news. So I immediately said, I'm going to Pakistan. I knew I was going before I had any idea where I would go or who I would go with. Then I called the Pakistan embassy. I got their number off the computer. They put me in touch with some group that I had never heard of at the time, the Islamic Medical Association of North America, and another group, APNA, the Association of Physicians of Pakistani Descent of North America. Two groups that I work with and collaborate with a lot now, but at that time I didn't know them. And so I joined them in their mission, their joint mission to bring doctors to the disaster zone. And I worked with them in logistics for a couple weeks. And after 2 weeks of working in Pakistan, my plan was to go back home. And but the doctors said, hey, would you stay? Because a lot of us have to go back to our practices and to our hospitals, and we're going to send new doctors, new teams every week or two. So we need somebody like you who will keep things going and keep the tent hospital going and supplies coming in, and then pick up the doctors and drop them off at the airport and all those logistical things. You know, transportation, communications, supply, liaison with other organizations, even their roti in the morning and their nashta and these things. So I said, yeah, I'd love to stay. So I ended up staying in Pakistan. And then after a couple of years, I created, after about a year, I created my own organization, Comprehensive Disaster Response Services, which is now registered in both Pakistan and the US as a nonprofit entity. And it changed my life, of course. And now I'm married. I have a 4.5-month-old baby boy, Muhammad Sultan. I became a Muslim in 2009. So my life completely transformed by going to Pakistan. But I wouldn't change a thing if I could go back to that moment where I decided I'll go to Pakistan. It seems that Allah opened up many doors for me after I made that intention and that decision. Wow, what is an inspirational story. And I was just carried away with it. I was just traveling with you throughout your whole lifelong journey. MashaAllah, that's beautiful. I hope everyone else can follow your lead and try to do what you are doing for the betterment of humanity. Tell us about your hospital that you have built in Chikar. How big is this hospital? Who are the primary beneficiaries of this hospital? In what are are there any charges that are involved that they have to pay? How many bedrooms? Give us the rundown of the hospital that you have built in Kashmir. Sure. Well, actually, I didn't. It's kind of a little bit more to it than that. That back during the earthquake, the rural health center in Chikar was totally destroyed. Government rural health center, and the rural health centers in Pakistan are classified. They're almost a hospital. They don't have the ICU and some of the things that a hospital has, but they have many things that a hospital has. They're like one rung below a hospital, and they're above a basic health unit. So in this area of Chikar, it had been totally destroyed in the earthquake. So we started out in tents. Then we rented a building that had survived the earthquake because it had been built with steel reinforcement. And we used that place for several years. And it was the Pakistan Navy and the Pakistan Navy Women's Association that actually built the building for the new rural health center. But it wasn't until 2010 that opened. So we worked there for a couple more years. So we were almost 7 years in Chikar. But in 2010 and 11, the floods happened. 2009 was the SWAT crisis with the Army operation in SWAT. So we actually moved our operations after 2011, even though we had in 2009 started working in SWAT and other places in Pakistan. We still remained in AJK, and even to this day we work there. But that center we turned over to the government officially in 2011, and then we stayed helping them until 2012. But it was a government-designated rural health center that was rebuilt. So at some point, it had to go back to the government, and the NGO helped run it while the government healthcare system in AJK was being reconstituted and rebuilt. And so we assisted, very proud of the fact that we assisted the AJK Department of Health with that process. And but then
when the floods of 2010 and 11 happened, and then of course the 2009 SWAT crisis, we started working in other places because the necessity was there, the acute need and the emergency was in other places, and our donors also preferred to give to these more immediate emergencies as well. So we had more funds and money for those disasters rather than the earthquake, which had happened 5-6 years before at that point. So what are the projects that are underway right now and where those projects are in Pakistan? Sure. Well, a lot of what we did up until 2013-14 was respond to disasters with logistics, food, tents and blankets, and a medical team. We had our own doctors and team and logistics people, operations people that would work with visiting volunteer doctors and make sure that they had everything that they needed to do their job so that they didn't have to worry about any of that. Because what I learned from 9/11 through all these disasters that I've worked at is if doctors and people who are trained to save lives have to spend their time getting their supplies together and worrying about their transportation and communications and supplies and pick up and drop off and communications and transportation, all those things, then they get tired out and they don't have time to do what they're trained to do. So we try to leave the life-saving part to them, and then we handle all the backups so they don't have to fool with all those things. And our ongoing partnership with Islamic Medical Association of North America and even APNA, they've supported our Mother and Child Health Center in Northern Swat, which we have been running for the last 11 years. We also have a child health clinic in Karia on the GT road in between Islamabad and Lahore. So those are our 2 health facilities right now. We also do medical camps in emergencies, disasters, or if we get a request from a community member that wants to have, there's some need for a medical camp in their area, or a doctor in the States wants to serve in their home village. And so we do these kinds of things, but we have 2 medical facilities. But after 2013 and 14, when we did a medical mission with Imran Khan Foundation in Banu and Lucky Marvit for the North Waziristan Army operation, we worked directly with Imran Khan Foundation. They were setting up tents and camps, and they were giving water and food, but they needed a medical aspect to their mission because a lot of people were needing medical services. So they hired our team basically to come in and do all of the medical work for Imran Khan Foundation. So we took care of about 175,000 patients. It was supposed to be just a couple months mission, but then they asked us to stay longer. We ended up staying until a year during that period. But after that very successful mission was over, and of course we had a program audit, independent program and financial audit from Imran Khan Foundation, and they were very happy with our work. So we're very proud of that mission. But after that, we started doing things outside of just disaster relief. We started using our network from all the places and because we'd worked in every area of Pakistan up to that point in disasters. So we started doing work in water projects. So now we have over 500 water projects that have started from then till now. Everything from reverse osmosis water filtration to tube wells and to the solar powered systems and to the smaller hand dug wells and the hand pumps. So we're doing those type of projects everywhere with the help of mostly Pakistani American donors. We also have an animal welfare project which concentrates on empathy and compassion towards animals and teaching children and people that by taking care of the animals, we take care of the environment and the society, which has a healthcare effect on positive effect on the whole society and the community. And then Allah blesses us for having compassion for the animals, because so many teachings from the Quran and from the Holy Prophet, peace be upon him, how kind to animals we should be. So I believe that Pakistan, in order to be fully blessed, we should also be kind and take care of the animals. And by virtue of that, we also help take care of the health of children. So we have that project is very important to us. And we have a couple donors that have really supported that project to get it off the ground. And that's helped us start the very first rescue ambulance service for animals in Pakistan, with ambulances in Karachi and Islamabad, Lahore, Faisalabad, Abbottabad, and Charsada, Peshawar area. Then we have a House of Blessings for widows and orphans. And we're expanding that because we've had so many donors interested in that. Basically, we take
mothers and their children who've lost the father, and in some cases, both the mother and father. And we give the children a very loving home, the best education, very good nutrition, counseling, career counseling for the mothers, and we set them up for independence and for success and economic opportunity and education in the future, so that later one day they can become donors of ours and be independent of having to live at the House of Blessings. So it's our first House of Blessings has been running for over 2 years. It's been such a success, such a transformation of the children that we have decided that we're going to be making more House of Blessings. So we have plans for Lahore and Faisalabad and Karachi. And we're starting the second House of Blessings this month. Just next week, our first family is coming into Rawalpindi House of Blessings. Wow. You have a whole lot of projects going, and it requires a lot of time and a lot of money to run all these programs. And you got to have a lot of actually. Thankfully, we have the Pakistani American community who is taken care of donating to us so that we can do these projects. And in many ways, we do partnerships with them, whether it's Apna, Imana, or individual doctors or individual Pakistani Americans who want to do something for their home country. And so we do everything from large projects to small projects, depending on what the donor wants to do. But we have a logistics set up and a network all over Pakistan. So we're able to manage a project for somebody that is in States, wants to do some good, but needs a team. So there's people that have money, but no time. And we have people on the ground who have time, but no money. And we have a great team. We can send funds. 501c3 gives a tax deduction to Pakistani Americans. And then we have a very, very capable and audited finance department who has internal audit and external audit every year. So we're able to track the funds and let people know what we've actually done with their money. And then I almost forgot the other project we're doing. We're feeding 600 people every day with a mobile food truck in the Pindi Islamabad area that's funded by the Pakistan Army Fauji Foundation, Mary Petroleum. And so that's every single day, 600 poor people at a different location get hot meals. Wow. And your job is basically your organization. What they do is their function is to have a sort of a liaison between the donor and the end user. We are the NGO that actually does the operation, but we also have the way to send the money and to look after the money, make sure that the donor understands and can see how the money is being spent. And because we're registered in US, they get the tax deduction. So basically, we're able to handle for any donor or organization in the States that wants to do something, but they don't have time to implement it on the ground themselves. We're able to get the money over and implement it and monitor it on the ground for them. We also do work with some people on ground in Pakistan who have a donor in the States, but they have no way to legally send money across through a charity. So we administer those funds and keep track of them, send the receipts to the original donor, and make sure the project is done the way that they want it to be done. So we do, in a few cases, manage that as well. So if I were to run a school and open up a school in a remote village of Kashmir, somewhere where a school has not been provided before, and that is sponsored by a donor from US, you will be able to manage that school so long as funds are being provided from US or from any other donor. Okay. Absolutely. And we've built 3 schools in AJK. And there's another school in Chitral, an organization in the US called Share to Care Foundation, run by a wonderful lady named Naheed Khwaja. And so Naheed, she sends us the funds, and then we send the funds from our US account over to Pakistan, and we administer those funds. We send them to the school in Chitral, and then the kids have a great school that Naheed has built. And runs with her team, with her local team, and we just make sure that the funds are sent over. So it can be either a complete project that we run everything from, build everything and run everything and operate everything from the ground up, from the logistics and hiring the teachers, hiring the doctors,
Or if somebody already has a setup on the ground or wants to make their own setup on the ground, but they need somebody with which to administer the funds for them, send them over, we can do that too. So I'm going to dedicate the rest of the 10 minutes of the show on your visit to US. How are you planning to raise funds? And we want to make sure that the word of mouth goes out to as many people as possible here in the US, so they can not only support all these projects, but also something that they wanted to do it for the country that they came from, but they didn't get a chance to do it or didn't have a time to do it. So give us the rundown on the program that you have scheduled next 6 weeks when you come to US, and how are you planning to raise funds? So people who are new to this introduction of your organization, they can take part in it, and at the same time they can donate and come and make your program successful. Sure. Well, people can go to cdrsworld.org and look at some of our work. That's cdrsworld.org. They can email me from the page. They can look at the projects that we do. And then if they do want to donate, they can pick the project. Like if somebody wants to donate to House of Blessings, they can choose House of Blessings. If they want to donate to the Animal Project or one of the other projects, they can just choose or leave instructions for how they want the project to be implemented. If they want to do their own project for water, then we can do a water project in their home village or ancestral village or wherever they'd like. So people can kind of choose how they want to support or work with us on a project. From October 15 until December 5th, I'll be in the States. I'll be in San Francisco and LA. I'll be in Washington, D.C., New York, Boston, Chicago, Houston, and I'll be in Dallas, where you're at, on the 22nd, Friday the 20. I'm sorry, it's October 24th, Sunday, October 24th. We'll be in Lewiston, Texas, at the Music City Mall, and that will be just basically a dinner, and people can come and hear about my work and choose how they want to support. And whether it's $1 or $1 million, that's we don't put forth a hard sell. We tell people, here's what we do, here's what we can do for you if you want to do a project in Pakistan, and then let people decide for themselves how much they can give or what they want to give, or if they want to give monthly, or if they want to give one time, or if they want to give once a year. Well, everything is available to them. It's just their decision which they would like to support. Some people, they send $1,000 and they say, use it wherever you need it most. And then other people want to do a specific project in a specific place. So we can do either of those things. I'm going to be in Dallas because APNA is giving me a humanitarian award on the 23rd at their banquet. So that's why I was coming to Dallas. So I thought, since I'm coming to Dallas for the APNA event, that I would also try to put together an event there. So thankfully, Mr. Nadeem Zaman introduced me to a couple of his friends, Nahid being one of them, who has a place at the Music City Mall and is helping me set up the event. So, there's just wonderful people in the Pakistani American community who have been willing to step up and help me with fundraising and with projects. And without them, I wouldn't be able to do anything, Just for the sake of understanding, if, I'm sure you have all these chalked out somewhere. How much would it cost for somebody to sponsor a House of Blessing or water project or animal rescue project? Do you have the numbers put together, or it could be any number? Yes. Well, the water projects go from $450 for a hand pump well on up to $10,000 for a solar-powered reverse osmosis water filtration unit that can put out 10,000 gallons of clean drinking water a day to basically a large village or small town. So it can be a very small project or a large project. And included in the cost of those is filtration, regular maintenance, teaching the local people about how the project works, and monitoring and evaluation, so that if that project breaks down or if the well dries up, then we can come back and fix it. So
we don't just build the projects and leave it and go away. We keep monitoring and keep making sure that that water is safe to drink and that it doesn't break down or dry up. So, and of course, in these water projects, you have to monitor them, because if you don't monitor them, then invariably some projects do end up drying up or breaking down, and you have to make sure that they can be fixed. Out in the field, we've seen a lot of water projects in that condition where they don't work any longer because somebody built them, but they didn't keep them going. So built into the cost of our projects is the ongoing maintenance and monitoring of the projects. For our House of Blessings, if somebody wanted to do their own House of Blessings, it's about $10,000 US for the startup costs to start up, for the furniture and for the staffing and for the just to start the project. And then it's about $3,500 to $4,000 every month for everything from the food and the school fees and the healthcare needs of the children and everything that house needs to run to keep going every month and take care of those people for about 6 to 8 families at each house. That's about the cost of it. Now, if somebody just wants to sponsor one child, then for about $100 a month, it covers everything from their food, clothing, healthcare, and any kind of thing a child needs. But the most important thing about that aspect is we want these children to have as normal a family environment and access to counseling and access to any the best education and the best healthcare that any child in any family would get. So these kids have come from situations where the mother has lost the father and he's died, and now they're in just horrible poverty and stress, and the mothers have to work. Usually they're uneducated and they have to do some kind of job like being a maid, and their children don't get to go to school, and or they go to a very poor school, and they're just in such of a stress because of the economic hardship they're in and the difficulty they're in that they don't concentrate very well in school, so they fall behind. So we're lifting these children up and giving them the best of everything so that they can catch up. And it's amazing to see that we just got word that one of our girls at House of Blessings Islamabad just got I think 3rd position in her class, and she's just symbolic of what we're trying to do that these kids that were often many grades behind have now caught up, and they're getting academic awards and high positions in their classes now because we have been able to lift them from a poverty situation, give them the nutrition and the support they need, and then they thrive. It's just amazing to see. And there's a lot more of that's needed. So we would love to work with anybody out there that wants to do this kind of work with us. Todd, thank you so very much for being on the show. And I'm just going to have to leave it right there. Our time is up. Looking forward to meeting you in person and welcoming you in Dallas. And we'll be there to support you and make sure that your program, your visit goes a success here in the U.S. Thank you for what you're doing, and may God bless you for that. Jazakallah. May God bless you too. Thanks, Mujib. Appreciate it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOKTV-Voice of Kashmir TV. I'm joined by Ambassador Dr. Jameel Ahmed Khan, who is the former ambassador to Pakistan, and he is a seasoned diplomat who analyzed an analytical point of view on the current situation. We are going to talk about the current Prime Minister of India's visit to Washington, his record of human rights violation. He has on his record one time when he was the Chief Minister of Gujarat, he burned live in front of the world over 2,000 Muslims in the state of Gujarat. And then he is an active member, actually one of the leading member of RSS, which is an organization that derives its ideology from the Nazi of Germany. And at one time he was banned to enter in USA, and unfortunately the situation has changed. And now he's the Prime Minister of India. He is being welcomed in the White House, which considered to be the symbol of democracy for the world, as well as current President of US, Joe Biden, who claims to be the champion of human rights, is welcoming him. And there's a contradiction that we will talk about it. Ambassador, welcome to the show. Thank you very much for having me. What do you make of Prime Minister Modi's visit to Washington? The Prime Minister visit to Washington is in two parts. One is obviously he's come to the United States for participation in the United Nations General Assembly. That's one part, but the Washington visit is altogether the geopolitical visit of of Modi, where they are going to discuss sets of the geopolitical development and dynamics in the region and around the world, and where the two countries' leader, Joe Biden and Modi, it appears they are going to discuss and draw further strategies along with their team of Indo-Pacific Ocean, and what way there could be resistance of all kind against the China. So that is one aspect, but at the same time, Modi would try and attain his further stature in terms of the fact that he would like to have some cover what he has been doing during his past tenure of prime ministership in Kashmir in particular, and in India as well. So basically, it has again two dimensions. One is India always utilizes these global geostrategic dynamics and the interest of US in their own interest of basically advocating and advancing their overall plan of RSS, whose political wing is BJP. So, and once I indicate that at the macro level, that is what it appears, that they would like to have a cover against all kind of violation which they are making in Kashmir, and against the Citizens Act in India, against the atrocities against minorities in India, and against the lynching of the minorities, particularly in Muslim in India. So if that cover is not taken, then in that case, India can be penalized and could be brought under the international law and international justice. So the other dimension from the US point of view, from Joe Biden points of view, he has two choices. One, that he is the proponent of the human rights. This what as a senator and as a vice president he has been mentioning and he has been advocating. And then second aspect is, how is he going to attain or advance in his mission, in his foreign policy goals in this region, particularly the Indo-Pacific Ocean against China. The policy which was there against China during Trump time, or particularly during Trump time, it was evolved even much before. But the same policy, almost with different wordings, is being told by Joe Biden.
So having said so, very recent Quads meeting and the agreement of this Australia, UK, and US, all these things, if we have in our mind, then this what is going to be, some of these points are going to be perhaps discussed with the Joe Biden meeting. But the overall behind the curtain aim and objective, it appears, of Modi government and Modi is the RSS-based all the plans which they have, even for future of this India. So and the way they have planned, the Modi administration has planned to deal with Kashmir and to deal with the minorities, particularly in Muslim. So that cover, I guess he will have it. And what way can he have this cover from Joe Biden? Joe Biden so far has hardly criticized, hardly has mentioned, hardly has taken any resolution into General Assembly or Security Council, or hardly has given any indication that if nothing else, he might as well go for some sanction in light of the human rights violation which is taking place in India. So he has not done any of these things, and I am not expecting that Joe Biden is going to mention about human rights violation in India, even in his speech. And probably, if I remember it correctly, there was hardly any mention of Joe Biden in the General Assembly speech, or even in this meeting of the joint communique, which I'm expecting. I don't think he's going to make a very strong mention about the human rights violation or what is happening around in India. So what does it boil down to? It boils down to one thing, that India now, as a countermeasure against China, is acceptable in all forms of whatever it does against the human rights violation, which comes under the ambit of violation of international law. And what is that international law? If such violation takes place in a territory which is disputed, such as Kashmir, then Geneva Convention Article 49 is applicable on that. And if that happens, then that also attracts the statutes of International Criminal Court, Article 8 of the International Criminal Court. The same article is being applied by other Kosovo and other places, but this article, I guess, would not be applied against people who are doing these atrocities, including Modi. See what happened about Gujarat. Gujarat massacre had taken place. Modi was fully involved. The European human rights investigation teams had proved it and had found that he is the person behind the whole game of Gujarat massacre. And the US itself had imposed travel restrictions on Modi because of the Gujarat massacre. But once he became the prime minister, the interest converged, and the interest of India and US converged. So everything is fair in such achievement of goals of their foreign policy and the interest. So therefore, the world will keep having such human rights violation at so many places, whether it's Kashmir or Palestine or Syria. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change it. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger.
Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Why would US will think that India will ever be loyal to or of any use in your analysis about the China Pacific Ocean Treaty that they are trying to utilize India against China? Don't you think that they would US is making a huge mistake, because compared to Pakistan, who has not only sacrificed 80,000 people in order to fight the war that they were not even part of. So why do you think the US would trust India in first thing? And secondly, why on earth, what is that main reason that the President Biden would not talk to Indian Prime Minister during his meeting in Washington, that he need to stop human rights violation, protect the rights of the minorities, give the due rights to the people of Kashmir, and accept that the Muslims living in India are the Indian citizens, why they are being treated as second-class citizens? Well, if we assume that the Joe Biden and his administration are the proponent of the human right violation in its true sense, then yes, all these things might as well be considered during the meeting and might as well be made as a talking point. But if we review the development of the geopolitical situation in this entire region and the way US tries to attempt to engage with the people and with the world, has now been amply clear now that US goes for such interest which may compromise all these international values and international law. And I just gave you the example. Now, second is why US should trust India. Now, US feels, I guess, in my opinion, US feels that they have been able to enter into a legal instrument, that is the international legal instrument, in which they have the pact, the Defense Cooperation Pact, and they have the Pact on Information Technology Exchange. They have about 2-3 more pacts. And by virtue of which Indians have given them Gujarat seaport in the garb of logistics, but that could be utilized and probably being utilized for other military purposes as well. So that is one aspect. And second aspect is India feels that if they align with the US, probably they'll be much better off. As compared to how much better off? Now, India feels that the US in technology, they are now have the joint ventures on manufacturing of so many defense armament, equipment, missile systems,
aircraft assembly, aircraft maintenance. So all these things India won't have got it. India got the best of the best from Russia. And once the Cold War was over, as you indicated, they are trying to get the best of the best from here. Now, whether they would be utilized, whether they would come up to the expectations, excuse me, come up to the expectations of the United States against China, I think the time would be the best judge. India, the way they are posturing themselves vis-a-vis U.S. policy, I don't think they would be left with much choice but to get involved into this dispute between the two big powers. And this Cold War has already started between China and India, and their interest is being collapsed. See what is happening around in India and Indo-Pacific Ocean. You know, there are quad military exercises. There are submarine being sold by India, the nuclear submarine, the submarine contract being cancelled of France, and there are exercises. There are military exercises between Japan, Australia. The military exercises between India, Japan, Australia. So all, and then there are sailing exercise in the state of Malacca, infuriating Chinese, and Chinese getting compelled to give a very strong statement that you are crossing the red lines. So once we review all, and then latest Quad and Australia, UK, and US ACOS agreement, China has also raised its voice on that. So India is now a major player in this entire posturing and entire the alignment of the US interest and the combined converging interest of the Quad members and the other members in that region, including Philippines and Indonesia, Malaysia, Singapore, and all these countries. So from that perspective, if we see, India might be thinking that they can get away from this development, but they are reaching to a level from where it will be very hard for them to return. And if they return from there, then they will have to pay. They will probably be made to pay a heavy cost, not only in the light of international laws and agreements, what has been done between these Quad countries and US in particular with India. Not only by that, but otherwise also their deployment, their employment, and their posturing in the foreign policy of India. It will be very hard for them to work out from there. Yes. So in this whole scenario, where the Pakistan fits in? Pakistan is automatically being pushed, although Pakistan believes in multilateralism, and Pakistan believes in engaging with all countries of the world. Pakistan is still trying. You know, yesterday our foreign minister, Pakistan foreign minister, has met with the Secretary of State, US, Blinken. So Pakistan is always open, but somehow the US has always had with the relationship with Pakistan. It was not a strategic relation they maintained. It's only the transitional relation, and it was a roller coaster type of a relation. Now they have been having the best engagement of Pakistan in their favor, which was Doha agreement and the engagement with Taliban. They wanted to come out from their recent past I'm talking about. Otherwise, if we go to the history from U2 and airbase and from 62 onward, we can review all these cooperation which Pakistan had given, but Pakistan was not really recognized in view of not only the advantages given to the US, not only Pakistan has a huge contribution. I don't know whether if we review that contribution, whether US deserved it or not, but that contribution where US became the unipolar power of the entire world because of Pakistan contribution. Once Pakistan got fully involved in giving resistance to USSR, and USSR crumbled later on. So to that extent, Pakistan had gone. Pakistan joined. I may not agree
with the policy of the policymakers and the head of state at that time, the way they got involved in war on terror, and as a result suffered the lives of about 80,000 people, and the overall about 150 billion dollars losses. So all these things, if we review, then probably it was all the Pakistan did not get anything from this relation. So your question, where does Pakistan stand? Pakistan still wants to have its multilateral engagement, but the way I find the development and the attitude and the foreign policy of the United States, it appears that they are in a mood to make Pakistan, or they hide behind the fact that by making Pakistan or some of the countries a scapegoat about their failure in Afghanistan. So from that angle, Pakistan would, I think, continue to have its foreign policy in which we'll have multilateralism. But now we are in this bloc. Whether we like it or not, whether good, bad, or worse, we are in the bloc where we have China, Russia, and all the central countries, Turkey, Iran, all the SCO members, and all the Shanghai Cooperation members, and the ECO member, except India. The Shanghai Cooperation, once we talk about Shanghai Cooperation, the way the development is taking place, I don't think India would continue to stay in Shanghai Cooperation Organization, because there would be a conflict of interest to have India in the Shanghai Cooperation Organization in the future development. I'm talking about whether it's this year, next year, or many years afterward. But I don't see India would continue to be a member of Shanghai Cooperation Organization because of this geostrategic and geopolitical conflict of interest with this. Although the Charter of Shanghai Cooperation Organization does not have any mention, and obviously it cannot have any mention about the conflict of interest with other countries, but the posturing and the deployment, the way it is taking place, it automatically goes detrimental to the interest of the members of the ECO, Economic Cooperation Organization, and the Shanghai Cooperation Organization in the countries of this very bloc where we are located. So looking at the SCO conference, and then the Prime Minister's of Pakistan's statement, and then what we saw, what happened, the New Zealand team, decided not to play in Pakistan. And then the next day we saw the press conference by the two of the federal ministers giving the digital detail of the conspiracy that was created in India, and then obviously end up having this, a huge shock to the fan of not the sport of cricket, but it's considered to be more political than it's a sport. So what are your analysis on that? Do you think it was already planned? Do you think Quad was part of it, or it was just fifth generation war, what ISPR calls it? If we review it, the way development had taken place, the withdrawal of New Zealand team and its impact on Pakistan, impact of Pakistan image, impact, of course, with the sentiments of the people of Pakistan, the cricket lover, that definitely has been heard. But going beyond that point, I would say Pakistan image and the confidence of the investor in Pakistan. So a couple of more things. All these things have really impacted Pakistan very hugely. So that only happens if you utilize these events and rope it into the overall strategy of the fifth generation war. Fifth generation war does not leave the traces where you can really clearly indicate that, yes, such and such country, such and such pace. Although the press conference has given a complete thread and the technical leads, how it happened and where it happened, from where it was generated, all those things had been given as a dossier. Now, since the world is not really willing to listen to such things, if the world was having any pathetic consideration on the human right, the Kashmir example was one. If the world had any conscious of the violation of international law, then Palestine, Kashmir,
and the way bombardment had taken place in Iraq, and the bombardments had taken place in Afghanistan for next 50 to 200 years, there is going to be an impact of the depleted uranium, as all the weapons, precision weapons, they carry depleted uranium. And there have been survey by international organization in Iraq, and probably the same survey would be conducted in Afghanistan. How long is it going to affect the children living in those areas where tons and tons of bombardment had taken place? And what are the incapacitation of even those children who are being born or retarded in those places? So long term, if we see all these human rights violations has been ignored by once it comes to the interest of the international big powers and big players. So from that angle, if we look at this fifth generation war in New Zealand, I would say that yes, it has been made as part of the fifth generation war, the way they have withdrawn from the game, and it could have been averted. As a matter of fact, New Zealand team, I would assume that Pakistan authorities had asked them to reconsider. And if the New Zealand security component, starting from their federal their government, and as well as the security advisors of the board, New Zealand Cricket Board, if they had reviewed it, probably they would have found out some different facts, and they would have probably thought to reconsider and play again. But they just declared emergency in a way that the world should view as if something, big is happening in the security in Pakistan, and therefore Pakistan, is not the country where one could invest or go. None of the countries have really changed their travel advisory. Pakistan, if we just normal on a open media or open source, if we do the research, Pakistan, there are very few incidents of this nature, and those incidents are directly connected with certain organization which Pakistan has already mentioned. Life as normal. Everything is going on in as normal in Pakistan. The offices are working, the judiciary is working, the government instruments are working, citizens are having their normal thing. So under these circumstances, withdrawal of the team of New Zealand, I think it doesn't really make any sense. And if we talk about the professional assessment of the New Zealand, we respect. It's a sovereign country. They can have their own assessment. But then they also should follow the world framework, the world protocol, how to do this a reassessment of such alert, even if they had got the alert which they thought that is of a very serious nature, and which was authenticated. In that case, they could have, in view of the bilateral relation with New Zealand and Pakistan, B, that so much of sentiments of the cricket lovers of entire world was already focused on that event of the sports. So they could have done the reassessment. They could have stayed another 3 days, 4 days, 1 week, had done their restatement in the same area, and then they would have announced that, okay, we still find this security threat. But the Five Eyes, which are part of the Quads, if they have shared some information and they have not really shared that information with the local authorities and have not reviewed it themselves, Pakistan would not challenge their judgment. I understand it, but at least Pakistan has all the right to discuss, or from the professional point of view, from the diplomatic point of view, as to how it could have been done. Even if they had, they should have shared that. They should have not only shared, they should have asked for extra information from the host country. They could have reviewed, and then they could have taken the decision in consultation with the host government. At first place, once they have already done their security assessment before coming, they were doing it on daily basis. They were doing it very frequently. Then in that case, in all fairness and in all in view of the protocol of dealing with such matter, I think they could have very conveniently. And therefore, we feel that it is
part of the fifth generation war. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सिख वफ्द की नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने पर जोर दिया गया है। सिखों के एक वफ्द ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इन पर पाकिस्तान में करतारपुर साहब गुरुद्वारा की यात्रा को यकीनी बनाने के लिए करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने पर जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब, दिल्ली और मकबूजा जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं के 11 रुकनी वफ्द ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सिखों की करतारपुर यात्रा को मार्च 2020 में कोरोना वबा की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। सिख रहनुमाओं ने 19 नवंबर को गुरु नानक देव के यौम पैदाइश से पहले करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का मुतालबा किया है। भारतीय रियासत त्रिपुरा की पुलिस ने 2 सहाफियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। भारतीय रियासत त्रिपुरा पुलिस ने रियासत में हालिया फिरका वाराना तशद्दुद की रिपोर्टिंग करने वाली 2 सहाफियों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर दी है। ज़राए के मुताबिक FIR कंजन दास की तरफ से दर्ज की गई, जिन्होंने दावा किया है कि समृद्धि के सकूनिया और जहां सवरना नामी 2 ख्वातीन सहाफियों ने पाल बाजार के इलाके में मुसलमानों से मुलाकात के दौरान हिंदू बरादरी और त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की। याद रहे कि त्रिपुरा की पानी सागर सब डिवीजन में 26 अक्टूबर को हिंदू इंतहापसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद के मुजाहरे के दौरान मस्जिद और मुसलमानों के घरों, दुकानों और दिगर अमलाक पर हमले किए और इनकी तोड़ फोड़ की, जिसके बाद से त्रिपुरा में कशीदगी पाई जाती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का इस्लामी तशख्खुस, रवायात और सकाफत भारत के निशाने पर है। पासबान हुर्रियत के चेयरमैन का बयान। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है और इलाके का इस्लामी तशख्खुस, रवायात और सकाफत भारत के निशाने पर है। ज़राए के मुताबिक पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन उज़ैर अहमद गजाली ने मुजफ्फराबाद में जारी एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर इस वक्त तारीख के स्याह तरीन दौर से गुजर रहा है और भारत अपनी पूरी फौजी ताकत और काले कवानीन के जरिए आज़ादी, इंसाफ और हक़ खुद इरादियत के लिए उठने वाली हर आवाज़ को खामोश कराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के जिंदानों में हजारों कश्मीरी नजरबंद जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदियां आयद करके रियासत को एक जेल में तब्दील कर दिया गया है, जबकि काबिज फोर्सेस हजारों कनाल अराजी पर जबरी तौर पर काबिज हो रही है। उज़ैर अहमद गजाली ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत और अवाम से अपील की है कि कश्मीरी अवाम के हकूक के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि तनाज़ा कश्मीर की हसासियत भारत के जालिमाना रवैये और दहशत गर्द मनसूबों से अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक के आलमी इदारों को आगाह करने के लिए रियासत गिर मुज़ाहिमती तहरीक का आगाज करना होगा। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों की खामोशी की वजह से नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत निहत्ते कश्मीरियों पर सफाकाना मुजालम ढा रही है। दुनिया भारत की हिंदुत्व हुकूमत को दहशतगर्द तंजीम करार दे, मिसाल मलिक का बयान। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और गैर कानूनी तौर पर नजरबंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया मिसाल हुसैन मलिक ने दुनिया पर जोर दिया है कि वो दाइश की तरह बुनियाद परस्त और फस्ताई हिंदुत्व हुकूमत के खिलाफ भी मुत्तहिद होकर सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि इसने जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की आवाम की जिंदगी जहन्नम बना दी है। ज़राए के मुताबिक मिसाल हुसैन मलिक ने इस्लामाबाद में एक बयान में कहा कि आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमें दाइश की तरफ से उठाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ यक आवाज हैं, जो काबिल तहसीन है। ताहम उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व हुकूमत और फ़लस्तीन में सिहोनी हुकूमत की तरफ से रियासती दहशतगर्दी और गैर इंसानी कार्रवाइयों पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए जाने पर दुनिया के दोहरे मेयार पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि हकीकी अमन का ख्वाब उसी वक्त पूरा हो सकता है जब आलमी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे दोगलेपन से परहेज करें और इंसानियत और इंसानी हकूक को अपने माली मुफादात और ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर रखें। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में 16,85,571 बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। प्रोविंशनल प्रोग्राम मैनेजर EPI डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान ने
مرکزی ایوان صحافت میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ 15 نومبر سے 27 نومبر تک مہم آزاد کشمیر بھر میں جاری رہے گی۔ ای پی آئی کے 370 مراکز، 1874 آؤٹ ریچ ٹیمیں، 4488 تربیت یافتہ ورکرز ٹیم اسسٹنٹ، 4119 سوشل موبائلرز مہم میں حصہ لیں گے۔ مانیٹرنگ کے لیے 449 فرسٹ لیول سپروائزر، 220 یونین کونسل سپروائزرز، 199 تحصیل لیول سپروائزر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز مردانہ و زنانہ، تمام ڈپٹی کمشنرز، محکمہ صحت کے 60 ضلعی افسران اور 15 پروونشل مینیجر ای پی آئی آفس سپروائزر کو مہم کامیاب بنانے کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف کشمیر ٹی وی USA کے ساتھ میں ہوں نمرہ ملک۔ آئیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی جانب۔ آزادی پسند مجاہدین کی یلغار میں سری نگر میں پولیس اہلکار شدید زخمی، انڈین فورسز نے کئی مکانات کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے نواحی علاقے میں کل اتوار کی رات آزادی پسند مجاہدین نے غلام پولیس پارٹی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی پولیس اہلکار کی شناخت 37 سالہ محمد مقبول کے نام سے ہوئی ہے۔ مجاہدین نے یہ حملہ سری نگر کے نواحی علاقے نواکدل کے جمالتا گاہ میں کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی، علاج کی سہولتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں ایک کا تعلق میرپور اور ایک کا بھمبر سے ہے۔ 3 مریض صحت یاب ہوئے اور 174 افراد کے کرونا وائرس کے شبہ میں ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اب تک 3,18,323 افراد کے کرونا وائرس کے شبہ میں ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ 34,512 افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے۔ 33,727 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقاریر کی تیاری اور طلباء کی اس کی جانب رغبت خوش آئند ہے۔ وزیر خزانہ آزاد کشمیر کا خطاب۔ آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ امداد باہمی وائن لینڈ ریونیو عبد الماجد خان نے کہا کہ رسول اللہ سے حقیقی محبت اور عشق ہی مومن کا اثاثہ ہے۔ تعلیمی اداروں میں سیرت النبی پر تقاریر کی تیاری اور طلباء کی اس کی جانب رغبت خوش آئند ہے۔ تحریر اور تقریر پر عبور کے ذریعے دنیا کے کئی بڑے مارکے فتح ہوئے، اس لیے زبانوں پر عبور کے ساتھ ساتھ بہترین الفاظ کا چناؤ اور خوبصورت اسلوب نہایت ضروری ہے۔ ریاست آزاد جموں و کشمیر میں شروع ہونے والی 12 روزہ خسرہ روبیلا مہم کا باقاعدہ افتتاح۔
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में शुरू होने वाली 12 रोज़ा खसरा रोबेला मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि महकमा सेहत आमा आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर्स और दीगर असामियों में इजाफा किया जाएगा। अवामी सहूलियात की खातिर महकमा सेहत के अदारों को अपग्रेड्स ने अदारे की क़याम में अमल में ला रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर में महकमा सेहत आमा में बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट लगाने पर इत्तफाक किया है। आज़ाद कश्मीर में तारीखी वर्सों आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म के मंसूबों को अगर सी पैक में शामिल किया जाए तो सेहत को फरोग मिलेगा। सेक्रेटरी इत्तलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज़ाद जम्मू कश्मीर। सेक्रेटरी इत्तलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहतरमा मिद्दत शहजाद ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में सी पैक के हवाले से मुनक़दा पार्लिमानी डायलॉग में प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में तारीखी वर्सों आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म के मंसूबों को अगर सी पैक में शामिल किया जाए तो सेहत को मजीद फरोग मिलेगा। जनूबी एशिया और वस्ती एशिया की अवाम के लिए बाहमी राब्तों के फरोग से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। भारत में गाय के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर ने बीमार गाय के लिए मुल्क की पहली एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश की हुकूमत शदीद बीमार गाय के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि 112 इमरजेंसी सर्विस नंबर की तरह नई सर्विस संगीन तौर पर बीमार गाय की फौरी इलाज की राह हमवार करेगी। दुबई, शारजा और अजमान में ज़िलज़िले के शदीद झटके, इमारतें लरज़ उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों दुबई, शारजा और अजमान में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। ज़िलज़िले के इन झटकों से मुतअद्दिद इमारतें लरज़ उठी और इन इमारतों से लोग बाहर निकल आए। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सिस्टम पर हैकर्स का खतरनाक हमला, लाखों मेल्स भेज दी। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सिस्टम्स पर हैकर ने खतरनाक हमला करके लाखों मेल्स भेज दी। FBI ने कहा कि वाक़े से मुतासिर हार्डवेयर को मसला सामने आने के फौरी बाद ऑफलाइन कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ईमेल सिस्टम में हैकर्स ने दाखिल होकर मुमकिन साइबर हमले की लाखों इंतबाही पैगामात अरसाल कर दिए। भारत में नजरे आतिश की गई मस्जिद का बताने पर खातून सहाफी पर मुकदमा। भारत में 2 खातून सहाफी रियासत त्रिपुरा में जलाई गई मस्जिद और मुसलमानों की इमलाक की वीडियो सामने ले आई। इंतहा पसंद हिंदुओं का पर्दा चाक करने पर हुकूमत और इंतहा पसंद आग बगोला हो गए। पुलिस ने दोनों सहाफियों पर मुकदमा दर्ज करके इन्हें होटल से निकलने से रोक दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली आमिर यासीन चौधरी और यासिर सुल्तान चौधरी ने मेंबर असम्बली का हलफ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक ने 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली से हलफ लिया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर वज़रा हुकूमत ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। आमिर यासीन चौधरी और यासिर सुल्तान दोनों मेंबरान असम्बली ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होकर आए। पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन चौधरी ने अपने वालिद की खाली करदा नशिस्त पर, जबकि तहरीके इंसाफ के यासिर सुल्तान भी अपने वालिद की खाली करदा नशिस्त पर कामयाब होकर मेंबर असम्बली बने हैं। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी USA से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी USA। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कश्मीर के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में तफसीली मुलाकात हुई। इस मौके पर मुलाकात में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मसला कश्मीर और अपने अमरीका, बरतानिया और यूरोप के हालिया दौरों पर ब्रीफिंग दी। त्रिपुरा मुस्लिम मुखालिफ फसादात कौमी अक़लियती कमीशन ने हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी अक़लियती कमीशन ने मसाजिद, मुसलमानों के अमलाक पर हमलों पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। भारत के कौमी अक़लियती कमीशन ने रियासत त्रिपुरा में मसाजिद और मुसलमानों के मकानात और दुकानों पर हमले के मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर इससे जवाब तलब किया है। ज़राए के मुताबिक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में सहाफ़ियों को बताया कि त्रिपुरा में मसाजिद और मुसलमानों के मकानों और दुकानों में तोड़ फोड़ के वाक़े का आज खुद नोटिस लेते हुए रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान शुमाली त्रिपुरा की सब डिवीजन पानी सागर में एक मस्जिद और मुसलमानों की 3 दुकानों और मकानों पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर हमलावरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है। इसके अलावा इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, किस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात दोबारा ना होने के लिए क्या इक़दाम किए गए, इस हवाले से भी रिपोर्ट तलब की गई है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक के कारकुन को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने जिला इस्लामाबाद से इंसानी हकूक के कारकुन तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया है। ज़राए के मुताबिक तालिब हुसैन को पुलिस ने उनके खिलाफ 3 हफ्ते कबल लारनो पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए एक मुकदमे में जिला के इलाके कोकरनाग में उनके घर से हिरासत में लिया। तालिब हुसैन को गुज़श्ता माह जिला में भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से एक कबायली नौजवान परवेज अहमद के कत्ल के बाद मुतासरा खानदान का इंसाफ की फरहमी का मुतालबा करने पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। 7 अक्टूबर को पेश आने वाले वाक़े को तालिब ने जाली मुकाबला करार दिया था। SHO लारनो के मुताबिक तालिब ने मुकामी लोगों को काबिज इंतजामिया और भारतीय फोर्सेस के खिलाफ उकसाया था। तालिब ने अपने भाई को बताया है कि पुलिस ने इसे गुज़श्ता माह परवेज अहमद के कत्ल के बारे में जारी की गई 14 मिनट दौरानिये की वीडियो की वजह से गिरफ्तार किया है। तालिब हुसैन के वकील तारिक ने मीडिया को बताया कि उन्होंने जमानत के लिए दरख्वास्त दे दी है और उम्मीद है कि तालिब को जमानत मिल जाएगी। तालिब हुसैन इस वक्त महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, मकबूजा कश्मीर में मजीद 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस और बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने बरमूला और गंदरबल के इजलास से 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक NIA के एहलकारों ने 2 नौजवानों राशिद मुजफ्फर गनाई और नासिर मीर को जिला बरमूला के कस्बा सोपुर से गिरफ्तार किया। भारतीय पुलिस ने जिला गंदरबल के इलाके सहपुरा से अरशद अहमद मीर नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। भारत के इलाके रांची में हिंदू इंतहा पसंदों का कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद। भारतीय रियासत झारखंड के इलाके रांची में हिंदू इंतहा पसंदों ने 3 कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया और इन्हें पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किया। ज़राए के मुताबिक रांची में तजारत की गर्ज से आए कश्मीरी नौजवानों बलाल अहमद, शबीर अहमद और वसीम अहमद को हिंदू इंतहा पसंदों ने गन पॉइंट पर पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किया और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा इन्हें धमकी दी कि वो फौरन शहर से चले जाएं, नहीं तो इन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। बलाल ने सहाफ़ियों को बताया कि वो मौसम सरमा में गर्म कपड़े बेचने के लिए रांची आते हैं, ताहम गुज़श्ता चंद दिनों से इनके साथ मुकामी लोगों का रवैया अचानक बदल गया है और वो मुसलसल इन्हें हरासा कर रहे हैं। उधर कश्मीरी नौजवानों ने खुद पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले और पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किए जाने के बारे में डोरांडा पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी दरख्वास्त दी है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together.
की सफाई, सियाहती मकामात की सफाई के लिए खसूसी मुहिम शुरू की, जबकि LOC के अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए भी खसूसी हफ्ता मनाया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहिबान ने खुद LOC के इलाकों में जाकर लोगों के मसाइल सुने। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए मुत्तहिद हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने OIC की नुमाइंदा खसूसी बराए जम्मू और कश्मीर से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्विटर पर बयान में कहना था कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लिए OIC के खसूसी नुमाइंदे यूसुफ अलदोबे से मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में जारी संगीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर दुनिया का वो खिता है जहां सबसे ज्यादा काबिज फौज मौजूद है। हम कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए मुत्तहिद हैं। दूसरी जानिब मुल्तान में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला कश्मीर हो या मसला फलस्तीन, दुनिया भर में अवाम की आवाज बनकर पाकिस्तान ने भरपूर तर्जुमानी की और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में भरपूर तरीके से उजागर कर रहा हूं। भारत के कौमी अक़लियती कमीशन ने रियासत तरीपुरा में मसाजिद और मुसलमानों के मकामात और दुकानों पर हमले के मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर इससे जवाब तलब किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में सहाफियों को बताया कि इन हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान शुमाली तरीपुरा के सब डिवीजन पानी सागर में एक मस्जिद और मुसलमानों के 3 मकानों और कुछ दुकानों पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की शिकायत को दूर करने के साथ साथ कमीशन का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि किसी की जात पात और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर हमला आवरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत कौमी सलामती से खिलवाड़ कर रही है और इसके पास मुल्क की सरहदों के दफा के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही है और अवाम को गुमराह किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में एक खबर भी पोस्ट की है जिसके मुताबिक भारतीय वजारत खारजा का दावा है कि कुछ बरसों से सरहद पर चीन की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है, लेकिन भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत कहते हैं कि चीनियों की हिंदुस्तानी सरहद में घुसने की खबरें गलत हैं। एक अमरीकी डाटा इंजीनियर, साइंसदान और प्रोडक्ट मैनेजर फ्रांसिस होगन की इंकशाफात ने भारत में मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज तकारीर को नजरअंदाज करने और इस सिलसिले में अपनी पॉलिसियों को एक मुनज़्ज़म तरीके से नाफज करने पर फेसबुक को मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। फ्रांसिस होगन की तरफ से अफशा की गई दस्तावेजात में भारत में नफरत अंगेज तकारीर और गलत मालूमात पर कंपनी की रिपोर्ट्स का एक जखीरा शामिल है। फ्रांसिस होगन ने इंकशाफ किया कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मुंसलिक फेसबुक अकाउंट्स भारत में नफरत अंगेज तकारीर और मुस्लिम मुखालिफ बयानियों को फरोग देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फेसबुक की दस्तावेजात से पता चलता है कि कंपनी बरसों से इस मजमूम मुहिम से आगाह है, लेकिन इसने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में इस बात की मजम्मत की गई कि फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर भारत में मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद को फरोग दे रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF को दोबारा तैनात करने का फैसला किया है, जिसका मकसद कश्मीरियों के गिर्द घेरा मजीद तंग करना है। BSF को 14 साल के तवील वक्फे के बाद दोबारा दीगर फोर्सेस के साथ तैनात किया जाएगा। BSF की दोबारा तैनाती का फैसला रवां बरस अक्टूबर में वजीर दाखिला अमित शाह की जेर सदारत एक आला सतही इजलास के दौरान किया गया। BSF को मरहलावार वादी कश्मीर में तैनात किया जाएगा और पहले मरहले में इसकी 20 से जायद कंपनियां अहम तनसीबात पर तैनात की जाएंगी। BSF ऑपरेशन में दीगर फोर्सेस के साथ भी ताउन करेगी। BSF को श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, इस्लामाबाद, गांदरबल, कोलगाम और बारामूला में तैनात किया जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर TV USA। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं हूं डॉक्टर सहरीश। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वजीर आजम आजाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी से इस्लामी ताउन तंजीम OIC सेक्रेटरी जनरल के जम्मू और कश्मीर पर खुसूसी नुमाइंदे नायब सेक्रेटरी जनरल सफीर यूसुफ मोहम्मद सालेह अल दोबे की क़ियादत में OIC के आला सतही वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने वफ्द की मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने कहा कि OIC के वफ्द की जानिब से दौरा आजाद कश्मीर पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहां आए और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद शहरियों पर हिंदुस्तान की फोर्सेस की इश्ताल अंगेजियों का जायजा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए रोज हिंदुस्तान की फोर्सेस की फायरिंग से निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी होते हैं और इनकी अमलाक को नुकसान पहुंचता है, जबकि इससे कई गुना ज्यादा दरिंदगी मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फोर्सेस रवा रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे असलाफ के दो कौमी नजरिए की बिना पर 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया। तमाम कश्मीरियों का मुश्तरका मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए और कश्मीरियों को राय शुमारी का हक दिया जाए, लेकिन भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करने में सबसे बड़ी रुकावट है। इस वक्त हिंदुस्तान ने 9 लाख फौज मकबूजा वादी में तैनात कर रखी है, जिसने पूरे मकबूजा कश्मीर को मुहासरे में ले रखा है। सदर आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि एहतसाब एक्ट जो मेरी हुकूमत में बना था उसे बेहतर करके आजाद कश्मीर में एहतसाबी अमल शुरू होगा। हम चाहते हैं कि इक्तदार निचली सतह तक मुंतकिल हो, इक्तदार नौजवानों, खवातीन, मजदूरों, किसानों, मेहनतकशों तक जाए, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह से बेशुमार मुश्किलात आती हैं। अब फैसला हो चुका है कि आजाद कश्मीर में चंद महीनों में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। कारकुन बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें। मुजफ्फराबाद में एक जलसा आम से खिताब करते हुए सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मैंने सदारत का हल्फ उठाने के बाद पहले खिताब में कहा था कि मसला कश्मीर को जारहाना अंदाज में बैनुल अक़वामी फोरम पे उठाऊंगा। नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के मौका पर हमने एक बड़ा मुजाहरा करके भारत की मुजम्मत और दुनिया की तवज्जो कश्मीर की जानिब मबजूल करवाई। खालिस्तान की हामी सिखों की तंजीम सिखिस फॉर जस्टिस ने कनाडा की अदालत में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए पाकिस्तान की फंडिंग के इल्जामात के खिलाफ दायर हत्तक इज्जत के एक मुकदमे का पहला मरहला जीत लिया है। कनाडा के एक ब्रॉडकास्टर टेरी मिलोस्की ने गुज़िश्ता साल सितंबर में खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट के नाम से एक मुतनाज़ रिपोर्ट शाया की थी और इल्जाम लगाया था कि सिखिस फॉर जस्टिस और इसकी खालिस्तान की मुहिम की पाकिस्तान की पुश्तपनाही और फंडिंग कर रहा है। टेरी मिलोस्की ने जज के सामने एतराफ किया कि इनके पास पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान नवाज ग्रुप की पुश्तपनाही और फंडिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया और बैरून मुल्क सिफारती मिशनों ने टेरी मिलोस्की की रिपोर्ट खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट की बड़े पैमाने पर तशहीर की थी और इसे पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया था।
मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बिजली के बदतरीन बुहरान से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली सागर ने वादी कश्मीर में जारी बिजली के बदतरीन बुहरान पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि भारतीय काबज इंतजामिया मकबूजा इलाके में बिजली की फराहमी में बेहतरी में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2016 में भारतीय काबज हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों से बिजली की बिला तातुल फराहमी के वादे किए जा रहे हैं, जबकि दर हकीकत बिजली की फराहमी की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी जानिब श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के शहरियों और तुलबा ने बिजली की बार बार लोड शेडिंग और इंटरनेट सर्विस मुअत्तली पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग और इसके बायस इंटरनेट की मुअत्तली ने इनका जीना दोबर कर दिया है। भारत के जेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में तैनात 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों के जुल्म बर्बरियत की वजह से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में शहरियों के खिलाफ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट, टाडा और दीगर काले कवानीन के नफाज के जरिए दीवार से लगाने और इनकी गैर कानूनी नजरबंदियों को तूल देने की शदीद मुजम्मत की है। हुर्रियत तर्जुमान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जबरी भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आजादी के लिए कश्मीरी अवाम की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जल्द अज जल्द हल करने के लिए अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे और कश्मीर में भारतीय अफवाज के मुजालिम जबरी गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रुकवाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना चाहिए। भारतीय फोर्सेस की जानिब से गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ज़हनी तौर पर माजूर 47 कश्मीरियों को शहीद करने का इंकशाफ हुआ है। इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद एहसन ओंतो ने कहा है कि भारतीय फोर्सेस ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ज़हनी तौर पर माजूर 47 कश्मीरी शहीद किए हैं। मोहम्मद एहसन ओंतो ने कहा है कि ज़हनी तौर पर माजूर अफराद को जिस तरह गोलियां मारकर कत्ल किया जाता है, इसे महज इत्तफाक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मसला यह है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले कवानीन भारतीय फोर्सेस को महज शक की बुनियाद पर किसी को गोली मारने की इजाजत देते हैं और हुकाम तहकीकात का वादा करते हैं, लेकिन कभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। ये थी अब तक की खबरें। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएस से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पुलिस स्टेशन में मुसलमान नौजवान के कत्ल पर योगी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है।
بیٹے کو دوران حراست قتل کیا گیا، والد کا الزام۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع کاس گنج کے ایک پولیس اسٹیشن میں مردہ حالت میں پائے جانے والے 22 سالہ مسلمان نوجوان کے والد نے الزام لگایا ہے کہ ان کے بیٹے کو دوران حراست قتل کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان الطاف کے والد چاہت میاں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ خود اپنے بیٹے کو پولیس چوکی چھوڑ کر آئے تھے اور پولیس نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ پوچھ گچھ کے بعد اسے چھوڑ دیں گے، مگر اسے دوران حراست قتل کر دیا گیا۔ ادھر الطاف کے دوران حراست قتل پر حزب اختلاف کی پارٹیاں بھی یوگی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ کانگریس کی یو پی انچارج پرینکا گاندھی نے ایک ٹویٹ میں کاس گنج میں پولیس کی حراست میں مسلمان نوجوان کی موت پر یوگی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ کاس گنج میں الطاف، آگرہ میں ارون والمیکی اور سلطان پور میں راجیش کوری کی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ رہبر رہزن بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش پولیس دوران حراست لوگوں کے قتل میں سر فہرست ہے۔ ہندوتوا کو داعش اور بوکو حرام جیسی دہشت گرد تنظیم قرار دینے پر سلمان خورشید پر کڑی تنقید۔ بھارت کے سابق وزیر خارجہ اور کانگریس کے رہنما سلمان خورشید کی طرف سے اپنی حالیہ تصنیف سن رائز اوور ایودھیا میں ہندوتوا نظریے کا موازنہ داعش اور بوکو حرام جیسی دہشت گرد تنظیموں سے کرنے سے بھارت میں تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بدھ کو سلمان خورشید کی کتاب کی تقریب رونمائی کے 24 گھنٹے کے اندر ہی دارالحکومت نئی دہلی میں پولیس کے پاس ان کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے۔ وویک گرگ نامی ایک وکیل نے سلمان خورشید پر ہندوتوا کو بدنام کرنے کا الزام لگاتے ہوئے نئی دہلی پولیس کے کمشنر سے مقدمہ درج کرنے کی اپیل کی ہے۔ سلمان خورشید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوتوا نظریہ نے قدیم ہندو مذہب کو ایک طرف رکھ دیا ہے، جو ہر طرح سے داعش اور بوکو حرام جیسی جہادی تنظیموں کی طرح ہے۔ اپنی دلیل میں خورشید نے ہندو مذہب کو ایک اعلیٰ معیار کا مذہب قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اس کے لیے گاندھی جی نے جو تحریک دی ہے اس سے بڑا کوئی محرک نہیں ہو سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نیا لیبل کیوں قبول کروں، میں بولوں گا چاہے کوئی ہندو مذہب کی توہین کہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوتوا کی سیاست کرنے والے داعش اور بوکو حرام کی طرح غلط ہیں۔ سکس فار جسٹس نے پاکستان کی فنڈنگ کے خلاف مقدمہ جیت لیا۔ خالستان کی حامی سکھوں کی تنظیم سکس فار جسٹس نے کینیڈا کی عدالت میں خالستان ریفرینڈم کے لیے پاکستان کی فنڈنگ کے الزامات کے خلاف دائر مقدمے کا پہلا مرحلہ جیت لیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کے ایک براڈ کاسٹر ٹیری میلوکسکی نے گزشتہ سال ستمبر میں خالستان پاکستان کا ایک پروجیکٹ کے عنوان سے ایک متنازعہ رپورٹ شائع کی تھی اور الزام لگایا تھا کہ سکس فار جسٹس اور اس کی خالستان کی مہم کی پاکستان کی پشت پناہی اور فنڈنگ کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صحافی ٹیری میلوسکی کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی تھا کہ سکس فار جسٹس اصل میں سکھوں کی نمائندہ تنظیم نہیں بلکہ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے۔ ٹیری میلوسکی نے جج کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس پاکستان کی طرف سے خالستان نواز گروپ کی پشت پناہی اور فنڈنگ کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سے OIC کے جموں کشمیر پر خصوصی نمائندے کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی سے اسلامی تعاون تنظیم سیکرٹری جنرل کے جموں کشمیر پر خصوصی نمائندے اور اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ایمبیسیڈر یوسف محمد صالح الدوبے کی قیادت میں OIC کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے وفد کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وفد میں OIC کے ایمبیسیڈر مسٹر طارق علی بخیت، ایمبیسیڈر حسن علی حسن، ایمبیسیڈر احمد سریر، ایمبیسیڈر رضوان سعید شیخ، OIC میں پاکستانی مستقل مندوب الخبیب بورانی، مس ماہا اسیری، مسٹر محمد الخام لیچی، مسٹر وقاص لطیف مغل، مسٹر فرخ اقبال خان، ڈائریکٹر جنرل مسٹر محسن سیف علی خان، ڈپٹی ڈائریکٹر OIC مسٹر شہزاد حسین اور دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، وزیر خزانہ عبد الماجد خان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ OIC کے وفد کی جانب سے دورہ آزاد جموں کشمیر پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں آئے اور لائن آف کنٹرول پر آباد شہریوں پر ہندوستان کی فورسز کی اشتعال انگیزیوں کا جائزہ لیا۔ لائن آف کنٹرول پر آئے روز ہندوستان کی فورسز کی فائرنگ سے نہتے شہری شہید اور زخمی ہوتے ہیں۔
اسلامی تعاون تنظیم کے وفد کا آزاد جموں کشمیر میں ٹھوٹا مہاجر کیمپ کا دورہ۔ وفد نے کیمپ میں قائم ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر وفد نے کیمپ میں مقیم مہاجرین سے ملاقات کی۔ وفد کو کیمپ کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ مہاجرین کے نمائندہ وفد نے اسلامی تعاون تنظیم کے وفد سے ملاقات بھی کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف کشمیر ٹی وی USA کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سہریش۔ آئیں نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی سے اسلامی تعاون تنظیم OIC سیکرٹری جنرل کے جموں و کشمیر پر خصوصی نمائندے نائب سیکرٹری جنرل سفیر یوسف محمد صالح الدوبے کی قیادت میں OIC کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی، جس میں سردار عبدالقیوم نیازی نے وفد کی مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ OIC کے وفد کی جانب سے دورہ آزاد کشمیر پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئے اور لائن آف کنٹرول پر آباد شہریوں پر ہندوستان کی فورسز کی اشتعال انگیزیوں کا جائزہ لیا۔ لائن آف کنٹرول پر آئے روز ہندوستان کی فورسز کی فائرنگ سے نہتے شہری شہید اور زخمی ہوتے ہیں اور ان کی املاک کو نقصان پہنچتا ہے، جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ درندگی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کی فورسز روا رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف کے دو قومی نظریے کی بنا پر 1947 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ تمام کشمیریوں کا مشترکہ مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کروایا جائے اور کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا جائے، لیکن بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس وقت ہندوستان نے 9 لاکھ فوج مقبوضہ وادی میں تعینات کر رکھی ہے، جس نے پورے مقبوضہ کشمیر کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ احتساب ایکٹ جو میری حکومت میں بنا تھا اسے بہتر کر کے آزاد کشمیر میں احتسابی عمل شروع ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار نچلی سطح تک منتقل ہو، اقتدار نوجوانوں، خواتین، مزدوروں، کسانوں، محنت کشوں تک جائے، لیکن بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار مشکلات آتی ہیں۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ آزاد کشمیر میں چند مہینوں میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ کارکن بلدیاتی انتخابات کی تیاری کریں۔ مظفر آباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ میں نے صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد پہلے خطاب میں کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو جارحانہ انداز میں بین الاقوامی فورم پہ اٹھاؤں گا۔ نریندر مودی کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے موقع پر ہم نے ایک بڑا مظاہرہ کر کے بھارت کی مذمت اور دنیا کی توجہ کشمیر کی جانب مبذول کروائی۔
खालिस्तान की हामी सिखों की तंजीम सिखिस फॉर जस्टिस ने कनाडा की अदालत में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए पाकिस्तान की फंडिंग के इल्जामात के खिलाफ दायर हत्या की इज्जत के एक मुकदमे का पहला मरहला जीत लिया है। कनाडा के एक ब्रॉडकास्टर टेरी मिलोस्की ने गुज़िश्ता साल सितंबर में खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट के नाम से एक मुतनाज़ रिपोर्ट शाया की थी और इल्जाम लगाया था कि सिखिस फॉर जस्टिस और इसकी खालिस्तान की मुहिम की पाकिस्तान की पुश्तपनाही और फंडिंग कर रहा है। टेरी मिलोस्की ने जज के सामने एतराफ किया कि इनके पास पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान नवाज ग्रुप की पुश्तपनाही और फंडिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया और बैरून मुल्क सिफारती मिशनों ने टेरी मिलोस्की की रिपोर्ट खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट की बड़े पैमाने पर तशहीर की थी और इसे पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बिजली के बदतरीन बुहरान से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली सागर ने वादी कश्मीर में जारी बिजली के बदतरीन बुहरान पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि भारतीय काबज इंतजामिया मकबूजा इलाके में बिजली की फराहमी में बेहतरी में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2016 में भारतीय काबज हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों से बिजली की बिला तातुल फराहमी के वादे किए जा रहे हैं, जबकि दर हकीकत बिजली की फराहमी की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी जानिब श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के शहरियों और तुलबा ने बिजली की बार बार लोड शेडिंग और इंटरनेट सर्विस मुअत्तली पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग और इसके बायस इंटरनेट की मुअत्तली ने इनका जीना दोबर कर दिया है। भारत के जेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में तैनात 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों के जुल्म बर्बरियत की वजह से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में शहरियों के खिलाफ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट, टाडा और दीगर काले कवानीन के नफाज के जरिए दीवार से लगाने और इनकी गैर कानूनी नजरबंदियों को तूल देने की शदीद मुजम्मत की है। हुर्रियत तर्जुमान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जबरी भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आजादी के लिए कश्मीरी अवाम की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जल्द अज जल्द हल करने के लिए अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे और कश्मीर में भारतीय अफवाज के मुजालिम जबरी गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रुकवाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना चाहिए। भारतीय फोर्सेस की जानिब से गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ज़हनी तौर पर माजूर 47 कश्मीरियों को शहीद करने का इंकशाफ हुआ है। इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद एहसन ओंतो ने कहा है कि भारतीय फोर्सेस ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ज़हनी तौर पर माजूर 47 कश्मीरी शहीद किए हैं। मोहम्मद एहसन ओंतो ने कहा है कि ज़हनी तौर पर माजूर अफराद को जिस तरह गोलियां मारकर कत्ल किया जाता है, इसे महज इत्तफाक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मसला यह है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले कवानीन भारतीय फोर्सेस को महज शक की बुनियाद पर किसी को गोली मारने की इजाजत देते हैं और हुकाम तहकीकात का वादा करते हैं, लेकिन कभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। ये थी अब तक की खबरें। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएस से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पुलिस स्टेशन में मुसलमान नौजवान के कत्ल पर योगी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है। बेटे को दौरान हिरासत कत्ल किया गया, वालिद का इल्जाम। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज के एक पुलिस स्टेशन में मुर्दा हालत में पाए जाने वाले 22 साला मुसलमान नौजवान के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि उनके बेटे को दौरान हिरासत कत्ल किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान अल्ताफ के वालिद चाहत मियां ने मीडिया को बताया है कि वो खुद अपने बेटे को पुलिस चौकी छोड़कर आए थे और पुलिस ने यकीन दहानी कराई थी कि वो पूछगछ के बाद उसे छोड़ देंगे, मगर उसे दौरान हिरासत कत्ल कर दिया गया। उधर अल्ताफ के दौरान हिरासत कत्ल पर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां भी योगी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं। कांग्रेस की यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कासगंज में पुलिस की हिरासत में मुसलमान नौजवान की मौत पर योगी हुकूमत को हदफे तनकीद बनाते हुए कहा कि कासगंज में अल्ताफ, आगरा में अरोन वाल्मीकि और सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस की हिरासत में हलाकत के वाकयात से वाज़े होता है कि रहबर रहजन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस दौरान हिरासत लोगों के कत्ल में सरे फहरिस्त है। हिंदुत्व को दाइश और बोको हराम जैसी दहशतगर्द तंजीम करार देने पर सलमान खुर्शीद पर कड़ी तनकीद। भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा और कांग्रेस के रहनुमा सलमान खुर्शीद की तरफ से अपनी हालिया तसनीफ सनराइज अवर अवधिया में हिंदुत्व नजरिए का मुआजना दाइश और बोको हराम जैसी दहशतगर्द तंजीमों से करने से भारत में तनाज़ा खड़ा हो गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बुध को सलमान खुर्शीद की किताब की तकरीब रोनुमाई के 24 घंटे के अंदर ही दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पुलिस के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ववेक गर्ग नामी एक वकील ने सलमान खुर्शीद पर हिंदुत्व को बदनाम करने का इल्जाम लगाते हुए नई दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदुत्व नजरिया ने कदीम हिंदू मजहब को एक तरफ रख दिया है, जो हर तरह से दाइश और बोको हराम जैसी जिहादी तंजीमों की तरह है। अपनी दलील में खुर्शीद ने हिंदू मजहब को एक आला मेयार का मजहब करार दिया है। उन्होंने मजीद लिखा है कि इसके लिए गांधी जी ने जो तहरीक दी है उससे बड़ा कोई मुहर्रिक नहीं हो सकता। उनका मजीद कहना था कि मैं नया लेबल क्यों कबूल करूं, मैं बोलूंगा चाहे कोई हिंदू मजहब की तौहीन कहे। मैं कहता हूं कि हिंदुत्व की सियासत करने वाले दाइश और बोको हराम की तरह गलत हैं। सिक्स फॉर जस्टिस ने पाकिस्तान की फंडिंग के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। खालिस्तान की हामी सिखों की तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस ने कनाडा की अदालत में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए पाकिस्तान की फंडिंग के इल्जामात के खिलाफ दायर मुकदमे का पहला मरहला जीत लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा के एक ब्रॉडकास्टर टेरी मेलोक्स्की ने गुज़श्ता साल सितंबर में खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट के उन्वान से एक मुतनाज़ा रिपोर्ट शाया की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि सिक्स फॉर जस्टिस और इसकी खालिस्तान की मुहिम की पाकिस्तान की पुष्टपनाही और फंडिंग कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सहाफ़ी टेरी मेलोक्स्की का यह दावा झूठ पर मबनी था कि सिक्स फॉर जस्टिस असल में सिखों की नुमाइंदा तंजीम नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। टेरी मेलोक्स्की ने जज के सामने इतराफ़ किया है कि उनके पास पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान नवाज ग्रुप की पुष्टपनाही और फंडिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से OIC के जम्मू कश्मीर पर खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी से इस्लामी ताउन तंजीम सेक्रेटरी जनरल के जम्मू कश्मीर पर खुसूसी नुमाइंदे और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एम्बेसडर यूसुफ मोहम्मद साहले अल्दोबे की क़यादत में OIC के आला सतही वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने वफ़द को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वफ़द में OIC के एम्बेसडर मिस्टर तारिक अली बखीत, एम्बेसडर हसन अली हसन, एम्बेसडर अहमद सरीर, एम्बेसडर रिजवान सईद शेख, OIC में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब अल खबीब बोरानी, मिसमाहा असीरी, मिस्टर मोहम्मद अल खाम लीची, मिस्टर वकास लतीफ़ मुगल, मिस्टर फ़रख इकबाल खान, डायरेक्टर जनरल मिस्टर मोहसन सैफ अली खान, डिप्टी डायरेक्टर OIC मिस्टर शहजाद हुसैन और दीगर शामिल थे। इस मौके पर अपोजिशन लीडर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा कि OIC के वफ़द की जानिब से
دورہ آزاد جموں کشمیر پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ یہاں آئے اور لائن آف کنٹرول پر آباد شہریوں پر ہندوستان کی فورسز کی اشتعال انگیزیوں کا جائزہ لیا. لائن آف کنٹرول پر آئے روز ہندوستان کی فورسز کی فائرنگ سے نہتے شہری شہید اور زخمی ہوتے ہیں. اسلامی تعاون تنظیم کے وفد کا آزاد جموں کشمیر میں ٹھوٹا مہاجر کیمپ کا دورہ. وفد نے کیمپ میں قائم ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا بھی معائنہ کیا. اس موقع پر وفد نے کیمپ میں مقیم مہاجرین سے ملاقات کی. وفد کو کیمپ کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی. مہاجرین کے نمائندہ وفد نے اسلامی تعاون تنظیم کے وفد سے ملاقات بھی کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ. اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah. This is Majib Qazi and you're watching Voice of Kashmir from the studio of Washington. ہمارے ساتھ بہت ہی معتبر شخصیت موجود ہیں جو جوائن کر رہی ہیں ہمیں سری نگر سے. بائی ٹریڈ ہی از این اٹرنی جو پریکٹس کرتے ہیں ہائی کورٹ سری نگر میں. بڑے سینئر وہاں پہ اٹرنی ہیں, لا پریکٹس کرتے ہیں, کشمیر پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, اور ایک سینئر ایکٹیوسٹ ہے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ. اور when we talk about human rights, what else can be than Kashmir کے جس میں for the last 73 years human right violation has been at the peak, but especially جب انڈیا نے اپنا article 370 and 35A of their constitution once they revoked that, اور کشمیریوں کے اوپر particularly سری نگر کے اندر 1 million بوٹس لائے گئے اور ہیومن رائٹس وائلیشن کلیمپ ڈاؤن کیا گیا, اور ظلم و تشدد کی جتنی بھی بربریت کی جتنی بھی مثالیں دی جا سکتی تھیں ان کو انہوں نے وہاں پہ آزمایا. تو ہم گراؤنڈ زیرو سے یہ انفارمیشن لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس وقت کشمیر کے اندر کیا سچویشن ہے. تو ویلکم اندرابی صاحب, ویلکم ٹو دی شو. ویلکم سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کے تعارف کا پورا صحیح حق نہیں ادا کر سکا, تو مجھے آپ بتانا پسند فرمائیں گے ہمارے آڈینس کے لیے کہ آپ کی فرم کیا کرتی ہے اور آپ کیا کرتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے کشمیر میں. جی, میں ارشد اندرابی ہوں, سینئر ایڈوکیٹ, اپنی فرم کو لیڈ کرتا ہوں جو 96 میں نے جوائن کی تھی آفٹر دی مارٹرڈم آف مائی بردر شہید جلیل اندرابی ایڈوکیٹ. انہوں نے ہیومن رائٹس کے اوپر بہت کام کیا تھا, اینڈ وی ہیڈ اے چانس ٹو وزٹ جنیوا اینڈ ایڈریس دی 77th Human Rights Subcommission in Geneva. Then he was invited to America also, and he participated in various conferences. He was warned that your life is in danger now in Kashmir, don't go back. But he trusted in Allah. He said, I'm not afraid of death. And he faced death very boldly, valiantly. He was martyred in custody, and we had buried his body in مارٹرز گریو یارڈ, مزار شہداء جو ہمارا ہے سری نگر میں, وہاں ان کو ہم نے دفن کیا. Then I took that firm, that practice which he was doing. He was serving the cause of human rights and the helping the poor Kashmiris who are in miserable conditions and are still in the same conditions. And we have no human rights. We have no rights at all. We have no civil liberties. And especially the present regime has denied all freedoms and liberties and all guarantees. There is no rule of law. Everything is broken down and we are living under siege, under gag. Nobody can talk, nobody can claim his rights. But a lawyer has to do whatever he can do in his own honest way by filing a petition, pursuing it. But the situation of human rights and civil liberties in Kashmir is very grave, very bad. And the international... We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther.
and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Each law and every guarantee which was given to Kashmiris. And after this situation is that we are facing a real threat of demographic change in Kashmir, just like it happened in Israel and other parts of the world. A deliberate design to change the demography of the people of the Kashmir by settling the outsiders, allowing them lands, plots, and making allotment of huge chunks of land in favor of industrialists. राजे साहब ये बताइएगा कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज करने का जो इंडिया का आइडिया है और जिसको वो बड़ा एग्रेसिवली परसू कर रहा है, and there was reported by the same media outlets of India that over 200,000 or so settlers have been brought in from outside of Kashmir without the will and wishes of the people. So ये जो land ली जाती है, the land that they capture and hand it over to those non-Kashmiri citizens, how do they do that? I mean, Kashmiris obviously have no access to assemble, and they don't even have a right to stand out and protest against their own rights. So they just come and grab the land and hand it over to them. How the process has been going on in these circumstances that we are living in? You see, everything is in the hands of the lieutenant governor, who is an appointee or agent of the central government. He can pass any order of allotment in favor of any Indian businessman, industrialist, in the name of setting industry. Then they have established security zones where they have established colonies for migrants and outsiders. So nobody has access to information, because last year they changed the system of registration of documents also. It's all online. Maybe somebody sitting in New Delhi or Mumbai can get a deal done with somebody and get his land registered in his name. Later on, they will come and start construction there under security cover. And this is going on. So many thousands of canals of land has been allotted
to army, to BSF, to CRP, to other paramilitary forces, to central government offices, industries. Nobody actually knows what to do. Is that not illegal under the Geneva Accord? Because Kashmir is a disputed territory and they're not supposed to muddle with it. So is it not illegal? Obviously, when it comes to illegal, obviously they have done so many illegal things. But I'm just, because you're a lawyer, for our audience, I want to understand that. Isn't that illegal for them to do this democratic change under the Geneva Accord, UN constitutions, bylaws, and the resolution of the UNO? They have not shown any respect for any international law, international treaty, or covenant. They have absolutely shut down all the channels of communication. They don't respect their own constitution. J&K state was having a very fragile relationship with Kashmir. According to Indian claims, Kashmir had acceded on 3 subjects only: defense, communication, and foreign affairs. Then they went to United Nations on 1st January 1948. There was a resolution, and there are then 17 resolutions. That is, the disputed territory and right of self-determination is to be granted to Kashmir people. A plebiscite commissioner was appointed, and so many things were worked out. It was made clear that the Indian army cannot remain in Kashmir. They have to leave. Only a small contingent will remain confined to the cantonments. They cannot interfere in the local administration. And the plebiscite will be conducted under international auspices, under UN auspices. There is a UN military observer group appointed in Kashmir, which monitors the ceasefire line or actual line of control. So Kashmir is an internationally accepted dispute, which is on the floor of United Nations, and all these actions are in violation of those resolutions, international law, international convention, and all the treaty obligations which India has towards the international community. But the present regime does not respect international law, does not respect the municipal law. Article 370 was a part of Indian Constitution. It was in the nature of a federal arrangement. You can better understand in American Constitution, the state government gave some powers to central government. It cannot be reversed. This trend cannot be reversed by the American federal government. There are 5 federal countries in the world who follow the principle of federalism. There is indivisibility or irreversibility of this arrangement. A central government cannot encroach upon the rights of a state government. What was the arrangement as per the Indian claim was that there are only 3 subjects on which central government had powers. The rest was with the state government. But in 2019, in utter violation of their own constitution, violation of all the accepted principles of federalism, constitutionality, international law, United Nations resolutions, and all the obligations of a civilized nation, they have altered everything unilaterally. And without consulting, without giving any voice to the people of Kashmir, there was an assembly which was to be taken into consideration. There is a case in the Supreme Court of India. It was heard on 10 December 2019. I was the only person who was able to be present in Supreme Court because others could not come to Delhi. There was no flights coming from Srinagar. So I represented the case there, and it has not been heard since 2019. Even Supreme Court is being influenced by the Indian government. The case is not being heard. It was argued once by our veteran lawyer from Kashmir, Mr. Zafar Shah, and we convinced the court that it's all unconstitutional. This can't be done under your own law. Since then, no hearing has taken place. So what you're saying is that, obviously Kashmiris don't have a right to protest or plead their cases in the court, so they don't even have an access. So there's no point of, having Kashmiris to even think about that they would be given justice in the courts because there's no hearing taking place. In the recent episode when may Allah have mercy on the grave of Sayyid Ali Gilani Sahib, when he passed away,
He wasn't even given a chance to bury his janaza according to the rituals of Islam. And now I am told that the family members of Gilani Sahib have been, they have been sued for violation of these draconian laws. Would you like to shed some light on those instances that are taking place? I live in the same area in Srinagar. In Gilani Sahab's residence was in Hyderpora. I am just less than a half kilometer from that. On that day, when we came out of the mosque in the morning, we saw a lot of deployment of force everywhere. We were not allowed to go out of our colony, but were sent back to our homes. Then we inquired what is the matter, and somebody told that Gilani Sahib has expired. He has left this world. Then I inquired from people that during the night, the Kashmir police, army, and all paramilitary forces were heavily deployed around that locality, and the family members were asked to bury him within 2 hours. They said, we are waiting for his daughter to come, other relatives to come. It's not the way. We have to offer a janaza in the daylight. You can't do it like that. Then the Kashmir police, it's called a task force, a special task force. They snatched the body from the family. The women were wailing, they were protesting, and they had put a flag, green flag with star, that is Islamic flag, that is hoisted on the mosques everywhere. That is Islamic flag. Body was covered with that. Police say that it is a Pakistani flag. So they are being booked under some laws for that violation. And the body was taken from the family members and taken to local graveyard at Hyderpora Jama Masjid. A Maulvi was brought from the Darul Uloom Ashrafia. He was asked to give him ablution. And he performed the last rites. Only 10 to 15 people were available there. Family members were debarred and stopped from offering janaza. Body was snatched from the body. The burial was done by the police. And no janaza and no prayer is being allowed in that mosque from Jama Masjid Hyderpora for the last 2-3 weeks. I walk from that road. It is fully held by the forces, and no prayers are being allowed there. Not a question of any protesters. This is the situation here, and the family is threatened that they will be booked under. We have a draconian laws here, Unlawful Activities Prevention Act, which is being abused, misused for harassing, threatening the people, and people are booked under this law and taken to jails outside. Then so the Gilani Sahib family is still under arrest? Pardon? Gilani Sahib family is still under arrest? They are completely under house arrest. There is deployment of heavy deployment of force there. Even women police station, police personnel are there. Nobody is allowed to enter that area. The life is miserable for that whole mahalla, whole locality. The whole locality. What is the situation of schools? Do kids have a permission to go to school? The schools are closed for the last 2 years because of COVID lockdown, and they take an excuse for closing the institutions in the name of COVID protection and all these things. And no institutions are working except some government offices. High Court has been opened, but the access is very limited. People are not allowed in. Lawyers are allowed to go one by one to courtroom and come back after arguing. So this is a very limited thing going on. Life is very confined to essentials on, basics on. And what if somebody gets sick, and how the people are being treated who are facing any terminal diseases, or maybe COVID for that matter? Are they being given any treatment? I have seen this thing myself in the month of March. I was infected with COVID. I was taken to the local hospital, general hospital. There was total chaos and confusion. Then I was shifted from that place to the Medical Institute Sora, which is specialized. There was no bed for me. I was on oxygen on the reception for 1 and 2 hours. I saw how people are miserably going here and there. There is no system working. Then I was shifted from there also to some other hospital where I got a room
and I had to spend 15 days there. But there is no medical facilities available, basic facilities. People have to rush for oxygen cylinders. People have to rush for medicines themselves. Doctors are not attending. There is overcrowding of hospitals. So a total situation of chaos and confusion. People die, and there are no people to take them to home. Ambulances are not available. I saw one ambulance in which I was carried. I talked to the person who was attending me. He said, "We have received only 3 ambulances by way of donation. Some Kashmiri doctors in America have donated 3 ambulances. These are And life." this is, we are talking about a city of 10 million people. Yeah. This is capital of the Srinagar capital, where situations like that. What is happening in villages and urban areas, nobody knows. There are horrible stories about people dying without being attended, having any medicine or medical facilities, and they are just at the mercy of Allah. But being Muslims, they trust. They say it was destined, so they don't have any complaints with anybody because there's no government or there's no representation or there's no contact with the ruling regime. They're just making false announcements on media and all these things. We've been told through the false media who are propagating the narrative of the government that every Kashmiri is being given COVID vaccine. Is that a true statement? There was some Indian version of vaccine which is available in government hospitals, but people are not coming forward. They don't trust these systems. Very few people had got vaccinated. I think it's not working at all. It's not working. People get settle COVID even after getting vaccinated, and nobody is there to listen to them. Nobody is there. There is an Indian version of vaccine which has been spreading and distributed in government hospitals. Nobody has trust in this system. Have you had a chance to visit leaders who are in the jail or maybe house arrest, prominent leaders of Kashmiri leaders who struggle for the freedom of Kashmir, such as Yasin Malik, Shabir Shah, or even Abdullahs and Muftis and whoever is in house arrest? Do you know what is the condition of their health? Are they safe from COVID? Local youth have been taken to jails outside the erstwhile state. I have some cases where the parents said that our children have been shifted to Haryana and we are not giving any access or information. Then we obtained orders from the High Court that at least give them an interview on video conference. They went to those jails, but the video conference facility was not made available. Yesterday, an old mother went to Central Jail with a court order that please arrange a video conference to me with my son. And she was refused. And I am going to file again an application in the High Court that even they have not accepted the High Court order. And the senior leaders of Hurriyat Conference are lodged in Central Jail, Tihar, the most infamous jail in India, which lacks all the facilities and very little access is given to outside world. And some people have been sick there and they have been abused, maltreated there. We have been visiting Tihar jail earlier from Bar Session. Annually, we used to visit his detainees and they report about their condition. But the last 2 years, no facilities given to us also. We're not able to visit the jails and report to High Court what is the condition in jails. The condition was already very bad. The prisoners from Kashmir live in subhuman conditions. There are no facilities. There are no amenities available which are provided in their jail manual. Then we used to report to High Court and some things would come, a doctor would be appointed, an ambulance will be given access and all these things. But the things are very bad. And now in this regime, boys have been shifted to outside jails. Where the parents are very difficult to communicate, to visit there because of the hostile atmosphere outside the state. So there was a story that I came across on the social media. Few handful of police officer or maybe security officers, that is the term that is being used for people who are patrolling the streets in Srinagar. They walked up to a house and they barged into somebody's house and the demand was that
give us your 16 years old daughter that you have. Do you happen to see those kind of cases, or has anybody brought those cases to you that you have personally handled those cases where the youth, particularly the girls and the women, are being picked up and they're being used as a weapon of war? You see, the situation in this respect is very grave, very grave. The vast amount of powers given to security forces under Armed Forces Special Powers Act. They can go to any house, anytime, search it, and if they suspect that somebody is hiding, they can bombard that house. This authority is given to a small constable or a soldier, not a group of people. Then there are specialized groups in the Kashmir police. They are called SOG, Special Operation Groups. They conduct this kind of operations, and all kinds of extortions and abuses and blackmailing and whatever, kidnappings, everything is reported from them. And there is no remedy for that available. And people are very afraid of reporting these things. And whenever something comes to court, the courts are also, some days back I told a judge that courts have become insensitive towards these issues. Then he called the additional advocate general and asked them, that lawyer has made comment about us. Actually, you are insensitive. You are not giving them proper facilities. But this is the situation inside the courtroom. Outside, and courts are reluctant to pass effective orders. No effective orders have been passed for the last 2 years in favor of good news or under trials or things are allowed to go as the government wishes. We have a whole lot to talk about, and thank you very much for giving us the time. We're running out of time. That brings us to the end of our show. We are very happy that you're doing well, and alhamdulillah, you have come out of COVID, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to have a mercy on every resident of Kashmir and grant them the freedom that they well deserve, and bring ease on those suffering families who are facing the trauma of kidnapping, clampdown, suppression, oppression, and may Allah subhanahu wa ta'ala bring ease on all of them. Jazakallah khair. Thank you for being on the show. Thank you very much. So nice. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi, and you're watching Washington Roundtable on VOK, Voice of Kashmir TV. I'm joined by Ambassador Dr. Jameel Ahmed Khan, who is the former ambassador to Pakistan, and he is a seasoned diplomat who analyzed an analytical point of view on the current situation. We are going to talk about the current Prime Minister of India's visit to Washington, his record of human rights violation. He has on his record one time when he was the Chief Minister of Gujarat, he burned live in front of the world over 2,000 Muslims in the state of Gujarat. And then he is an active member, actually one of the leading member of RSS, which is an organization that derives its ideology from the Nazi of Germany.
And at one time, he was banned to enter in USA, and unfortunately, the situation have changed. And now he's the Prime Minister of India. He is being welcomed in the White House, which considered to be the symbol of democracy for the world, as well as current President of US, Joe Biden, who claims to be the champion of human rights, is welcoming him. And there's a contradiction that we will talk about it. Ambassador, welcome to the show. Thank you very much for having me. What do you make of Prime Minister Modi's visit to Washington? The Prime Minister visit to Washington is in two parts. One is obviously he's come to the United States for participation in the United Nations General Assembly. That's one part, but the Washington visit is altogether the geopolitical visit of of Modi, where they are going to discuss sets of the geopolitical development and dynamics in the region and around the world, and where the two countries' leader, Joe Biden and Modi, it appears they are going to discuss and draw further strategies along with their team of Indo-Pacific Ocean, and what way there could be resistance of all kind against the China. So that is one aspect, but at the same time, Modi would try and attain his further stature in terms of the fact that he would like to have some cover what he has been doing during his past tenure of prime ministership in Kashmir in particular, and in India as well. So basically, it has again two dimensions. One is India always utilizes these global geostrategic dynamics and the interest of US in their own interest of basically advocating and advancing their overall plan of RSS, whose political wing is BJP. So, and once I indicate that at the macro level, that is what it appears, that they would like to have a cover against all kind of violation which they are making in Kashmir, and against the Citizens Act in India, against the atrocities against minorities in India, and against the lynching of the minorities, particularly in Muslim in India. So if that cover is not taken, then in that case, India can be penalized and can be brought under the international law and international justice. So the other dimension from the US point of view, from Joe Biden points of view, he has two choices. One, that he is the proponent of the human rights. This is what as a senator and as a vice president he has been mentioning and he has been advocating. And then second aspect is, how is he going to attain or advance in his mission, in his foreign policy goals in this region, particularly the Indo-Pacific Ocean against China. The policy which was there against China during Trump time, or particularly during Trump time, it was evolved even much before. But the same policy, almost with different wordings, is being told by Joe Biden. So having said so, very recent Quads meeting and the agreement of this Australia, UK and US, all these things, if we have in our mind, then this what is going to be, some of these points are going to be perhaps discussed with the Joe Biden meeting. But the overall behind the curtain aim and objective, it appears, of Modi government and Modi is the RSS-based all the plans which they have, even for future of this India. So and the way they have planned, the Modi administration has planned to deal with Kashmir and to deal with the minorities, particularly in Muslim. So that cover, I guess he will have it. And what way can he have this cover from Joe Biden? Joe Biden
so far has hardly criticized, hardly has mentioned, hardly has taken any resolution into General Assembly or Security Council, or hardly has given any indication that if nothing else, he might as well go for some sanction in light of the human rights violation which is taking place in India. So he has not done any of these things, and I am not expecting that Joe Biden is going to mention about human rights violation in India, even in his speech. And probably, if I remember it correctly, there was hardly any mention of Joe Biden in the General Assembly speech, or even in this meeting of the joint communique, which I'm expecting. I don't think he's going to make a very strong mention about the human rights violation or what is happening around in India. So what does it boil down to? It boils down to one thing, that India now, as a countermeasure against China, is acceptable in all forms of whatever it does against the human rights violation, which comes under the ambit of violation of international law. And what is that international law? If such violation takes place in a territory which is disputed, such as Kashmir, then Geneva Convention Article 49 is applicable on that. And if that happens, then that also attracts the statutes of International Criminal Court, Article 8 of the International Criminal Court. The same article is being applied by other Kosovo and other places, but this article, I guess, would not be applied against people who are doing these atrocities, including Modi. See what happened about Gujarat. Gujarat massacre had taken place. Modi was fully involved. The European human rights investigation teams had proved it and had found that he is the person behind the whole game of Gujarat massacre. And the US itself had imposed travel restrictions on Modi because of the Gujarat massacre. But once he became the prime minister, the interest converged, and the interest of India and US converged. So everything is fair in such achievement of goals of their foreign policy and the interest. So therefore, the world will keep having such human rights violation at so many places, whether it's Kashmir or Palestine or Syria, or what happened in Iraq and what happened in Afghanistan, so or what is happening even now. So all these, I think, events and all these attitude for the screen of the camera would be different, and for the purpose of implementing their goals and implementing their targets, I think they would not really bother about such violation once it comes to convergence of interest. Yes, if it's a collision of interest, then of course all these laws can be implemented. Well, the human rights violation is one thing, and not talking about while they're meeting at the Quad session in White House is another thing. But I'm pretty sure that they are well aware of the history of India, because India for the longest of its time have been in line with then Soviet Union, and they were reaping the fruits of their economical developments, the armaments, the weapons, and they were when there were two superpowers, they were in line with Soviet Union. The moment Soviet Union collapsed, they changed their alignment with US. So if they were not loyal to Soviet Union, why would US will think that India will ever be loyal to or maybe of any use in your analysis about the China Pacific Ocean Treaty that they are trying to utilize India against China? Don't you think that US is making a huge mistake, because compared to Pakistan, who has not only sacrificed 80,000 people in order to fight the war that they were not even part of. So why do you think the US would trust
India in first thing, and secondly, why on earth, what is that main reason that the President Biden would not talk to Indian Prime Minister during his meeting in Washington that he need to stop human rights violation, protect the rights of the minorities, give the due rights to the people of Kashmir, and accept that the Muslims living in India are the Indian citizens, why they are being treated as second-class citizens? Well, if we assume that the Joe Biden and his administration are the proponent of the human right violation in its true sense, then yes, all these things might as well be considered during the meeting and might as well be made as a talking point. But if we review the development of the geopolitical situation in this entire region and the way U.S. Tries to attempt to engage with the people and with the world has now been amply clear now that U.S. Goes for such interest which may compromise all these international values and international law. And I just gave you the example. Now, second is why U.S. should trust India. Now, U.S. feels, I guess, in my opinion, U.S. feels that they have been able to enter into a legal instrument, that is the international legal instrument, in which they have the pact, Defense Cooperation Pact, and they have the Pact on Information Technology Exchange. They have about 2-3 more pacts, and by virtue of which Indians have given them Gujarat seaport in the garb of logistics, but that could be utilized and probably being utilized for other military purposes as well. So that is one aspect. And second aspect is India feels that if they align with the US, probably they'll be much better off as compared to how much better off. Now, India feels that the US in technology, they are now have the joint ventures on manufacturing of so many defense armament, equipment, missile systems, aircraft assembly, aircraft maintenance. So all these things, India won't have got it. India got the best of the best from Russia. And once the Cold War was over, as you indicated, they are trying to get the best of the best from here. Now, whether they would be utilized, whether they would come up to the expectations, excuse me, come up to the expectations of the United States against China, I think the time would be the best judge. India, the way they are posturing themselves vis-a-vis U.S. policy, I don't think they would be left with much choice but to get involved into this dispute between the two big powers, and this Cold War has already started between China and India, and their interest is being clashed. See what is happening around in India, in Indo-Pacific Ocean. You know, there are quad military exercises. There are submarine being sold by India, the nuclear submarine. The submarine contract being cancelled of France, and there are exercises. There are military exercises between Japan, Australia. The military exercises between India, Japan, Australia. So and then there are sailing exercise in the state of Malacca, infuriating Chinese, and Chinese getting compelled to give a very strong statement that you are crossing the red lines. So once we review all, and then latest Quad and Australia, UK, and US AUKUS agreement, China has also raised its voice on that. So India is now a major player in this entire posturing and entire the alignment of the US interest and the combined converging interest of the Quad members and the other members in that region, including Philippines and Indonesia, Malaysia, Singapore, and all these countries. So from that perspective, if we see, India might be thinking that they can get away from this development, but they are reaching to a level
of a level from where it will be very hard for them to return. And if they return from there, then they will have to pay. They would probably be made to pay a heavy cost, not only in the light of international laws and agreements, what has been done between these Quad countries and US in particular with India. Not only by that, but otherwise also their deployment, their employment, and their posturing in the foreign policy of India. It will be very hard for them to work out from there. Yes. So in this whole scenario where the Pakistan fits in? Pakistan is automatically being pushed, although Pakistan believes in multilateralism. And Pakistan believes in engaging with all countries of the world. Pakistan is still trying. Yesterday, our foreign minister, Pakistan foreign minister, has met with the Secretary of State, US, Blinken. So Pakistan is always open, but somehow the US has always had with the relationship with Pakistan. It was not a strategic relation they maintained. It's only the transitional relation, and it was a roller coaster type of a relation. Now, they have been having the best engagement of Pakistan in their favor, which was Doha Agreement and the engagement with Taliban. They wanted to come out from their recent past I'm talking about. Otherwise, if we go to the history from U2 and airbase and from 62 onward, we can review all these cooperation which Pakistan had given, but Pakistan was not really recognized in view of not only the advantages given to the US, not only Pakistan has a huge contribution. I don't know whether if we review that contribution, whether US deserved it or not, but that contribution where US became the unipolar power of the entire world because of Pakistan contribution. Once Pakistan got fully involved in giving resistance to USSR, and USSR crumbled later on. So to that extent, Pakistan had gone. Pakistan joined. I may not agree with the policy of the policymakers and the head of state at that time, the way they got involved in war on terror, and as a result suffered the lives of about 80,000 people, and the overall about 150. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair,
will come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. I don't think India would continue to stay in Shanghai Cooperation Organization because there would be a conflict of interest to have India in the Shanghai Cooperation Organization in the future development. I'm talking about whether it's this year, next year, or many years afterward. But I don't see India would continue to be a member of Shanghai Cooperation Organization because of this geostrategic and geopolitical conflict of interest with this. Although the Charter of Shanghai Cooperation Organization does not have any mention, and obviously it cannot have any mention about the conflict of interest with other countries, but the posturing and the deployment, the way it is taking place, it automatically goes detrimental to the interest of the members of the ECO, Economic Cooperation Organization, and the Shanghai Cooperation Organization in the countries of this very bloc where we are located. So looking at the SCO conference and then the Prime Minister's of Pakistan statement, and then what we saw, what happened, the New Zealand team, decided not to play in Pakistan. And then the next day we saw the press conference by the two of the federal ministers giving the digital detail of the conspiracy that was created in India, and then obviously end up having this, a huge shock to the fan of not the sport of cricket, but it's considered to be more a political than it's a sport. So, what are your analysis on that? Do you think it was already planned? Do you think Quad was part of it, or it was just fifth generation war, what ISPR calls it? If we review it, the way development had taken place, the withdrawal of New Zealand team and its impact on Pakistan, impact of Pakistan image, impact, of course, with the sentiments of the people of Pakistan, the cricket lover, that definitely has been heard. But going beyond that point, I would say Pakistan image and the confidence of the investor in Pakistan. So a couple of more things. All these things have really impacted Pakistan very hugely. So that only happens if you utilize these events and rope it into the overall strategy of the fifth generation war. Fifth generation war does not leave the traces where you can really clearly indicate that, yes, such and such country, such and such pace. Although the press conference has given a complete thread and the technical leads, how it happened and where it happened, from where it was generated, all those things had been given as our dossier. Now, since the world is not really willing to listen to such things, if the world was having any pathetic consideration on the human right, the Kashmir example was one. If the world had any conscious of the violation of international law, then Palestine, Kashmir, and the way bombardment had taken place in Iraq, and the bombardments had taken place in Afghanistan for next 50 to 200 years, there is going to be an impact of the depleted uranium. As all the weapons, precision weapons, they carry depleted uranium, and there have been survey by international organization in Iraq, and probably the same survey would be conducted in Afghanistan. How long is it going to affect the children living in those areas where tons and tons of bombardment had taken place? And what are the incapacitation of even those children who are being born or retarded in those places? So long term, if we see
all these human rights violations has been ignored by once it comes to the interest of the international big powers and big players. So from that angle, if we look at this fifth generation war in New Zealand, I would say that yes, it has been made as part of the fifth generation war, the way they have withdrawn from the game, and it could have been averted. As a matter of fact, New Zealand team, I would assume that Pakistan authorities had asked them to reconsider, and if the New Zealand security component, starting from their federal their government, and as well as the security advisors of the New Zealand Cricket Board, if they had reviewed it, probably they would have found out some different facts, and they would have probably thought to reconsider and play again. But they just declared emergency in a way that the world should view as if something, big is happening in the security in Pakistan, and therefore Pakistan, is not the country where one could invest or go. None of the countries have really changed their travel advisory. Pakistan, if we just normal on a open media or open source, if we do the research, Pakistan, there are very few incidents of this nature, and those incidents are directly connected with certain organization which Pakistan has already mentioned. Life as normal. Everything is going on in as normal in Pakistan. The offices are working, the judiciary is working, the government instruments are working, citizens are having their normal thing. So under these circumstances, withdrawal of the team of New Zealand, I think it doesn't really make any sense. And if we talk about professional assessment of the New Zealand, we respect. It's a sovereign country, they can have their own assessment. But then they also should follow the world framework, the world protocol, how to do this a reassessment of such alert, even if they had got the alert which they thought that is of a very serious nature, and which was authenticated. In that case, they could have, in view of the bilateral relation with New Zealand or Pakistan, B, that so much of sentiments of the cricket lovers of entire world was already focused on that event of the sports. So they could have done the reassessment. They could have stayed another 3 days, 4 days, 1 week, had done their restatement in the same area, and then they would have announced that, okay, we still find this security threat. But the Five Eyes, which are part of the Quads, if they have shared some information and they have not really shared that information with the local authorities and have not reviewed it themselves, Pakistan would not challenge their judgment. I understand it, but at least Pakistan has all the right to discuss, or from the professional point of view, from the diplomatic point of view, as to how it could have been done. Even if they had, they should have shared that. They should have not only shared, they should have asked for extra information from the host country. They could have reviewed, and then they could have taken the decision in consultation with the host government. At first place, once they have already done their security assessment before coming, they were doing it on daily basis. They were doing it very frequently. Then in that case, in all fairness and in all in view of the protocol of dealing with such matter, I think they could have very conveniently. And therefore, we feel that it is a part of the fifth generation war. Thank you very much. I know we are end of our time. In the last 2 minutes, in your assessment, what would be the fallout of Taliban victory in Afghanistan over Kashmir? Well, Taliban fallout over Kashmir, let's take it in its true spirit. What was the movement of Taliban? In fact, US had gone there to crush terrorism. And terrorism was initiated, 9/11 was initiated by the people, none of them were Afghanis. Okay, Taliban can be blamed that they had harbored them, fine enough. Taliban Mullah Omar, according to my information, the literature available, had agreed to try Osama bin Laden in some third country, not US,
because US became the interested party. And in third, they had even offered, according to the information, offered that he could be taken to Switzerland and tried, or Turkey, he could be taken to Turkey, who is the NATO ally, and could have been tried. But they did not agree with that, right? So once you dislodge someone or some sovereign government and sovereign representative of the nation, then any movement would be defined as the freedom fighter. Now, if we define them as the freedom fighters, and that comes under the definition and under the purview of General Assembly Resolution 2649. And if we read General Assembly Resolution 2649, then Taliban, I would not support any act of terrorism if it was ever generated by Taliban, but their freedom struggle and freedom movement within their own soil, that is defined in the General Assembly resolution and also in the UN Charter, that you cannot really go and invade a sovereign country, whatever form of government they had and whatever way they were going, right? It was a sovereign country and they were the legitimate government. Whether people, the three countries had already accepted that government and others had not, that was their prerogative. So that was one. Second, Taliban, what is going to be now Taliban's attitude? Security Council resolution of 9th September, they have shown some expectations, and those expectations are no human right violation, women right, and all-inclusive government. Day before yesterday, Taliban have announced the all-inclusive in a way that they have included the Hazara, Uzbeks, and Tajiks in the government. They have pledged and committed that all what is given in Security Council resolution in a different way and different style, they've been mentioning that they are going to do it, and they've started doing it. Number one. Number two, the Taliban, if they are not supported in a way that they have about $10 billion confiscated by the US, if it's not released, the other support, because 75% of the funding of the Afghanistan was done from outside sources, in US being the champion of it. So if you stop altogether, what is going to happen? Obviously, people would not get salary, they'll start dying, they'll have the weapons, and then they will start finding other means. Then again, there would be a disruption, there would be a disturbance, there would be a civil right, and it would become a home ground like even now Somalia has Al-Shabaab, and if you make a country totally destabilized, ungovernable by Taliban, then the problem, even the Prime Minister Imran Khan and other countries, neighboring countries, they are quite apprehensive that that would become detrimental for Pakistan. As a matter of fact, Pakistan is again if that happens, it's going to be a victim once again, and Pakistan would not like that, and the world, as a matter of fact, because the other entities and other groups of terrorist group, whether it's ISIS, Daesh, or any other group, they can start operating from there, and then again Afghanistan and Afghan Taliban and other people would be blamed. So in fact, the world is seriously considering that they should not let Taliban reach to the level of ungovernable, and if that happens, that's going to destabilize. But a bigger question arises here, and the researchers and people like myself are really focusing on one more point. Are the big powers serious to keep Afghanistan stabilized? Because if it's stabilized, they feel that China would have been a bigger beneficiary, and the CPAC and the BRI would be a success. So would they want the CPAC and BRI to be a success? The answer is no. So the other question is, the complexity of the problem is, do they want a controlled destabilization?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सिख वफ्द की नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने पर जोर दिया गया है। सिखों के एक वफ्द ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इन पर पाकिस्तान में करतारपुर साहब गुरुद्वारा की यात्रा को यकीनी बनाने के लिए करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने पर जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब, दिल्ली और मकबूजा जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं के 11 रुकनी वफ्द ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सिखों की करतारपुर यात्रा को मार्च 2020 में कोरोना वबा की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। सिख रहनुमाओं ने 19 नवंबर को गुरु नानक देव के यौम पैदाइश से पहले करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का मुतालबा किया है। भारतीय रियासत त्रिपुरा की पुलिस ने 2 सहाफियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। भारतीय रियासत त्रिपुरा पुलिस ने रियासत में हालिया फिरका वाराना तशद्दुद की रिपोर्टिंग करने वाली 2 सहाफियों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर दी है। ज़राए के मुताबिक FIR कंजन दास की तरफ से दर्ज की गई, जिन्होंने दावा किया है कि समृद्धि के सकूनिया और जहां सवरना नामी 2 ख्वातीन सहाफियों ने पाल बाजार के इलाके में मुसलमानों से मुलाकात के दौरान हिंदू बरादरी और त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की। याद रहे कि त्रिपुरा की पानी सागर सब डिवीजन में 26 अक्टूबर को हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद के मुजाहरे के दौरान मस्जिद और मुसलमानों के घरों, दुकानों और दिगर अमलाक पर हमले किए और इनकी तोड़ फोड़ की, जिसके बाद से त्रिपुरा में कशीदगी पाई जाती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का इस्लामी तशख़्ख़ुस, रवायात और सकाफत भारत के निशाने पर है। पासबान हुर्रियत के चेयरमैन का बयान। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है और इलाके का इस्लामी तशख़्ख़ुस, रवायात और सकाफत भारत के निशाने पर है। ज़राए के मुताबिक पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन उज़ैर अहमद गजाली ने मुजफ्फराबाद में जारी एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर इस वक्त तारीख के स्याह तरीन दौर से गुजर रहा है और भारत अपनी पूरी फौजी ताकत और काले क़वानीन के जरिए आज़ादी, इंसाफ और हक़ खुद-इरादियत के लिए उठने वाली हर आवाज़ को खामोश कराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के जिंदानों में हज़ारों कश्मीरी नज़रबंद जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदियां आयद करके रियासत को एक जेल में तब्दील कर दिया गया है, जबकि काबिज फोर्सेस हज़ारों कनाल अराजी पर जबरी तौर पर काबिज हो रही है। उज़ैर अहमद गजाली ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत और अवाम से अपील की है कि कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि तनाज़ा कश्मीर की हसासियत भारत के ज़ालिमाना रवैये और दहशतगर्द मंसूबों से अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों को आगाह करने के लिए रियासत गिर मुज़ाहिमती तहरीक का आगाज़ करना होगा। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों की खामोशी की वजह से नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत निहत्ते कश्मीरियों पर सफाकाना मुजालम ढा रही है। दुनिया भारत की हिंदुत्व हुकूमत को दहशतगर्द तंजीम करार दे, मिशाल मलिक का बयान। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और गैर कानूनी तौर पर नजरबंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया मिशाल हुसैन मलिक ने दुनिया पर जोर दिया है कि वो दाइश की तरह बुनियाद परस्त और फस्ताई हिंदुत्व हुकूमत के खिलाफ भी मुत्तहिद होकर सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि इसने जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की आवाम की जिंदगी जहन्नम बना दी है। ज़राए के मुताबिक मिशाल हुसैन मलिक ने इस्लामाबाद में एक बयान में कहा कि आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें दाइश की तरफ से उठाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ यक आवाज़ हैं, जो काबिल तहसीन है। ताहम उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व हुकूमत और फ़लस्तीन में सिहोनी हुकूमत की तरफ से रियासती दहशतगर्दी और गैर इंसानी कार्रवाइयों पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए जाने पर दुनिया के दोहरे मेयार पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि हकीकी अमन का ख्वाब उसी वक्त पूरा हो सकता है जब आलमी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे दोगलेपन से परहेज करें और इंसानियत और इंसानी हकूक़ को अपने माली मुफादात और ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर रखें। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में 16,85,571 बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। प्रोविंशनल प्रोग्राम मैनेजर EPI डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान ने मरकजी ऐवान सहाफ़त में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 15 नवंबर से 27 नवंबर तक मुहिम आज़ाद कश्मीर भर में जारी रहेगी। EPI के 370 मराकिज़, 1,874 आउटरीच टीमें, 4,488 तरबियत याफ्ता वर्कर्स टीम असिस्टेंट, 4119 सोशल मोबाइलर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। मॉनिटरिंग के लिए 449 फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर, 220 यूनियन काउंसिल सुपरवाइजर्स,
199 तहसील लेवल सुपरवाइजर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, मर्दाना और जनाना तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा सेहत के 60 जिले अफसरान और 15 प्रोविंशियल मैनेजर, EPI ऑफिस सुपरवाइजर को मुहिम कामयाब बनाने की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर TV USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर TV USA के साथ मैं हूं निम्रा मलिक। आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। आज़ादी पसंद मुजाहिदीन की यलगार में श्रीनगर में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। इंडियन फोर्सेज ने कई मकानात को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के नवाही इलाके में कल इतवार की रात आज़ादी पसंद मुजाहिदीन ने गुलाम पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार की शिनाख्त 37 साला मोहम्मद मकबूल के नाम से हुई है। मुजाहिदीन ने यह हमला श्रीनगर के नवाही इलाके नवाकदल के जमालता गांव में किया है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी, इलाज की सहूलतों में भी इजाफा कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें एक का ताल्लुक मीरपुर और एक का भिंबर से है। 3 मरीज सेहतयाब हुए और 174 अफराद के कोरोना वायरस के शुबा में टेस्ट लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में अब तक 3,18,323 अफराद के कोरोना वायरस के शुबा में टेस्ट लिए गए हैं। 34,512 अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी पाई गई है। 33,727 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और इन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तालीमी अदारों में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकारीर की तैयारी और तुलबा की इसकी जानिब रुग़बत खुश आइंद है। वज़ीर ख़ज़ाना आज़ाद कश्मीर का खिताब। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना इमदाद बाहमी व लैंड रेवेन्यू अब्दुल माजिद खान ने कहा कि रसूलुल्लाह से हकीकी मोहब्बत और इश्क ही मोमिन का असासा है। तालीमी अदारों में सीरतुन्नबी पर तकारीर की तैयारी और तुलबा की इसकी जानिब रुग़बत खुश आइंद है। तहरीर और तकरीर पर अबूर के जरिए दुनिया के कई बड़े मार्के फतेह हुए, इसलिए जुबानों पर अबूर के साथ साथ बेहतरीन अल्फाज का चुनाव और खूबसूरत असलूब नहायत जरूरी है। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली 12 रोज़ा खसरा रुबेला मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में शुरू होने वाली 12 रोज़ा खसरा रुबेला मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि महकमा सेहत आमा आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर्स और दीगर असामियों में इजाफा किया जाएगा। अवामी सहूलियात की खातिर महकमा सेहत के अदारों को अपग्रेड्स नए अदारे की क़याम में अमल में ला रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर में महकमा सेहत आमा में बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट लगाने पर इत्तफाक किया है। आज़ाद कश्मीर में तारीखी वर्सों आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म के मंसूबों को अगर CPEC में शामिल किया जाए तो सेहत को फरोग मिलेगा। सेक्रेटरी इत्तलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज़ाद जम्मू कश्मीर।
सेक्रेटरी इत्तलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहतरमा मिद्दत शहजाद ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में CPEC के हवाले से मुनक़दा पार्लिमानी डायलॉग में प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में तारीखी वर्सों आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म के मंसूबों को अगर CPEC में शामिल किया जाए तो सेहत को मजीद फ़रोग मिलेगा। जनूबी एशिया और वस्ती एशिया की आवाम के लिए बाहमी राब्तों के फ़रोग से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। भारत में गाय के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर ने बीमार गाय के लिए मुल्क की पहली एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश की हुकूमत शदीद बीमार गाय के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि 112 इमरजेंसी सर्विस नंबर की तरह नई सर्विस संगीन तौर पर बीमार गाय की फौरी इलाज की राह हमवार करेगी। दुबई, शारजाह और अजमान में ज़िलज़िले के शदीद झटके, इमारतें लरज़ उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों दुबई, शारजाह और अजमान में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। ज़िलज़िले के इन झटकों से मुतअद्दिद इमारतें लरज़ उठी और इन इमारतों से लोग बाहर निकल आए। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सिस्टम पर हैकर्स का खतरनाक हमला, लाखों मेल्स भेज दी। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सिस्टम्स पर हैकर ने खतरनाक हमला करके लाखों मेल्स भेज दी। FBI ने कहा कि वाक़े से मुतासिर हार्डवेयर को मसला सामने आने के फौरी बाद ऑफलाइन कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अमरीका और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ईमेल सिस्टम में हैकर्स ने दाखिल होकर मुमकिन साइबर हमले की लाखों इंतबाही पैगामात अरसाल कर दिए। भारत में नजर आतिश की गई मस्जिद का बताने पर खातून सहाफी पर मुकदमा। भारत में 2 खातून सहाफी रियासत त्रिपुरा में जलाई गई मस्जिद और मुसलमानों की इमलाक की वीडियो सामने ले आई। इंतहा पसंद हिंदुओं का पर्दा चाक करने पर हुकूमत और इंतहा पसंद आग बगोला हो गए। पुलिस ने दोनों सहाफियों पर मुकदमा दर्ज करके इन्हें होटल से निकलने से रोक दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली आमिर यासीन चौधरी और यासिर सुल्तान चौधरी ने मेंबर असम्बली का हलफ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक ने 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली से हलफ लिया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर वज़रा हुकूमत ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। आमिर यासीन चौधरी और यासिर सुल्तान दोनों मेंबरान असम्बली ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होकर आए। पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन चौधरी ने अपने वालिद की खाली करदा नशिस्त पर, जबकि तहरीक इंसाफ के यासिर सुल्तान भी अपने वालिद की खाली करदा नशिस्त पर कामयाब होकर मेंबर असम्बली बने हैं। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी USA से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी USA। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कश्मीर के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में तफसीली मुलाकात हुई। इस मौके पर मुलाकात में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मसला कश्मीर और अपने अमरीका, बरतानिया और यूरोप के हालिया दौरों पर ब्रीफिंग दी। त्रिपुरा मुस्लिम मुखालिफ फसादात कौमी अक़लियती कमीशन ने हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी अक़लियती कमीशन ने मसाजिद, मुसलमानों के अमलाक पर हमलों पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। भारत के कौमी अक़लियती कमीशन ने रियासत त्रिपुरा में मसाजिद और मुसलमानों के मकानात और दुकानों पर हमले के मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर इससे जवाब तलब किया है। ज़राए के मुताबिक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में सहाफ़ियों को बताया कि त्रिपुरा में मसाजिद और मुसलमानों के मकानों और दुकानों में तोड़ फोड़ के वाक़े का अज खुद नोटिस लेते हुए रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान शुमाली त्रिपुरा की सब डिवीजन पानी सागर में एक मस्जिद और मुसलमानों की 3 दुकानों और मकानों पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर हमलावरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है। इसके अलावा इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, किस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात दोबारा ना होने के लिए क्या इक़दाम किए गए, इस हवाले से भी रिपोर्ट तलब की गई है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक के कारकुन को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने जिला इस्लामाबाद से इंसानी हकूक के कारकुन तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया है। ज़राए के मुताबिक तालिब हुसैन को पुलिस ने उनके खिलाफ 3 हफ्ते कबल लारनो पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए एक मुकदमे में जिला के इलाके कोकरनाग में उनके घर से हिरासत में लिया। तालिब हुसैन को गुज़श्ता माह जिला में भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से एक कबायली नौजवान परवेज अहमद के कत्ल के बाद मुतासरा खानदान का इंसाफ की फरहमी का मुतालबा करने पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। 7 अक्टूबर को पेश आने वाले वाक़े को तालिब ने जाली मुकाबला करार दिया था। SHO लारनो के मुताबिक तालिब ने मुकामी लोगों को काबिज इंतजामिया और भारतीय फोर्सेस के खिलाफ उकसाया था। तालिब ने अपने भाई को बताया है कि पुलिस ने इसे गुज़श्ता माह परवेज अहमद के कत्ल के बारे में जारी की गई 14 मिनट दौरानिये की वीडियो की वजह से गिरफ्तार किया है। तालिब हुसैन के वकील तारिक ने मीडिया को बताया कि उन्होंने जमानत के लिए दरख्वास्त दे दी है और उम्मीद है कि तालिब को जमानत मिल जाएगी। तालिब हुसैन इस वक्त महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, मकबूजा कश्मीर में मजीद 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस और बदनाम जमाना तहकीकाती इदारे NIA ने बारमूला और गंदरबल के इजलास से 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक NIA के एहलकारों ने 2 नौजवानों राशिद मुजफ्फर गनाई और नासिर मीर को जिला बारमूला के कस्बा सोपुर से गिरफ्तार किया। भारतीय पुलिस ने जिला गंदरबल के इलाके सहपुरा से अरशद अहमद मीर नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। भारत के इलाके रांची में हिंदू इंतहा पसंदों का कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद। भारतीय रियासत झारखंड के इलाके रांची में हिंदू इंतहा पसंदों ने 3 कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया और इन्हें पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किया। ज़राए के मुताबिक रांची में तजारत की गर्ज से आए कश्मीरी नौजवानों बलाल अहमद, शबीर अहमद और वसीम अहमद को हिंदू इंतहा पसंदों ने गन पॉइंट पर पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किया और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा इन्हें धमकी दी कि वो फौरन शहर से चले जाएं, नहीं तो इन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। बलाल ने सहाफ़ियों को बताया कि वो मौसम सरमा में गर्म कपड़े बेचने के लिए रांची आते हैं, ताहम गुज़श्ता चंद दिनों से इनके साथ मुकामी लोगों का रवैया अचानक बदल गया है और वो मुसलसल इन्हें हरासा कर रहे हैं। उधर कश्मीरी नौजवानों ने खुद पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले और पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किए जाने के बारे में डोरांडा पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी दरख्वास्त दी है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ. اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी USA के साथ मैं हूं डॉक्टर सहरिश. आइए लिए चलते हैं आपको आज की खबरों की जानिब. वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा है कि पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मंसूबे खित्ते की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए संगे मील साबित होंगे. वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुआशी तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रही है. पार्लिमानी कमेटी बराए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद मंगला मीरपुर एक्सप्रेस वे गेम चेंजर मंसूबा है. इसको स्पीड अप किया जाए. इसकी तामीर से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तमाम अजला मुख्तसर रास्ते से आपस में मुंसलिक हो जाएंगे और ये मुल्क के इस हिस्से के राब्ते के लिए मुख्तसर तरीन शाहराह भी होगी. रोटोशोंटर टनल के जरिए मशरकी शाहराह की तामीर से आज़ाद जम्मू और कश्मीर और पंजाब को गिलगित बल्तिस्तान तक रसाई के लिए मुख्तसर तरीन रास्ता भी होगा और जिला नीलम गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तसर रूट के जरिए मुंसलिक हो जाएगा. वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए सरगर्म अमल है. हुकूमत ने अपने इब्तदाई चंद माह में तजावुज़ात का खात्मा, शहरी और देही इलाकों की सफाई, सियाहती मकामात की सफाई के लिए खसूसी मुहिम शुरू की, जबकि LOC के अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए भी खसूसी हफ्ता मनाया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहिबान ने खुद LOC के इलाकों में जाकर लोगों के मसाइल सुने. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के लिए मुत्तहिद हैं. इन ख्यालात का इजहार उन्होंने OIC की नुमाइंदा खसूसी बराए जम्मू और कश्मीर से मुलाकात के दौरान किया. मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्विटर पर बयान में कहना था कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लिए OIC के खसूसी नुमाइंदे यूसुफ अलदोबे से मुलाकात अच्छी रही. मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में जारी संगीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल किया. वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर दुनिया का वो खित्ता है जहां सबसे ज्यादा काबिज फौज मौजूद है. हम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए मुत्तहिद हैं. दूसरी जानिब मुल्तान में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला कश्मीर हो या मसला फ़लस्तीन, दुनिया भर में अवाम की आवाज़ बनकर पाकिस्तान ने भरपूर तर्जुमानी की और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में भरपूर तरीके से उजागर कर रहा हूं.
भारत के कौमी अक़लियती कमीशन ने रियासत त्रिपुरा में मसाजिद और मुसलमानों के मकामात और दुकानों पर हमले के मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर इससे जवाब तलब किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में सहाफियों को बताया कि इन हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान शुमाली त्रिपुरा के सब डिवीजन पानी सागर में एक मस्जिद और मुसलमानों के 3 मकानों और कुछ दुकानों पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की शिकायत को दूर करने के साथ साथ कमीशन का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि किसी की जात पात और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर हमला आवरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत कौमी सलामती से खिलवाड़ कर रही है और इसके पास मुल्क की सरहदों के दफा के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही है और अवाम को गुमराह किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में एक खबर भी पोस्ट की है जिसके मुताबिक भारतीय वजारत खारजा का दावा है कि कुछ बरसों से सरहद पर चीन की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है, लेकिन भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत कहते हैं कि चीनियों की हिंदुस्तानी सरहद में घुसने की Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. इजलास के दौरान किया गया। बीएसएफ को मरहलावार वादी कश्मीर में तैनात किया जाएगा और पहले मरहले में इसकी 20 से ज्यादा कंपनियां अहम तंसीबात पर तैनात की जाएंगी। बीएसएफ ऑपरेशन में दीगर फोर्सेस के साथ भी ताउन करेगी। बीएसएफ को श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, इस्लामाबाद, गांदरबल, कोलगाम और बारामूला में तैनात किया जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं हूं डॉक्टर सहरीश। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वजीर आजम आजाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी से इस्लामी ताउन तंजीम OIC सेक्रेटरी जनरल के जम्मू और कश्मीर पर खुसूसी नुमाइंदे नायब सेक्रेटरी जनरल सफीर यूसुफ मोहम्मद साले अल दोबे की क़ियादत में OIC के आला सतही वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने वफ्द की मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने कहा कि OIC के वफ्द की जानिब से दौरा आजाद कश्मीर पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहां आए और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद शहरियों पर हिंदुस्तान की फोर्सेस की इश्ताल अंगेजियों का जायजा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए रोज हिंदुस्तान की फोर्सेस की फायरिंग से निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी होते हैं और इनकी अमलाक को नुकसान पहुंचता है, जबकि इससे कई गुना ज्यादा दरिंदगी मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फोर्सेस रवा रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे असलाफ के दो कौमी नजरिए की बिना पर 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया। तमाम कश्मीरियों का मुश्तरका मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए और कश्मीरियों को राय शुमारी का हक दिया जाए, लेकिन भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करने में सबसे बड़ी रुकावट है। इस वक्त हिंदुस्तान ने 9 लाख फौज मकबूजा वादी में तैनात कर रखी है, जिसने पूरे मकबूजा कश्मीर को मुहासरे में ले रखा है। सदर आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि एहतसाब एक्ट जो मेरी हुकूमत में बना था उसे बेहतर करके आजाद कश्मीर में एहतसाबी अमल शुरू होगा। हम चाहते हैं कि इक्तदार निचली सतह तक मुंतकिल हो, इक्तदार नौजवानों, खवातीन, मजदूरों, किसानों, मेहनतकशों तक जाए, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह से बेशुमार मुश्किलात आती हैं। अब फैसला हो चुका है कि आजाद कश्मीर में चंद महीनों में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। कारकुन बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें। मुजफ्फराबाद में एक जलसा आम से खिताब करते हुए सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मैंने सदारत का हल्फ उठाने के बाद पहले खिताब में कहा था कि मसला कश्मीर को जारहाना अंदाज में बैनुल अक़वामी फोरम पे उठाऊंगा। नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के मौका पर हमने एक बड़ा मुजाहरा करके भारत की मुजम्मत और दुनिया की तवज्जो कश्मीर की जानिब मबजूल करवाई। खालिस्तान की हामी सिखों की तंजीम सिखिस फॉर जस्टिस ने कनाडा की अदालत में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए पाकिस्तान की फंडिंग के इल्जामात के खिलाफ दायर हत्तक इज्जत के एक मुकदमे का पहला मरहला जीत लिया है। कनाडा के एक ब्रॉडकास्टर टेरी मिलोस्की ने गुज़िश्ता साल सितंबर में खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट के नाम से एक मुतनाज़ रिपोर्ट शाया की थी और इल्जाम लगाया था कि सिखिस फॉर जस्टिस और इसकी खालिस्तान की मुहिम की पाकिस्तान की पुश्तपनाही और फंडिंग कर रहा है। टेरी मिलोस्की ने जज के सामने एतराफ किया कि इनके पास पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान नवाज ग्रुप की पुश्तपनाही और फंडिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया और बैरून मुल्क सिफारती मिशनों ने टेरी मिलोस्की की रिपोर्ट खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट की बड़े पैमाने पर तशहीर की थी और इसे पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बिजली के बदतरीन बुहरान से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली सागर ने वादी कश्मीर में जारी बिजली के बदतरीन बुहरान पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि भारतीय काबज इंतजामिया मकबूजा इलाके में बिजली की फराहमी में बेहतरी में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2016 में भारतीय काबज हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों से बिजली की बिला तातुल फराहमी के वादे किए जा रहे हैं, जबकि दर हकीकत बिजली की फराहमी की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी जानिब श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के शहरियों और तुलबा ने बिजली की बार बार लोड शेडिंग और इंटरनेट सर्विस मुअत्तली पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग और इसके बायस इंटरनेट की मुअत्तली ने इनका जीना दोबर कर दिया है। भारत के जेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में तैनात 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों के जुल्म और बर्बरियत की वजह से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में शहरियों के खिलाफ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट, टाडा और दीगर काले कवानीन के नफाज के जरिए दीवार से लगाने और इनकी गैर कानूनी नजरबंदियों को तूल देने की शदीद मुजम्मत की है। हुर्रियत तर्जुमान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जबरी भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आजादी के लिए कश्मीरी अवाम की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जल्द अज जल्द हल करने के लिए अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे और कश्मीर में भारतीय अफवाज के मुजालिम, जबरी गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रुकवाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना चाहिए। भारतीय फोर्सेस की जानिब से गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ज़हनी तौर पर माजूर 47 कश्मीरियों को शहीद करने का इंकशाफ हुआ है। इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद एहसन ओंतो ने कहा है कि भारतीय फोर्सेस ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ज़हनी तौर पर माजूर 47 कश्मीरी शहीद किए हैं। मोहम्मद एहसन ओंतो ने कहा है कि ज़हनी तौर पर माजूर अफराद को जिस तरह गोलियां मारकर कत्ल किया जाता है, इसे महज इत्तफाक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मसला यह है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले कवानीन भारतीय फोर्सेस को महज शक की बुनियाद पर किसी को गोली मारने की इजाजत देते हैं और हुकाम तहकीकात का वादा करते हैं, लेकिन कभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। ये थी अब तक की खबरें। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पुलिस स्टेशन में मुसलमान नौजवान के कत्ल पर योगी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है। बेटे को दौरान हिरासत कत्ल किया गया, वालिद का इल्जाम। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज के एक पुलिस स्टेशन में मुर्दा हालत में पाए जाने वाले 22 साल मुसलमान नौजवान के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि उनके बेटे को दौरान हिरासत कत्ल किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान अल्ताफ के वालिद चाहत मियां ने मीडिया को बताया है कि वो खुद अपने बेटे को पुलिस चौकी छोड़कर आए थे और पुलिस ने यकीन दहानी कराई थी कि वो पूछगछ के बाद उसे छोड़ देंगे, मगर उसे दौरान हिरासत कत्ल कर दिया गया। उधर अल्ताफ के दौरान हिरासत कत्ल पर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां भी योगी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं। कांग्रेस की यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कासगंज में पुलिस की हिरासत में मुसलमान नौजवान की मौत पर योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि कासगंज में अल्ताफ, आगरा में औरौन वाल्मीकि और सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस की हिरासत में हलाकत के वाकयात से वाज़े होता है कि रहबर रहजन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस दौरान हिरासत लोगों के कत्ल में सर फहरिस्त है।
हिंदुत्व को दाइश और बोको हराम जैसी दहशतगर्द तंजीम करार देने पर सलमान खुर्शीद पर कड़ी तनकीद। भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा और कांग्रेस के रहनुमा सलमान खुर्शीद की तरफ से अपनी हालिया तसनीफ सनराइज अवर अवधिया में हिंदुत्व नजरिए का मुआजना दाइश और बोको हराम जैसी दहशतगर्द तंजीमों से करने से भारत में तनाज़ा खड़ा हो गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बुध को सलमान खुर्शीद की किताब की तकरीब रोनुमाई के 24 घंटे के अंदर ही दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पुलिस के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। विवेक गर्ग नामी एक वकील ने सलमान खुर्शीद पर हिंदुत्व को बदनाम करने का इल्जाम लगाते हुए नई दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदुत्व नजरिया ने कदीम हिंदू मजहब को एक तरफ रख दिया है, जो हर तरह से दाइश और बोको हराम जैसी जिहादी तंजीमों की तरह है। अपनी दलील में खुर्शीद ने हिंदू मजहब को एक आला मेयार का मजहब करार दिया है। उन्होंने मजीद लिखा है कि इसके लिए गांधी जी ने जो तहरीक दी है उससे बड़ा कोई मुहर्रिक नहीं हो सकता। उनका मजीद कहना था कि मैं नया लेबल क्यों कबूल करूं, मैं बोलूंगा चाहे कोई हिंदू मजहब की तौहीन कहे। मैं कहता हूं कि हिंदुत्व की सियासत करने वाले दाइश और बोको हराम की तरह गलत हैं। सिक्स फॉर जस्टिस ने पाकिस्तान की फंडिंग के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। खालिस्तान की हामी सिखों की तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस ने कनाडा की अदालत में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए पाकिस्तान की फंडिंग के इल्जामात के खिलाफ दायर मुकदमे का पहला मरहला जीत लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा के एक ब्रॉडकास्टर टेरी मेलोक्स्की ने गुज़श्ता साल सितंबर में खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट के उन्वान से एक मुतनाज़ा रिपोर्ट शाया की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि सिक्स फॉर जस्टिस और इसकी खालिस्तान की मुहिम की पाकिस्तान की पुष्टपनाही और फंडिंग कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सहाफ़ी टेरी मेलोक्स्की का यह दावा झूठ पर मबनी था कि सिक्स फॉर जस्टिस असल में सिखों की नुमाइंदा तंजीम नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। टेरी मेलोक्स्की ने जज के सामने इतराफ़ किया है कि उनके पास पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान नवाज ग्रुप की पुष्टपनाही और फंडिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से OIC के जम्मू कश्मीर पर खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी से इस्लामी ताउन तंजीम सेक्रेटरी जनरल के जम्मू कश्मीर पर खुसूसी नुमाइंदे और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एम्बेसडर यूसुफ मोहम्मद साहले अलदोबे की क़यादत में OIC के आला सतही वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने वफ़द को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वफ़द में OIC के एम्बेसडर मिस्टर तारिक अली बखीत, एम्बेसडर हसन अली हसन, एम्बेसडर अहमद सरीर, एम्बेसडर रिजवान सईद शेख, OIC में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब अल-खबीब बोरानी, मिस माहा असीरी, मिस्टर मोहम्मद अल-खाम लीची, मिस्टर वकास लतीफ़ मुगल, मिस्टर फ़रख इकबाल खान, डायरेक्टर जनरल मिस्टर मोहसन सैफ अली खान, डिप्टी डायरेक्टर OIC मिस्टर शहजाद हुसैन और दीगर शामिल थे। इस मौके पर अपोजिशन लीडर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा कि OIC के वफ़द की जानिब से दौरा आज़ाद जम्मू कश्मीर पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप यहाँ आए और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद शहरियों पर हिंदुस्तान की फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजियों का जायजा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए रोज हिंदुस्तान की फोर्सेस की फायरिंग से निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी होते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के वफ़द का आज़ाद जम्मू कश्मीर में ठोठा महाजर कैंप का दौरा। वफ़द ने कैंप में कायम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का भी मुआयना किया। इस मौके पर वफ़द ने कैंप में मुकीम महाजरीन से मुलाकात की। वफ़द को कैंप के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। महाजरीन के नुमाइंदे वफ़द ने इस्लामी ताउन तंजीम के वफ़द से मुलाकात भी की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर TV USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं हूं डॉक्टर सहरीश। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वजीर आजम आजाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी से इस्लामी ताउन तंजीम OIC सेक्रेटरी जनरल के जम्मू और कश्मीर पर खुसूसी नुमाइंदे नायब सेक्रेटरी जनरल सफीर यूसुफ मोहम्मद सालेह अल दोबे की क़ियादत में OIC के आला सतही वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने वफ्द की मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने कहा कि OIC के वफ्द की जानिब से दौरा आजाद कश्मीर पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहां आए और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद शहरियों पर हिंदुस्तान की फोर्सेस की इश्ताल अंगेजियों का जायजा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए रोज हिंदुस्तान की फोर्सेस की फायरिंग से निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी होते हैं और इनकी अमलाक को नुकसान पहुंचता है, जबकि इससे कई गुना ज्यादा दरिंदगी मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फोर्सेस रवा रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे असलाफ के दो कौमी नजरिए की बिना पर 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया। तमाम कश्मीरियों का मुश्तरका मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए और कश्मीरियों को राय शुमारी का हक दिया जाए, लेकिन भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करने में सबसे बड़ी रुकावट है। इस वक्त हिंदुस्तान ने 9 लाख फौज मकबूजा वादी में तैनात कर रखी है, जिसने पूरे मकबूजा कश्मीर को मुहासरे में ले रखा है। सदर आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि एहतसाब एक्ट जो मेरी हुकूमत में बना था उसे बेहतर करके आजाद कश्मीर में एहतसाबी अमल शुरू होगा। हम चाहते हैं कि इक्तदार निचली सतह तक मुंतकिल हो, इक्तदार नौजवानों, खवातीन, मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों तक जाए, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह से बेशुमार मुश्किलात आती हैं। अब फैसला हो चुका है कि आजाद कश्मीर में चंद महीनों में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। कारकुन बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें। मुजफ्फराबाद में एक जलसा आम से खिताब करते हुए सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मैंने सदारत का हल्फ उठाने के बाद पहले खिताब में कहा था कि मसला कश्मीर को जारहाना अंदाज में बैनुल अक़वामी फोरम पे उठाऊंगा। नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के मौका पर हमने एक बड़ा मुजाहरा करके भारत की मुजम्मत और दुनिया की तवज्जो कश्मीर की जानिब मबजूल करवाई। खालिस्तान की हामी सिखों की तंजीम सिखिस फॉर जस्टिस ने कनाडा की अदालत में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए पाकिस्तान की फंडिंग के इल्जामात के खिलाफ दायर हत्या की इज्जत के एक मुकदमे का पहला मरहला जीत लिया है। कनाडा के एक ब्रॉडकास्टर टेरी मिलोस्की ने गुज़िश्ता साल सितंबर में खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट के नाम से एक मुतनाज़ रिपोर्ट शाया की थी और इल्जाम लगाया था कि सिखिस फॉर जस्टिस और इसकी खालिस्तान की मुहिम की पाकिस्तान की पुश्तपनाही और फंडिंग कर रहा है। टेरी मिलोस्की ने जज के सामने एतराफ किया कि इनके पास पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान नवाज ग्रुप की पुश्तपनाही और फंडिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया और बैरून मुल्क सिफारती मिशनों ने टेरी मिलोस्की की रिपोर्ट खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट की बड़े पैमाने पर तशहीर की थी और इसे पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बिजली के बदतरीन बुहरान से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली सागर ने वादी कश्मीर में जारी बिजली के बदतरीन बुहरान पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि भारतीय काबज इंतजामिया मकबूजा इलाके में बिजली की फराहमी में बेहतरी में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2016 में भारतीय काबज हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों से बिजली की बिला तातुल फराहमी के वादे किए जा रहे हैं, जबकि दर हकीकत बिजली की फराहमी की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी जानिब श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के शहरियों और तुलबा ने बिजली की बार बार लोड शेडिंग और इंटरनेट सर्विस मुअत्तली पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग और इसके बायस इंटरनेट की मुअत्तली ने इनका जीना दोबर कर दिया है। भारत के जेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में तैनात 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों के जुल्म बर्बरियत की वजह से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में शहरियों के खिलाफ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट, टाडा और दीगर काले कवानीन के नफाज के जरिए दीवार से लगाने और इनकी गैर कानूनी नजरबंदियों को तूल देने की शदीद मुजम्मत की है। हुर्रियत तर्जुमान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जबरी भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आजादी के लिए कश्मीरी अवाम की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जल्द अज जल्द हल करने के लिए अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे और कश्मीर में भारतीय अफवाज के मुजालिम, जबरी गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रुकवाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना चाहिए। भारतीय फोर्सेस की जानिब से गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ज़हनी तौर पर माजूर 47 कश्मीरियों को शहीद करने का इंकशाफ हुआ है। इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद एहसन ओंतो ने कहा है कि भारतीय फोर्सेस ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ज़हनी तौर पर माजूर 47 कश्मीरी शहीद किए हैं। मोहम्मद एहसन ओंतो ने कहा है कि ज़हनी तौर पर माजूर अफराद को जिस तरह गोलियां मारकर कत्ल किया जाता है, इसे महज इत्तफाक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मसला यह है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले कवानीन भारतीय फोर्सेस को महज शक की बुनियाद पर किसी को गोली मारने की इजाजत देते हैं और हुकाम तहकीकात का वादा करते हैं, लेकिन कभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। ये थी अब तक की खबरें। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएस से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पुलिस स्टेशन में मुसलमान नौजवान के कत्ल पर योगी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है। बेटे को दौरान हिरासत कत्ल किया गया, वालिद का इल्जाम। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज के एक पुलिस स्टेशन में मुर्दा हालत में पाए जाने वाले 22 साला मुसलमान नौजवान के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि उनके बेटे को दौरान हिरासत कत्ल किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान अल्ताफ के वालिद चाहत मियां ने मीडिया को बताया है कि वो खुद अपने बेटे को पुलिस चौकी छोड़कर आए थे और पुलिस ने यकीन दहानी कराई थी कि वो पूछगछ के बाद उसे छोड़ देंगे, मगर उसे दौरान हिरासत कत्ल कर दिया गया। उधर अल्ताफ के दौरान हिरासत कत्ल पर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां भी योगी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं। कांग्रेस की यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कासगंज में पुलिस की हिरासत में मुसलमान नौजवान की मौत पर योगी हुकूमत को हदफे तनकीद बनाते हुए कहा कि कासगंज में अल्ताफ, आगरा में अरोन वाल्मीकि और सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस की हिरासत में हलाकत के वाकयात से वाज़े होता है कि रहबर रहजन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस दौरान हिरासत लोगों के कत्ल में सर फहरिस्त है।
हिंदुत्व को दाइश और बोको हराम जैसी दहशतगर्द तंजीम करार देने पर सलमान खुर्शीद पर कड़ी तनकीद। भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा और कांग्रेस के रहनुमा सलमान खुर्शीद की तरफ से अपनी हालिया तसनीफ सनराइज अवर अवधिया में हिंदुत्व नजरिए का मुआजना दाइश और बोको हराम जैसी दहशतगर्द तंजीमों से करने से भारत में तनाज़ा खड़ा हो गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बुध को सलमान खुर्शीद की किताब की तकरीब रोनुमाई के 24 घंटे के अंदर ही दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पुलिस के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। विवेक गर्ग नामी एक वकील ने सलमान खुर्शीद पर हिंदुत्व को बदनाम करने का इल्जाम लगाते हुए नई दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदुत्व नजरिया ने कदीम हिंदू मजहब को एक तरफ रख दिया है, जो हर तरह से दाइश और बोको हराम जैसी जिहादी तंजीमों की तरह है। अपनी दलील में खुर्शीद ने हिंदू मजहब को एक आला मेयार का मजहब करार दिया है। उन्होंने मजीद लिखा है कि इसके लिए गांधी जी ने जो तहरीक दी है उससे बड़ा कोई मुहर्रिक नहीं हो सकता। उनका मजीद कहना था कि मैं नया लेबल क्यों कबूल करूं, मैं बोलूंगा चाहे कोई हिंदू मजहब की तौहीन कहे। मैं कहता हूं कि हिंदुत्व की सियासत करने वाले दाइश और बोको हराम की तरह गलत हैं। सिक्स फॉर जस्टिस ने पाकिस्तान की फंडिंग के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। खालिस्तान की हामी सिखों की तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस ने कनाडा की अदालत में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए पाकिस्तान की फंडिंग के इल्जामात के खिलाफ दायर मुकदमे का पहला मरहला जीत लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा के एक ब्रॉडकास्टर टेरी मेलोक्स्की ने गुज़श्ता साल सितंबर में खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट के उन्वान से एक मुतनाज़ा रिपोर्ट शाया की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि सिक्स फॉर जस्टिस और इसकी खालिस्तान की मुहिम की पाकिस्तान की पुष्टपनाही और फंडिंग कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सहाफ़ी टेरी मेलोक्स्की का यह दावा झूठ पर मबनी था कि सिक्स फॉर जस्टिस असल में सिखों की नुमाइंदा तंजीम नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। टेरी मेलोक्स्की ने जज के सामने एतराफ़ किया है कि उनके पास पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान नवाज ग्रुप की पुष्टपनाही और फंडिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से OIC के जम्मू कश्मीर पर खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से इस्लामी ताउन तंजीम सेक्रेटरी जनरल के जम्मू कश्मीर पर खुसूसी नुमाइंदे और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एम्बेसडर यूसुफ मोहम्मद साहले अल-दोबे की क़यादत में OIC के आला सतही वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने वफ़द को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वफ़द में OIC के एम्बेसडर मिस्टर तारिक अली बखीत, एम्बेसडर हसन अली हसन, एम्बेसडर अहमद सरीर, एम्बेसडर रिजवान सईद शेख, OIC में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब अल-खबीब बोरानी, मिसमाहा असीरी, मिस्टर मोहम्मद अल खान लीची, मिस्टर वकास लतीफ़ मुगल, मिस्टर फ़रख इकबाल खान, डायरेक्टर जनरल मिस्टर मोहसन सैफ अली खान, डिप्टी डायरेक्टर OIC मिस्टर शहजाद हुसैन और दीगर शामिल थे। इस मौके पर अपोजिशन लीडर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर, वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि OIC के वफ़द की जानिब से दौरा आज़ाद जम्मू कश्मीर पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप यहाँ आए और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद शहरियों पर हिंदुस्तान की फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजियों का जायजा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए रोज हिंदुस्तान की फोर्सेस की फायरिंग से निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी होते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के वफ़द का आज़ाद जम्मू कश्मीर में ठोठा महाजर कैंप का दौरा। वफ़द ने कैंप में कायम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का भी मुआयना किया। इस मौके पर वफ़द ने कैंप में मुकीम महाजरीन से मुलाकात की। वफ़द को कैंप के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। महाजरीन के नुमाइंदे वफ़द ने इस्लामी ताउन तंजीम के वफ़द से मुलाकात भी की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर TV USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on TV Voice of Kashmir. We have been discussing a series on Kashmir as a Switzerland of South Asia. This is our third episode and we are joined by our very esteemed guest who is going to talk about tourism and other industries that are vital for the economy of Kashmir, because historically we have seen that Kashmir is rich
by virtue of its history and political controversies, offers exquisite, special native cuisines and festive tea, rugged trekking routes that you can enjoy, and obviously the famous houseboats of Srinagar. And we cannot ignore, when we talk about tourism, the spiritual moments when we reflect on our religious tourism that several people of followers of different faiths can enjoy, and obviously the native craftsmanship and the carpet textile and so many other things that we can talk about that can not only boost and help the economy, but these are the resources that are not tapped by the virtue of unrest that is being faced in the region. So I'm joined by a very esteemed guest who has an in-depth knowledge on the subject, as well as he is current president of the Kashmir Global Council. Farooq Siddiqui sir, welcome to the show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Thank you very much for having me again. And I am delighted that you are doing this series. And I hope by this series we will be able to make the people of Kashmir aware of why we are looking for independence and sovereignty, so that we can have our own resources for the benefit of the people of Kashmir, and which is in accordance with the political and civil rights, the Covenant of Political and Civil Rights of United Nations, Article 1, that says that the indigenous people have the right to the resources that their land has, and it should be used for the benefit of their own welfare. So, which is important. That has not happened with Kashmir under occupation. Rightly said. Absolutely, because a lot of people have this argument. Basically, they object to the narrative that if the Kashmir becomes an independent, how would it survive on its own? And that's part of the reason we are discussing this series of discussion. In the last two episodes, you have given us a general synopsis of the resources that are available, and you went into depth of financial resources that are being used in terms of banking and financing. And today, you're going to tap into tourism and other resources that are available. So please go ahead. Yeah, thank you. We'll continue from what we left the last time. Was the money is available there. The investment is available. The only thing is that investment of the people of Kashmir, the money rather, of people of Kashmir, as I said last time, that about 98% of the finances that Kashmir has is being invested outside. Had that money been invested back in Kashmir, then things would have been different. And again, I will recall that conversation that I had with you, telling you very frankly that Maharaja of Kashmir was one of the richest persons in the world. I mean, he had, out of all the other than Maharaja, the Nawab of Deccan, Maharaja Hari Singh. Hari Singh was one of the most rich people in his times, and that money that they were a Jagirdar. The Dogra region was a Jagirdar in the beginning, and then they evolved into Maharaja, and so that money came from Kashmir, and it came through horticulture, it came from sericulture, and it came from. It did not come from tourism. There was no tourism in Kashmir.
the only tourism in Kashmir in recorded history was when the Britishers used to come during vacations and spend some time in the Dal Lake in those houseboats. That was all. And Kashmir basically, and the chest of Maharaja was not because of tourism, but because of the resources that Kashmir had. Now, coming back to tourism, there is an immense potential of tourism in Kashmir. But for a tourism to not have an impact on the environment, you need to create a basic infrastructure. That is the sanitary system. The tourism in Kashmir has been encouraged by the people of India or the Indian government and the state government without any thought given to the impact that it will have on the environment, very, very, very sensitive environment of Kashmir. So I, for that matter, would not go for tourism as the main earning economy. But instead, I would say that the 70% of the economy of Kashmir has been agriculture. Unless you do not provide the infrastructure, basic infrastructure for the tourism, and that too also for the high-end tourism, Kashmir would get a negative impact due to environment abuses, and which has happened. You can see that. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger.
because nothing can stop what we can do together. You are opposed to the tourism. I'm just wondering. You see, the tourism in Kashmir is basically the tourist coming from India. There are 3 or 4 months of tourism season in Kashmir, and that tourism is coming from. It's not an high-end tourism. It's a tourism from Delhi, Bombay, Calcutta, and all those places. And when they come in flocks to Kashmir, Kashmir does not have, number one, the transportation system. The impact of that is extremely hazardous. Then the second is that Kashmir does not have the infrastructure for sanitary system, like you have places where the tourism has to be. What happens is that this influx of 300 or 400,000 people in just 2-3 months, it has an impact. And you see, basically, the human refuse always goes in the ground, and when it percolates into the ground, it goes into the water bodies and wetlands. And when it goes into the wetlands and when it goes into the water table, it spoils. So cost-benefit ratio of tourism versus the negative impact it has, that is where I say that tourism is not. Yes, tourism is important. When it is a high-end tourism, like people who would like to go for skiing, that's okay. But if you want to come there to Kashmir 7 days or 8 days with your family, we're not against them coming. But when the infrastructure is not ready, then probably it would be not a good idea that the tourism should be kept as one of the economy generating sector. I will come back. Why we have to divert to other resources that we have. Let me explain to you about in this segment. I will explain about the Padar Valley, Kishtawad, an area in Kashmir, which became famous when there was a landslide in 1882 somewhere in that time. And there was, in that landslide, what happened is that the blue diamond, which is called, it came from the surface. I talked to you earlier also. There was Richard Hughes in his book, Ruby and Sapphires, writes, while India's use of impure corundum as an abrasive appears to stretch back at least millennia or more than country's history of gem corundum, production is relatively brief. But India did not enter the major leagues of gem corundum production until 1880 with the discovery of sapphire in Kashmir. It is these mines that we now turn to. This is Albert Ramsay saying in the book of Ruby and Sapphires. What he says, that in his eyes, he was dazzled by such jewels as never have been seen in the Western world. He says in his book that when I was last in Srinagar, palace of Maharaja,
in Jammu and Kashmir, 30 trays were brought before me. Wow. And if I were to say that any one tray sent to market would fetch me $1 million. This is what Albert Ramsay says when he saw he was shown 30 trays of this sapphire. And he further says that he would be giving only a faint impression of the astonishing wealth and beauty of these treasures of this Indian gentleman, which he calls Maharaja as an Indian. So that is what Kashmir had. This was in 1882, so there was no tourism there. So what happened from 1879 to 1882, blue sapphires were first discovered in part of the region, and then there was Maharaja started control of these mines, and it is recorded that Delhi jewelers bought up lakhs of worth of stones that time. This is also recorded by the Mallet in 1882. The glory of the days of Kashmir sapphire mine during that period, crystal as large as 5 inches. 5 inches is something like this, and 3 inches wide. This is recorded by Latouche, who was one of the French painters who visited Kashmir, right? And he was astonished to see that these sapphires of immense wealth was taken by Maharaja. So that made him one of the richest men in the world that time. And all of this came because of that landslide that took place. Otherwise, it would not have been discovered. Yes, it came to light through that landslide. And since then, I will continue. Since then, in 1991, Lala Jyoti Prasad visits the mines as an officer, and he mines southwest opening of the new mines. So they opened. It was Lala Jyoti Prasad from India who opened the mines. In 1920, Sonu Shah of Jammu leases the mines. I'm just telling you will not find a single Kashmiri Muslim who was given the opportunity to mine these. And it is recorded by the the Kashmir Chamber of Commerce. The Kashmir Chamber of Commerce have many times talked about it, that they are not given the Kashmiris are not given any opportunity even to go there. The mine. So this was Pandit Labu Ram. He was a junior assistant in mineral survey. He took the maps there and gave it to the Indian people. There was one person, Lala Jagannath, was given the license to 5,500, those days it was tolas, that amounts to about, I have calculated, amounts to about 65 kilograms of sapphire. You should see, you should watch Hollywood movies where one sapphire is, I think there was a movie, I forgot the name of the movie, in which it was talked about the Kashmiri sapphire worth millions of dollars. So in 1927, there was Lala Jyoti Prasad. Then Pandit Labu Ram of Kashmir, they extracted 39,000 tolas. That's about 454 kilograms of this precious diamond.
In 1944, geologist Gaines, I guess his name was Gaines, and Rice, they were who had left U.S. Army. They went and found these mines guarded by the Maharaja, and after the Maharaja was over, it was taken by Jammu Kashmir Minerals. And Jammu Kashmir Minerals have not so far in the last 70 years given one time a contract for the mining to a Kashmiri Muslim. Yeah. So it was given every time to the people from outside the state. And so the wealth was basically, whenever it was given in Jammu, Dogras. So not to the Kashmiri non-state. It was always given to the non-state. But I am saying that Kashmiri people, you should go to Padar. If you go to Padar, Padar is in Kishtwar. Kishtwar is an area which is predominantly a Muslim area. Mm-hmm. I mean, what I would say that indigenous people are the first people who should have the right to their resources. But it was never, because they don't have the money. As I said earlier, our money is invested outside. Mm-hmm. Now, in the times of that puppet government of Umar Abdullah, they wanted to extricate this part of mines deeper, so that they could generate money and sell it in the international market. And you know what they do? They said that we'll go for global tendering for this. So not in the last 1.5 century, since these blue diamonds were found in Kishtwar, a single Kashmiri has benefit of in terms of GDP growth from these minerals. Instead, what they are doing is they have, over the last 60 years, talked about tourism as an economy generating, which has reflected adversely on the people of Kashmir. It has changed mm-hmm. The environment adversely. It has impacted the people's livings adversely. It has health hazards associated with it. You have imagine there's no restriction of the pilgrimage. There's no infrastructure of the pilgrimage that Amarnath Yatra takes. So those people come, there 100,000 people come, sometimes 200,000 people come with one lota in their hand. That's all they have. They don't have even the clothes on theirs. So that is a tourism, and it has impacted those glaciers up there. It has impacted. You should see, if you Google or you find the pictures of what has happened in the upper reaches of our mountains and the glaciers. It's devastating. Let me explain. In 2001, there was a 50 billion rupees United Nations fund, which was given for the establishing the watersheds. 70% of the watersheds were in Kashmir. And I asked one of the very senior officers of the forest conservation, and what he told me that out of that 50 billion, 90% has gone into the coffers of the corrupt people of both India and as well as state. So basically, the people of states have never been given the full fruits of the resources that are out there. Never. You see, India. Do we still have those blue sapphires available? Oh, yes, yes. People are still mining them.
and who They are has the still contract mining. right now? They are going for global mining. They are still mining. I mean, I don't know. I am here, but I have whatever little peeps out, percolates out from newses. They are going global. They are going global for extracting the geothermal energy in Poga Valley. They had given they had asked an Australian company for taking the energy from there and taking it down again in the northern grid, which would not help Kashmir. So very, very important here is to understand that Kashmiris, if given the right to earn from what they have within their land and beneath their land, they will be one of the richest people. I have calculated also that, I mean, just one sector of the power sector of Kashmiris can generate a GDP growth, increase rather the GDP of a common Kashmiri by $3,000. One sector. You know, there are so many sectors of agriculture, which we will talk in other way when we have time. We'll talk how we lost the silk industry for 100 years, which was taken out. So, for example, it was I mean, absolutely intriguing and interesting to know all these dimensions of resources that are available in Kashmir. And I was astonished to learn that the part of the reason that you oppose, rightly so, the tourism, which is not high-end tourism, because of it's not only damaging the the environmental impact on the valley, as well as because the resources and the infrastructure is not available for people to reap the complete fruits of it. But it was also, I mean, to me, I was amazed to learn that we still have those blue diamonds and the sapphires back in the 18th and 19th century, when people would have been a millionaire without even having to tap into other resources. So we do need to continue this discussion, but I'm running out of time. I will ask you to give me last closing comments, please, for the last minute or so. Let me complete it with the Maharaja of Kashmir was rich man, and he had an army of his own. Correct. And his army went right up to his Zorawar Singh, right up to Tibet and Tibet Ha. So correct. For a person or for a Maharaja to finance an army continuously for his reign, as long as they lived, the Dogra region, it is not easy to sustain that army. It's not easy to sustain that wealth. And that wealth was not falling from skies. It was not coming from Britishers. It was not coming from across the mountains from the plains of India. Correct. It was generated, that wealth was generated within the Kashmir that he reigned for more than 100 years. Well, we'll have to leave it right there, and we hope and pray one day the Kashmiris, the rightful owner of these resources, indigenous Kashmiri, will end up reaping the fruits of these resources. Thank you so much for being on the show, and we will continue over this series from the next episode. Thank you. Thank you.
معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. آج کے اس مشاعرے میں جہاں ہم موجود ہیں ورجینیا میں اور خاص طور پر آج یہ کشمیر کے حوالے سے ہے، تو آج کے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اس شعر سے کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. حسین و خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ شاہکاروں میں سے ایک شاہکار، دنیا میں جنت کا احساس دلانے والی وادی، جی ہاں جنت نظیر وادی کشمیر، قدرت کی بیش بہا خوبصورتیوں کا مرکز کہلانے والی حسین وادی جو عرصہ دراز سے جلادوں کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، جہاں ہر دن خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے اور بے گناہ کشمیریوں کی بہادری کی داستانیں رقم ہوتی ہیں. بھارتی جلاد بے گناہوں کا خون سرعام بہاتے ہیں اور جہاں عورتوں کی عزت و آبرو پامال کی جا رہی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی جنگ آج تک کشمیر پر مسلط کی گئی ہے اور اقوام عالم اور اقوام متحدہ چپ سادے بیٹھی ہے. آج ہم اپنی آواز اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اٹھا رہے ہیں کہ کشمیر کی آواز سنو. جی ہاں کشمیر کی آواز سنو آج کے اس مشاعرے کا عنوان ہے. واشنگٹن مشاعرے میں رائلہ فردوس کی جانب سے آداب. وائس آف کشمیر ٹی وی کے تعاون سے منعقدہ اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں راجہ مظفر صاحب. راجہ مظفر صاحب کشمیری رہنما ہیں، کشمیر گلوبل کونسل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہیں. تو آج کے اس مشاعرے کا آغاز کر رہے ہیں ہم، اور اس میں سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم یہاں پر ہمارے ایک نو آموز نئے شاعر حبیب اللہ صاحب سے گزارش کریں کہ وہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے اپنا کلام پیش کریں. حبیب اللہ صاحب جی تشریف لائیے. ارشاد. آپ نے تو مشکل میں ڈال دیا، شروعات مجھ سے کروا دی. آئیے بڑے حبیب اللہ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اپنا کلام ہمارے سامنے پیش کریں، میں چاہوں گی کہ آج کے اس مشاعرے کے حوالے سے گفتگو فرمائیں اور اپنے جذبات کا اظہار کیجیے کہ اس وقت ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں کس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. اس بات میں تو دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر جس صورتحال سے گزر رہا ہے وہ ایک دگرگوں ہے اور تکلیف کا امر ہے، جہاں کشمیری اپنے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. وہاں پہ دو ممالک کے درمیان یرغمال بنا ہوا ہے اور ان کی شناخت کسی بھی طرح سے سامنے ابھر کے نہیں آ رہی ہے. تو اسی پہ ایک شارٹ سے نوٹس میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ میں کچھ ان جذبات کی ترجمانی کر سکوں. امید ہے مجھے کہ آپ لوگ پسند کریں گے. عرض کیا ہے، جبر کے سانچے میں کشمیر سے ڈر لگتا ہے، جبر کے سانچے میں کشمیر سے ڈر لگتا ہے، ایسی آزاد ہواؤں کی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، تو جنت کی جو تصویر ہم لیے چلے آ رہے ہیں کہ جنت کیسی ہونی چاہیے، اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے شعر میں لکھوں کہ کشمیر ہے جنت اور باسی ہے مقید، کشمیر ہے جنت اور باسی ہے مقید، اس فہمی جنت کی تصویر سے ڈر لگتا ہے اور ایسی آزاد ہواؤں کی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. اور جب جبر کے دھاروں سے مقبوض ہو دھرتی، جب جبر کے دھاروں سے مقبوض ہو دھرتی، املاک کی ایسی جاگیر سے ڈر لگتا ہے، ایسی آزاد ہواؤں کی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. اور میرے افکار پہ پہرے میرے خواب فراموش، میرے افکار پہ پہرے میرے خواب فراموش، کشمیر کی ایسی تعبیر سے ڈر لگتا ہے، ایسی آزاد ہواؤں کی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. اور عرض کیا کہ بھڑک اٹھی تو تم بھی جلائے تو جاؤ گے،
भड़क उठी तो तुम भी जलाओ। भड़क उठी तो तुम भी जलाए तो जाओगे, आजादी आतिश की तासीर से डर लगता है, ऐसी आजाद हवाओं की तकदीर से डर लगता है। और आखिरी शेर है कि मकान तुम्हारे भी गिरेंगे, सुबह नूर तो होने दो। मकान तुम्हारे भी गिरेंगे, सुबह नूर तो होने दो, मस्ती जुल्मत की तामीर से डर लगता है, ऐसी आजाद हवाओं की तकदीर से डर लगता है, और जबर के सांचे में कश्मीर से डर लगता है, ऐसी आजाद हवाओं की तकदीर से डर लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूब। हबीबुल्लाह साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, ऐसी आज़ाद हवाओं की तकदीर से डर लगता है, क्या कहने जी, बहुत खूब। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कश्मीर के हवाले से मुनक़िदा इस मुशायरे में। मैं हूँ आपकी मेज़बान लाइना फिरदौस। Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majid Qazi and you're watching Dallas Roundup on VOKTV. I'm going to talk about current scenario that is taking shape in the world, especially after the fall of Kabul and Taliban taking over Afghanistan. World pretty much gave up in Afghanistan after trying to fight and win over the hearts and minds of the people of Afghanistan. The entire world has to give up, and now the region is changing into a different dimension. Almost 2 months have gone by. None of the powers in the world, no single country is there to recognize them. Situation is dire. And what we look at the situation in the region is that what would be the impact of outcome of Afghan war in the region, particularly in the region of Kashmir. I think it's high time for Kashmiris to start thinking about their future from the perspective that no one will give them Kashmir in a golden plate. So they will have to fight for their own struggle. They have to come up with the strategy and idea that has to go outside of the box, because the status quo is not going to work. The promises of the international world, the UNO, European Union, and the entire world, that they have promised that they will hold plebiscite referendum in Kashmir, that is not going to work. It has gone worse. If you look at the situation that took place in 2019, when India abrogated its Article 370 and 35A, taken away the autonomous status of state of Kashmir, situation have gone worse. Human rights violations are at the peak. You can see the very recent episode, how the families and the students in the medical college were being picked up just for the very basic reason that they were supporting a team that was not acceptable to the Hindutva ideology or the BJP regime. Young kids have been picked up, students from the universities.
So they are trying to control even the thought process, liking and disliking of the people. And you know, and I know that's not going to happen. You cannot win over the hearts and the minds of the people by force. Just by bringing more military might on the ground will not make you win the hearts and the mind of the people of Kashmir. So what Kashmiris have to do is to start thinking out of the box approach. And I have some ideas that I would like to share and see if somebody who can make the difference can pay heed to these ideas. If they don't find these ideas or strategies to be applicable, they can certainly at least start thinking about it and then come up with something that is going to be workable, not only in the region, but the parties involved, as well as the people who are watching us around the globe. We know that 73 years of promises have gone in vain. No one is ready to fulfill their promises, whether it is plebiscite, whether it is withdrawal of the forces, whether it's India or Pakistan. None of them is budging. None of them is paying heed to it. Kashmir issue goes up and goes down. Sometimes there is an attention in the world, and then the Kashmir issue all of a sudden becomes the limelight. But on the other hand, by design or by virtue of just the circumstances around the world that dictate, Kashmir issue is always pushed back into the back burners, and then it is being utilized for the purposes of somebody who is going to reap the benefits of, just for the sake of having this Kashmir issue on the world stage. And those parties who are trying to take advantage of the Kashmir issue, try to make money, whether it's countries, individuals, organizations, whoever it may be. But the ground reality remains that the people on the ground are suffering. So there is a need for an approach that is applicable, doable, so that the ease of living independently, prosperously, and without having to have masters hanging over our heads, to have a Kashmir that representative of the people of Kashmir, for the people of Kashmir, run by the people of Kashmir. What we have learned in recent years, that in last 38 years, the Sikh movement that has taken its momentum, and now last week we noticed, the world saw that they hosted a referendum in UK. They were anticipating about 50,000 people to show up and voice their opinion. 30,000 showed up and they voted in the favor of having a separate country that can be representative of Sikh, and that can be a country that is run by Sikh, a country that is owned by Sikhs, so they can have the life of their choosing without having to suffer the occupation or being dictated by the regime that rules them. So the next stage is that they are going to go to Canada, USA, Australia, and the last stage would be that they will come back and have their election in India by the Sikh movement. And this is a momentum that is gaining attention of the world. In last 38 years, I think that's a huge accomplishment that they have achieved. Why is it that Kashmiris have been relying on others to help them get the Kashmir from the mouth of India, as if that India is ready to give up on Kashmir, or Pakistan is ready to give up on Kashmir, or China is ready to give up on Kashmir? That's not going to happen. So what Kashmiri needs to do is, Kashmiri diaspora particularly, they probably need to find a way forward by probably going the same route, have a referendum done, gather all the Kashmiris together and around the world, make UK as the base camp, because UK is the biggest proponent of claiming that they will give the right of press, right of voice, right of opinion. So I think that was probably one of the reasons that they did not stop Sikh movement to host their referendum there. So start from there and then go on to Canada, USA, Australia, and then lastly go back to Kashmir and have people to voice their opinions. And that has to be done, observed
in a very collaborative and concise way that it is acceptable to the world power, the decision makers, so that we have a proof that this is what the people around the world who are of Kashmiri descent are voicing their opinion, and this is what the opinion comes from the ground, from the Kashmiris themselves. That would be the first approach. Or the second approach could be find 2 or 3 most credible think tanks in the world, have them engaged in the study, have them run opinion surveys, and those surveys need to be comprehensive, broad-based, credible, acceptable to the world, unbiased, and the true and the genuine opinions from the people of stake, people of Kashmir, and bring them to the world and present it to them and ask them that this is what the people of Kashmir are voicing their opinion, and this is what they want, and this is the route that we all need to take. And lastly, but not the least, I would strongly recommend people who are living, the Kashmiri diaspora, living in any country of the Western world, whether it be UK, USA, Canada, Australia. Get yourself engaged with the public officials. Get engaged with senators, congressmen, foreign officials, foreign policymakers, and find and facilitate them, have them pay visit to the area of occupation. Take them, have them go and see the atrocities being committed on ground, and then come back and present those facts and figures to the world. I think those are the things that comes to my mind, that we need to take that approach. But the most important thing in this whole scenario would be the Kashmiris need to give up on their own personal ego. If you have your personal organization that is that has a slogan of going one direction, and the other organization have a slogan of going other direction, y'all need to come and sit together and come with the common ground and find that common denominator that you can take to the world and talk to them. If you come up with a million different ideas, people in the world would be confused, because you yourself are not ready to fix your house. How can you expect the world to fix your house? I hope this will shed some light on the issue, and I'll come with the more videos. And I am still working on putting the numbers together, that the people who are using the Kashmir for the sake of their personal repute, making money out of it, directly or indirectly, as soon as I come up with the comprehensive data, I will come back with another video with you guys. And I hope the people of Kashmir are on the front stage. Their aspiration and will is considered to be the sacred one, and the personal interest of the people is the secondary thing. And we hope and pray that there is a genuine leadership that can come out and represent the people of Kashmir, not the people who are paying them or the people who are who they are serving their interest to. Take good care of yourself. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi, and you're watching Washington Roundtable from the studio of Washington, D.C. I'm going to have a very special guest with us today to talk about the infiltration of drugs in different societies. हमारा जो subcontinent में
We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Society हो सकती है, लेकिन unfortunately they have been detracked, they have been derailed for the reasons that are to some extent known and for the other reason unknown. So I'm going to bring him on the show. Please help me welcome our very dear friend, SSP Investigation Afterbad Mohammed Ishtiyaq Khan Sahab. Ishtiyaq Khan Sahab, welcome to the show. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam. Thank you very much, Jikai sir. बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आपने, आई नो कि आप बहुत बिजी हैं और इसके बावजूद आपने टाइम निकाला। मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में देखा कि माशाल्लाह आपने ऑन योर ओन एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और जिसका हमारी फ्यूचर जनरेशन को नॉट ओनली टू ब्रिंग देम अवेयरनेस, लेकिन एट द सेम टाइम किस तरीके से कलेक्टिवली इस बीमारी को, इस तकलीफ को दूर किया जाए। तो उस डिस्कशन पे आने से पहले मैं देख रहा था कि जो हमारे पास पाकिस्तान में जो एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, उनकी जो स्टेटिस्टिक्स है वो मैं चाह रहा था कि लोगों को बता दूं कि कितना सीरियस प्रॉब्लम है कि एवरेज इट्स अ बिलियन वर्ल्ड वाइड, अबाउट $435 बिलियन का ये बिजनेस बन चुका है। पाकिस्तान इवन दो के नारकोटिक्स में अगर देखा जाए तो ओपियम फ्री कंट्री है, मतलब दुनिया रिकग्नाइज करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर स्मगल होकर आती है अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान अगर आप देखें आज से 20 साल पहले जब when the war against terror started, their production was like 3,300 tons per year. अब वो बढ़ के 7,000 tons per year हो गई है और जाहिर है उसका इमीडिएट इफेक्ट पाकिस्तान पे होगा क्योंकि all these drugs and narcotics is funneled through पाकिस्तान। तो आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी मुबारकबाद कि आपने इस इनिशिएटिव को लिया और पब्लिक को साथ लेके चल रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आपको पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहा और इसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है आजकल?
बहुत शुक्रिया जी, आपने जिस तरह फिगर आउट किए हैं तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी इंक्लाइंड है ये जो हमारी जनरेशन आ रही हैं या इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो टुवर्ड्स दी नारकोटिक्स। तो इस हवाले से चूँकि हम भी इस मामले को एक बड़ा सीरियस ले रहे हैं और हमारी अपनी ये कोशिश है कि सोसाइटी को हम साथ लेके आगे चलें, क्योंकि जब तक सोसाइटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मिल के इस काम को नहीं करेंगी तो वो रिजल्ट अचीव नहीं हो सकते। चूँकि इन पाकिस्तान बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है और बहुत सारे और जो पॉवर्टी लेवल है उसको भी आप देख सकते हैं। फिर हम एक उस फैज से गुजरे हैं जो एक टेररिज्म की पूरी वेव का हमने सामना किया है, तो उस हवाले से भी बहुत सारी फैमिली अफेक्टेड हैं, बहुत सारी आपको कि पूरा एक ट्राइब सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो उस हवाले से ये ज़रूरी था कि हम जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पे हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, उसके साथ साथ अवेयरनेस भी दें, ताकि लोगों को ये भी ये पता हो कि उनकी जो यूथ है, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, उनको भी इसकी जो नुकसानात है उससे आगाह किया जाए, ताकि वो लोग जो इसके सेलर्स हैं या इस नारकोटिक्स बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं, उनको मौका कम से कम मिल सके और वो हमारी इस यूथ को कम से कम इस हवाले से डिस्टर्ब ना कर सके। तो यहाँ पे ये हमने इनिशिएटिव्स लिया केपी गवर्नमेंट ने, केपी प्रोविंस के अंदर और स्पेशली हज़ारा के अंदर। इसमें हम स्कूल्स में गए, हमने बच्चों को इस हवाले से अवेयर करने की कोशिश की, हमने पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स की और फिर हमने सिविल सोसाइटी को साथ लिया और इसके लिए हमने वॉक्स वगैरह अरेंज की, डिफरेंट फोरम्स में जाके इस पर डिबेट्स करवाए, ताकि एटलीस्ट इस चीज़ की जो सेंसिटाइजेशन है वो पब्लिक हर तौर तरीके से इसको समझ ले कि आफ्टर ऑल ये जो लॉस हो रहा है ये हमारी नस्ल का हो रहा है, हमारी फैमिलीज का हो रहा है, हमारी सोसाइटी का हो रहा है। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, लेकिन आपको ये भी अंदाज़ा है कि जब तक डिमांड है, सप्लाई को कट करना वाकई इट्स रियली चैलेंजिंग। और अभी रिसेंट हमारे नए आईजी साहब आए हैं, उन्होंने तो पूरे प्रोविंस के अंदर एक नेट के नाम से एक टीम्स बनाई हैं, जो नारकोटिक्स एडिकेशन टीम्स काम कर रही हैं। उसमें हर प्रोविंस, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेल रेप्यूटेड पुलिस पर्सनल्स जिनका बैकग्राउंड बड़ा एक नीट क्लीन है और जो डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, उनकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 सर्कल बना दिए गए और डीएसपी रैंक का जो ऑफिसर है वो सर्कल को लुक आफ्टर करता है और ओवरऑल उसको डीपीओ मॉनिटर कर रहा होता है। तो वो उन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं कि नारकोटिक्स के जितना बिजनेस है, जो माफियाज हैं, जो खासकर जो अभी नया एक ट्रेंड आइस का आया है, वो दैट्स वेरी अलार्मिंग, और उसमें उन्होंने अपना टारगेट जो है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेटेड जो हमारी यूथ है उसको किया हुआ है। तो उन तमाम चीज़ों को हम काउंटर करने के लिए वो नेट की टीम काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े अच्छे हौसला अफजार रिजल्ट सामने आए हैं और उन्होंने बड़े नेटवर्क्स जो हैं उनको ब्रेक किया है और हम इंशाल्लाह इन नारकोटिक्स वालों के पीछे लगे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम ड्रग फ्री सोसाइटी हज़ारा के अंदर और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कायम करने में कामयाब हो जाएं। बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। अब मैं देख रहा था कि आपके पास डबल चैलेंज है। एक तो ये है कि जो आपके बॉर्डर पे जो केपीके के साथ इमीडिएट बॉर्डर है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर है और वहाँ पे इस वक्त ऑलमोस्ट 7,000 टन ओपियम जो है वो प्रोड्यूस हो रही है एवरी ईयर और उसका 40% जो है इट गोज थ्रू पाकिस्तान। अब वहाँ पे ये जो लोग ड्रग कार्टेल्स हैं वहाँ पे जो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, उनको एक तो उनको काउंटर करना और सेकेंडली उनको रोकना कि वो स्कूलों तक, कॉलेजेस तक, यूथ तक उसकी सप्लाई जो डिलीवर ना कर सकें। तो इस सिलसिले में ऑब्वियसली आप हर बंदे के साथ, हर इंडिविजुअल के साथ तो एक पुलिस कॉप नहीं खड़ा हो सकता, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलेक्टिवली सोसाइटी आपका साथ दे। तो जब आपने ये सारी इनिशिएटिव्स लिए जिसमें आपने वॉक की अरेंजमेंट की,
कॉल अवेयरनेस शुरू की या फिर प्रोग्राम्स किए, तो पब्लिक का रिस्पांस कैसा था, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, पब्लिक सोसाइटीज की तरफ से, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे? हाँ जरूर, इसमें पब्लिक का रिस्पांस कंपैरेटिवली बेहतर था, लेकिन अभी भी इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, क्योंकि ये मामलात ऐसे हैं कि एक घर से स्टार्ट होते हैं। जब एक वालिद अपने बच्चे की एक्टिविटी पे नज़र रखेगा तो कंपैरेटिवली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी इजी हो जाएगा कि जब उसकी मॉनिटरिंग डबल उस पे हो रही है, चेक पे हो रही है कि उसके वालिदैन भी उसको देख रहे हैं, उसकी कोई एक्टिविटीज़, उसकी कंपनी, उसकी अदर जितनी भी सोसाइटी है उसको अगर वो लुक आफ्टर करेंगे तो ऑब्वियसली उसका कनेक्शन इन लोगों के साथ, माफियाज के साथ, नारकोटिक्स एडिक्टेड लोगों के साथ कम से कम होगा। तो उस हवाले से हमने ये कोशिश की है कि उनको साथ लेके चलें और उनको ये अवेयर करवाएं, बावर करवाएं कि ये आपका मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जब आप अपने तौर पे इनको गाइड नहीं करेंगे, इन पे चेक नहीं रखेंगे, तो लाजमी तौर पे ये बेरार रवैये का शिकार हो सकते हैं, किसी भी उस माफिया के हाथ चढ़ सकते हैं। तो इसमें रिस्पांस बेहतर है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि मजीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश है और हम लोगों को इस चीज़ पे सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें। और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में तो हमने यहाँ तक किया है कि जो उनके टीचर्स हैं उनको भी हमने कहा है कि आपकी जो वहाँ पे उनकी यूनियंस बनी हुई हैं उनके अंदर भी इस चीज़ को मॉनिटर किया जाए और देखा जाए अगर पढ़ाई में कोई बच्चा कमज़ोर है या उसकी दिलचस्पी नहीं आ रही है तो उस कॉज रूट्स पे जाएं कि आया ये किसी नारकोटिक्स एडिक्शन की तरफ तो नहीं जा रहा, तो वहाँ से भी इसकी मॉनिटरिंग हो, घर में भी मॉनिटरिंग हो। और दूसरा हमने एक्सेस दे दिए लोगों को, अपने मोबाइल नंबर जो हैं वो DPOs के और कंप्लेंट सेल्स के, इवन DIG साहब के, और यहाँ पे हमने हॉटलाइंस भी कायम कर दी हैं 4 डिजिट्स में, ताकि अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन हो, बॉक्सेस बाद जगहों पे हमने लगाए थे कि अगर वो कोई अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता लेकिन कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो ही हैज़ गुड एक्सेस टू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सिख वफ्द की नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने पर जोर दिया गया है। सिखों के एक वफ्द ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इन पर पाकिस्तान में करतारपुर साहब गुरुद्वारा की यात्रा को यकीनी बनाने के लिए करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने पर जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब, दिल्ली और मकबूजा जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं के 11 रुकनी वफ्द ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सिखों की करतारपुर यात्रा को मार्च 2020 में कोरोना वबा की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। सिख रहनुमाओं ने 19 नवंबर को गुरु नानक देव के यौम पैदाइश से पहले करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का मुतालबा किया है। भारतीय रियासत त्रिपुरा की पुलिस ने 2 सहाफियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। भारतीय रियासत त्रिपुरा पुलिस ने रियासत में हालिया फिरका वाराना तशद्दुद की रिपोर्टिंग करने वाली 2 सहाफियों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर दी है। ज़राए के मुताबिक FIR कंचन दास की तरफ से दर्ज की गई, जिन्होंने दावा किया है कि समृद्धि के सकूनिया और जहां सवरना नामी 2 ख्वातीन सहाफियों ने पाल बाजार के इलाके में मुसलमानों से मुलाकात के दौरान हिंदू बरादरी और त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की। याद रहे कि त्रिपुरा की पानी सागर सब डिवीजन में 26 अक्टूबर को हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद के मुजाहरे के दौरान मस्जिद और मुसलमानों के घरों, दुकानों और दिगर अमलाक पर हमले किए और इनकी तोड़ फोड़ की, जिसके बाद से त्रिपुरा में कशीदगी पाई जाती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का इस्लामी तशख्खुस, रवायात और सकाफत भारत के निशाने पर है। पासबान हुर्रियत के चेयरमैन का बयान। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है और इलाके का इस्लामी तशख्खुस, रवायात और सकाफत भारत के निशाने पर है। ज़राए के मुताबिक पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन उज़ैर अहमद गजाली ने मुजफ्फराबाद में जारी एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर इस वक्त तारीख के स्याह तरीन दौर से गुजर रहा है और भारत अपनी पूरी फौजी ताकत और काले क़वानीन के जरिए आज़ादी, इंसाफ और
حق کے خودارادیت کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے زندانوں میں ہزاروں کشمیری نظر بند ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں عائد کر کے ریاست کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ قابض فورسز ہزاروں کنال اراضی پر جبری طور پر قابض ہو رہی ہے۔ عزیر احمد غزالی نے آزاد جموں کشمیر کی حکومت اور عوام سے اپیل کی ہے کہ کشمیری عوام کے حقوق کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کشمیر کی حساسیت بھارت کے ظالمانہ رویے اور دہشت گرد منصوبوں سے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو آگاہ کرنے کے لیے ریاست گیر مزاحمتی تحریک کا آغاز کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں کی خاموشی کی وجہ سے نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نہتے کشمیریوں پر سفاکانہ مظالم ڈھا رہی ہے۔ دنیا بھارت کی ہندوتوا حکومت کو دہشت گرد تنظیم قرار دے، مشال ملک کا بیان۔ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن اور غیر قانونی طور پر نظر بند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ داعش کی طرح بنیاد پرست اور فسطائی ہندوتوا حکومت کے خلاف بھی متحد ہو کر سخت کارروائی کرے، کیونکہ اس نے جنت نظیر وادی کشمیر کی عوام کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مشال حسین ملک نے اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا کہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں داعش کی طرف سے اٹھائے جانے والے مظالم کے خلاف یک آواز ہیں، جو قابل تحسین ہے۔ تاہم انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا حکومت اور فلسطین میں صہیونی حکومت کی طرف سے ریاستی دہشت گردی اور غیر انسانی کارروائیوں پر مکمل خاموشی اختیار کیے جانے پر دنیا کے دوہرے معیار پر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی امن کا خواب اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب عالمی طاقتیں اور اقوام متحدہ کے ادارے دوگلے پن سے پرہیز کریں اور انسانیت اور انسانی حقوق کو اپنے مالی مفادات اور ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر رکھیں۔ پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں 16,85,571 بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے۔ پروونشنل پروگرام منیجر EPI ڈاکٹر عبدالستار خان نے مرکزی ایوان صحافت میں پریس کانفرنس وقفہ برائے اذان۔ اذان brought to you by شاہنواز پیلس، ڈاؤن ٹریول، دھوم ریسٹورنٹ، کریسنٹ اکاؤنٹنگ، وڈ ہیون مینور، شفیق CPA اینڈ حمزہ اسٹوڈیو۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ 15 نومبر سے 27 نومبر تک مہم آزاد کشمیر بھر میں جاری رہے گی۔ ای پی آئی کے 370 مراکز، 1874 آؤٹ ریچ ٹیمیں، 4488 تربیت یافتہ ورکرز ٹیم اسسٹنٹ، 4119 سوشل موبائلرز مہم میں حصہ لیں گے۔ مانیٹرنگ کے لیے 449 فرسٹ لیول سپروائزر، 220 یونین کونسل سپروائزرز، 199 تحصیل لیول سپروائزر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز مردانہ و زنانہ، تمام ڈپٹی کمشنرز، محکمہ صحت کے 60 ضلعی افسران اور 15 پروونشل مینیجر ای پی آئی آفس سپروائزر کو مہم کامیاب بنانے کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف کشمیر ٹی وی USA کے ساتھ میں ہوں نمرہ ملک۔ آئیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی جانب۔ آزادی پسند مجاہدین کی یلغار میں سری نگر میں پولیس اہلکار شدید زخمی، انڈین فورسز نے کئی مکانات کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے نواحی علاقے میں کل اتوار کی رات آزادی پسند مجاہدین نے غلام پولیس پارٹی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی پولیس اہلکار کی شناخت 37 سالہ محمد مقبول کے نام سے ہوئی ہے۔ مجاہدین نے یہ حملہ سری نگر کے نواحی علاقے نواں کدل کے جمالتا گاؤں میں کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی، علاج کی سہولتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں ایک کا تعلق میرپور اور ایک کا بھمبر سے ہے۔ 3 مریض صحت یاب ہوئے اور 174 افراد کے کرونا وائرس کے شبہ میں ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اب تک 3,18,323 افراد کے کرونا وائرس کے شبہ میں ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ 34,512 افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے۔ 33,727 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقاریر کی تیاری اور طلباء کی اس کی جانب رغبت خوش آئند ہے۔ وزیر خزانہ آزاد کشمیر کا خطاب۔ آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ امداد باہمی و انلینڈ ریونیو عبد الماجد خان نے کہا کہ رسول اللہ سے حقیقی محبت اور عشق ہی مومن کا اثاثہ ہے۔ تعلیمی اداروں میں سیرت النبی پر تقاریر کی تیاری اور طلباء کی اس کی جانب رغبت خوش آئند ہے۔ تحریر اور تقریر پر عبور کے ذریعے دنیا کے کئی بڑے مارکے فتح ہوئے، اس لیے زبانوں پر عبور کے ساتھ ساتھ بہترین الفاظ کا چناؤ اور خوبصورت اسلوب نہایت ضروری ہے۔
ریاست آزاد جموں و کشمیر میں شروع ہونے والی 12 روزہ خسرہ روبیلا مہم کا باقاعدہ افتتاح۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے ریاست آزاد جموں و کشمیر بھر میں شروع ہونے والی 12 روزہ خسرہ روبیلا مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ محکمہ صحت عامہ آزاد کشمیر میں ڈاکٹرز اور دیگر اسامیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ عوامی سہولیات کی خاطر محکمہ صحت کے اداروں کو اپ گریڈز نئے ادارے کی قیام میں عمل میں لا رہے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت آزاد کشمیر میں محکمہ صحت عامہ میں بہت بڑا پائلٹ پروجیکٹ لگانے پر اتفاق کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں تاریخی ورثوں آرکیولوجیکل ٹورزم کے منصوبوں کو اگر سی پیک میں شامل کیا جائے تو سیاحت کو فروغ ملے گا۔ سیکرٹری اطلاعات و انفارمیشن ٹیکنالوجی آزاد جموں و کشمیر سیکرٹری اطلاعات و انفارمیشن ٹیکنالوجی آزاد جموں و کشمیر محترمہ مدت شہزاد نے آزاد جموں و کشمیر میں سی پیک کے حوالے سے منعقدہ پارلیمانی ڈائیلاگ میں پریزنٹیشن دیتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں تاریخی ورثوں آرکیولوجیکل ٹورزم کے منصوبوں کو اگر سی پیک میں شامل کیا جائے تو سیاحت کو مزید فروغ ملے گا۔ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کی عوام کے لیے باہمی رابطوں کے فروغ سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ بھارت میں گائے کے لیے ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے وزیر نے بیمار گائے کے لیے ملک کی پہلی ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اتر پردیش کی حکومت شدید بیمار گائے کے لیے ایمبولینس سروس شروع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اتر پردیش کے وزیر لکشمی نارائن چودھری نے بتایا کہ 112 ایمرجنسی سروس نمبر کی طرح نئی سروس سنگین طور پر بیمار گائے کی فوری علاج کی راہ ہموار کرے گی۔ دبئی، شارجہ اور عجمان میں زلزلے کے شدید جھٹکے، عمارتیں لرز اٹھی۔ متحدہ عرب امارات کی ریاستوں دبئی، شارجہ اور عجمان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی ریکٹر سکیل پر شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے ان جھٹکوں سے متعدد عمارتیں لرز اٹھی اور ان عمارتوں سے لوگ باہر نکل آئے۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے سسٹم پر ہیکرز کا خطرناک حملہ، لاکھوں میلز بھیج دی۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے سسٹمز پر ہیکر نے خطرناک حملہ کر کے لاکھوں میلز بھیج دی۔ ایف بی آئی نے کہا کہ واقعے سے متاثر ہارڈ ویئر کو مسئلہ سامنے آنے کے فوری بعد آف لائن کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ای میل سسٹم میں ہیکرز نے داخل ہو کر ممکنہ سائبر حملے کی لاکھوں انتباہی پیغامات ارسال کر دیے۔ بھارت میں نظر آتش کی گئی مسجد کا بتانے پر خاتون صحافی پر مقدمہ۔ بھارت میں 2 خاتون صحافی ریاست تری پورہ میں جلائی گئی مسجد اور مسلمانوں کی املاک کی ویڈیو سامنے لے آئی۔ انتہا پسند ہندوؤں کا پردہ چاک کرنے پر حکومت اور انتہا پسند آگ بگولا ہو گئے۔ پولیس نے دونوں صحافیوں پر مقدمہ درج کر کے انہیں ہوٹل سے نکلنے سے روک دیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخب ممبران اسمبلی عامر یاسین چودھری اور یاسر سلطان چودھری نے ممبر اسمبلی کا حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری انوار الحق نے 9 منتخب ممبران اسمبلی سے حلف لیا۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر وزراء حکومت نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ عامر یاسین چودھری اور یاسر سلطان دونوں ممبران اسمبلی ضمنی الیکشن میں کامیاب ہو کر آئے۔ پیپلز پارٹی کے عامر یاسین چڑوہی نے اپنے والد کی خالی کردہ نشست پر، جبکہ تحریک انصاف کے یاسر سلطان بھی اپنے والد کی خالی کردہ نشست پر کامیاب ہو کر ممبر اسمبلی بنے ہیں۔ وائس آف کشمیر ٹی وی یو ایس اے سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر ٹی وی یو ایس اے۔ اللہ حافظ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कश्मीर के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में तफसीली मुलाकात हुई। इस मौके पर मुलाकात में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मसला कश्मीर और अपने अमरीका, बरतानिया और यूरोप के हालिया दौरों पर ब्रीफिंग दी। त्रिपुरा मुस्लिम मुखालिफ फसादात कौमी अक़लियती कमीशन ने हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी अक़लियती कमीशन ने मसाजिद, मुसलमानों के अमलाक पर हमलों पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। भारत के कौमी अक़लियती कमीशन ने रियासत त्रिपुरा में मसाजिद और मुसलमानों के मकानात और दुकानों पर हमले के मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर इससे जवाब तलब किया है। ज़राए के मुताबिक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में सहाफ़ियों को बताया कि त्रिपुरा में मसाजिद और मुसलमानों के मकानों और दुकानों में तोड़ फोड़ के वाक़े का अज खुद नोटिस लेते हुए रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान शुमाली त्रिपुरा की सब डिवीजन पानी सागर में एक मस्जिद और मुसलमानों की 3 दुकानों और मकानों पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर हमलावरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है। इसके अलावा इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, किस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात दोबारा ना होने के लिए क्या इक़दाम किए गए, इस हवाले से भी रिपोर्ट तलब की गई है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक के कारकुन को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने जिला इस्लामाबाद से इंसानी हकूक के कारकुन तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया है। ज़राए के मुताबिक तालिब हुसैन को पुलिस ने उनके खिलाफ 3 हफ्ते कबल लारनो पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए एक मुकदमे में जिला के इलाके कोकरनाग में उनके घर से हिरासत में लिया। तालिब हुसैन को गुज़श्ता माह जिला में भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से एक कबायली नौजवान परवेज अहमद के कत्ल के बाद मुतासरा खानदान का इंसाफ की फरहमी का मुतालबा करने पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। 7 अक्टूबर को पेश आने वाले वाक़े को तालिब ने जाली मुकाबला करार दिया था। SHO लारनो के मुताबिक तालिब ने मुकामी लोगों को काबिज इंतजामिया और भारतीय फोर्सेस के खिलाफ उकसाया था। तालिब ने अपने भाई को बताया है कि पुलिस ने इसे गुज़श्ता माह परवेज अहमद के कत्ल के बारे में जारी की गई 14 मिनट दौरानिये की वीडियो की वजह से गिरफ्तार किया है। तालिब हुसैन के वकील तारिक ने मीडिया को बताया कि उन्होंने जमानत के लिए दरख्वास्त दे दी है और उम्मीद है कि तालिब को जमानत मिल जाएगी। तालिब हुसैन इस वक्त महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, मकबूजा कश्मीर में मजीद 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस और बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने बारहमूला और गंदरबल के इजलास से 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक NIA के एहलकारों ने 2 नौजवानों राशिद मुजफ्फर गनाई और नासिर मीर को जिला बारहमूला के कस्बा सोपुर से गिरफ्तार किया। भारतीय पुलिस ने जिला गंदरबल के इलाके सहपुरा से अरशद अहमद मीर नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। भारत के इलाके रांची में हिंदू इंतहा पसंदों का कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद। भारतीय रियासत झारखंड के इलाके रांची में हिंदू इंतहा पसंदों ने 3 कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया और इन्हें पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किया। ज़राए के मुताबिक रांची में तजारत की गर्ज से आए कश्मीरी नौजवानों बलाल अहमद, शबीर अहमद और वसीम अहमद को हिंदू इंतहा पसंदों ने गन पॉइंट पर पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किया और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा इन्हें धमकी दी कि वो फौरन शहर से चले जाएं, नहीं तो इन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। बलाल ने सहाफ़ियों को बताया कि वो मौसम सरमा में गर्म कपड़े बेचने के लिए रांची आते हैं, ताहम गुज़श्ता चंद दिनों से इनके साथ मुकामी लोगों का रवैया अचानक बदल गया है और वो मुसलसल इन्हें हरासा कर रहे हैं। उधर कश्मीरी नौजवानों ने खुद पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले और पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किए जाने के बारे में डोरांडा पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी दरख्वास्त दी है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं हूं डॉक्टर सहरिश। आइए लिए चलते हैं आपको आज की खबरों की जानिब। वजीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने कहा है कि पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मंसूबे खित्ते की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए संगे मील साबित होंगे। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुआशी तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रही है। पार्लिमानी कमेटी बराए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद मंगला मीरपुर एक्सप्रेस वे गेम चेंजर मंसूबा है, इसको स्पीड अप किया जाए। इसकी तामीर से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तमाम अजला मुख्तसर रास्ते से आपस में मुंसलिक हो जाएंगे और ये मुल्क के इस हिस्से के राब्ते के लिए मुख्तसर तरीन शाहराह भी होगी। रोटोशोंटर टनल के जरिए मशरकी शाहराह की तामीर से आज़ाद जम्मू और कश्मीर और पंजाब को गिलगित बल्तिस्तान तक रसाई के लिए मुख्तसर तरीन रास्ता भी होगा और जिला नीलम गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तसर रूट के जरिए मुंसलिक हो जाएगा। वजीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए सरगर्म अमल है। हुकूमत ने अपने इब्तदाई चंद माह में तजावुज़ात का खात्मा, शहरी और देही इलाकों की सफाई, सियाहती मकामात की सफाई के लिए खसूसी मुहिम शुरू की, जबकि LOC के अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए भी खसूसी हफ्ता मनाया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहिबान ने खुद LOC के इलाकों में जाकर लोगों के मसाइल सुने। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए मुत्तहिद हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने OIC की नुमाइंदा खसूसी बराए जम्मू और कश्मीर से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्विटर पर बयान में कहना था कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लिए OIC के खसूसी नुमाइंदे यूसुफ अलदोबे से मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में जारी संगीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर दुनिया का वो खित्ता है जहां सबसे ज्यादा काबिज फौज मौजूद है। हम कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए मुत्तहिद हैं। दूसरी जानिब मुल्तान में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला कश्मीर हो या मसला फलस्तीन, दुनिया भर में अवाम की आवाज बनकर पाकिस्तान ने भरपूर तर्जुमानी की और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में भरपूर तरीके से उजागर कर रहा हूं।
भारत के कौमी अक़लियती कमीशन ने रियासत त्रिपुरा में मसाजिद और मुसलमानों के मकामात और दुकानों पर हमले के मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर इससे जवाब तलब किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में सहाफियों को बताया कि इन हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान शुमाली त्रिपुरा के सब डिवीजन पानी सागर में एक मस्जिद और मुसलमानों के 3 मकानों और कुछ दुकानों पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की शिकायत को दूर करने के साथ साथ कमीशन का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि किसी की जात पात और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर हमला आवरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत कौमी सलामती से खिलवाड़ कर रही है और इसके पास मुल्क की सरहदों के दफा के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही है और अवाम को गुमराह किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में एक खबर भी पोस्ट की है जिसके मुताबिक भारतीय वजारत खारजा का दावा है कि कुछ बरसों से सरहद पर चीन की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है, लेकिन भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत कहते हैं कि चीनियों की हिंदुस्तानी सरहद में घुसने की खबरें गलत हैं। एक अमरीकी डाटा इंजीनियर, साइंसदान और प्रोडक्ट मैनेजर फ्रांसिस होगन की इंकशाफात ने भारत में मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज तकारीर को नजरअंदाज करने और इस सिलसिले में अपनी पॉलिसियों को एक मुनज़्ज़म तरीके से नाफज करने पर फेसबुक को मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। फ्रांसिस होगन की तरफ से अफशा की गई दस्तावेजात में भारत में नफरत अंगेज तकारीर और गलत मालूमात पर कंपनी की रिपोर्ट्स का एक जखीरा शामिल है। फ्रांसिस होगन ने इंकशाफ किया कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मुंसलिक फेसबुक अकाउंट्स भारत में नफरत अंगेज तकारीर और मुस्लिम मुखालिफ बयानियों को फरोग देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फेसबुक की दस्तावेजात से पता चलता है कि कंपनी बरसों से इस मज़मूम मुहिम से आगाह है, लेकिन इसने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में इस बात की मजम्मत की गई कि फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर भारत में मुसलमानों, दलितों We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets,
we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं हूं डॉक्टर सहरीश। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी से इस्लामी ताउन तंजीम OIC सेक्रेटरी जनरल के जम्मू और कश्मीर पर खुसूसी नुमाइंदे नायब सेक्रेटरी जनरल सफीर यूसुफ मोहम्मद सालेह अल दोबे की क़ियादत में OIC के आला सतही वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने वफ्द की मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा कि OIC के वफ्द की जानिब से दौरा आज़ाद कश्मीर पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहां आए और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद शहरियों पर हिंदुस्तान की फोर्सेस की इश्ताल अंगेजियों का जायजा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए रोज हिंदुस्तान की फोर्सेस की फायरिंग से निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी होते हैं और इनकी अमलाक को नुकसान पहुंचता है, जबकि इससे कई गुना ज्यादा दरिंदगी मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फोर्सेस रवा रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे असलाफ के दो कौमी नजरिए की बिना पर 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया। तमाम कश्मीरियों का मुश्तरका मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए और कश्मीरियों को राय शुमारी का हक दिया जाए, लेकिन भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करने में सबसे बड़ी रुकावट है। इस वक्त हिंदुस्तान ने 9 लाख फौज मकबूजा वादी में तैनात कर रखी है, जिसने पूरे मकबूजा कश्मीर को मुहासरे में ले रखा है। सदर आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि एहतसाब एक्ट जो मेरी हुकूमत में बना था उसे बेहतर करके आजाद कश्मीर में एहतसाबी अमल शुरू होगा। हम चाहते हैं कि इक्तदार निचली सतह तक मुंतकिल हो, इक्तदार नौजवानों, खवातीन, मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों तक जाए, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह से बेशुमार मुश्किलात आती हैं। अब फैसला हो चुका है कि आजाद कश्मीर में चंद महीनों में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। कारकुन बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें। मुजफ्फराबाद में एक जलसा आम से खिताब करते हुए सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मैंने सदारत का हल्फ उठाने के बाद पहले खिताब में कहा था कि मसला कश्मीर को जारहाना अंदाज में बैनुल अक़वामी फोरम पे उठाऊंगा। नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के मौका पर हमने एक बड़ा मुजाहरा करके भारत की मजम्मत और दुनिया की तवज्जो कश्मीर की जानिब मबजूल करवाई। खालिस्तान की हामी सिखों की तंजीम सिखिस फॉर जस्टिस ने कनाडा की अदालत में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए पाकिस्तान की फंडिंग के इल्जामात के खिलाफ दायर हत्तक इज्जत के एक मुकदमे का पहला मरहला जीत लिया है। कनाडा के एक ब्रॉडकास्टर टेरी मिलोस्की ने गुज़िश्ता साल सितंबर में खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट के नाम से एक मुतनाज़ रिपोर्ट शाया की थी और इल्जाम लगाया था कि सिखिस फॉर जस्टिस और इसकी खालिस्तान की मुहिम की पाकिस्तान की पुश्तपनाही और फंडिंग कर रहा है।
टेरी मिलोस्की ने जज के सामने एतराफ किया कि इनके पास पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान नवाज ग्रुप की पुश्तपनाही और फंडिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया और बैरून मुल्क सिफारती मिशनों ने टेरी मिलोस्की की रिपोर्ट खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट की बड़े पैमाने पर तशहीर की थी और इसे पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बिजली के बदतरीन बुहरान से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली सागर ने वादी कश्मीर में जारी बिजली के बदतरीन बुहरान पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि भारतीय काबज इंतजामिया मकबूजा इलाके में बिजली की फराहमी में बेहतरी में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2016 में भारतीय काबज हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों से बिजली की बिला तातुल फराहमी के वादे किए जा रहे हैं, जबकि दर हकीकत बिजली की फराहमी की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी जानिब श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के शहरियों और तुलबा ने बिजली की बार बार लोड शेडिंग और इंटरनेट सर्विस मुअत्तली पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग और इसके बायस इंटरनेट की मुअत्तली ने इनका जीना दोबर कर दिया है। भारत के जेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में तैनात 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों के जुल्म और बर्बरियत की वजह से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में शहरियों के खिलाफ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट, टाडा और दीगर काले कवानीन के नफाज के जरिए दीवार से लगाने और इनकी गैर कानूनी नजरबंदियों को तूल देने की शदीद मुजम्मत की है। हुर्रियत तर्जुमान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जबरी भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आजादी के लिए कश्मीरी अवाम की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जल्द अज जल्द हल करने के लिए अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे और कश्मीर में भारतीय अफवाज के मुजालिम जबरी गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रुकवाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना चाहिए। भारतीय फोर्सेस की जानिब से गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ज़हनी तौर पर माजूर 47 कश्मीरियों को शहीद करने का इंकशाफ हुआ है। इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद एहसन ओंतो ने कहा है कि भारतीय फोर्सेस ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ज़हनी तौर पर माजूर 47 कश्मीरी शहीद किए हैं। मोहम्मद एहसन ओंतो ने कहा है कि ज़हनी तौर पर माजूर अफराद को जिस तरह गोलियां मारकर कत्ल किया जाता है, इसे महज इत्तफाक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मसला यह है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले कवानीन भारतीय फोर्सेस को महज शक की बुनियाद पर किसी को गोली मारने की इजाजत देते हैं और हुकाम तहकीकात का वादा करते हैं, लेकिन कभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। ये थी अब तक की खबरें। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएस से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पुलिस स्टेशन में मुसलमान नौजवान के कत्ल पर योगी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है। बेटे को दौरान हिरासत कत्ल किया गया, वालिद का इल्जाम। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज के एक पुलिस स्टेशन में मुर्दा हालत में पाए जाने वाले 22 साल मुसलमान नौजवान के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि उनके बेटे को दौरान हिरासत कत्ल किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान अल्ताफ के वालिद चाहत मियां ने मीडिया को बताया है कि वो खुद अपने बेटे को पुलिस चौकी छोड़कर आए थे और पुलिस ने यकीन दहानी कराई थी कि वो पूछगछ के बाद उसे छोड़ देंगे, मगर उसे दौरान हिरासत कत्ल कर दिया गया। उधर अल्ताफ के दौरान हिरासत कत्ल पर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां भी योगी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं। कांग्रेस की यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कासगंज में पुलिस की हिरासत में मुसलमान नौजवान की मौत पर योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि कासगंज में अल्ताफ, आगरा में औरौन वाल्मीकि और सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस की हिरासत में हलाकत के वाकयात से वाज़े होता है कि रहबर रहजन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस दौरान हिरासत लोगों के कत्ल में सरे फहरिस्त है। हिंदुत्व को दाइश और बोको हराम जैसी दहशतगर्द तंजीम करार देने पर सलमान खुर्शीद पर कड़ी तनकीद। भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा और कांग्रेस के रहनुमा सलमान खुर्शीद की तरफ से अपनी हालिया तसनीफ सनराइज अवर अवधिया में हिंदुत्व नजरिए का मुआजना दाइश और बोको हराम जैसी दहशतगर्द तंजीमों से करने से भारत में तनाज़ा खड़ा हो गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बुध को सलमान खुर्शीद की किताब की तकरीब रोनुमाई के 24 घंटे के अंदर ही दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पुलिस के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। विवेक गर्ग नामी एक वकील ने सलमान खुर्शीद पर हिंदुत्व को बदनाम करने का इल्जाम लगाते हुए नई दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदुत्व नजरिया ने कदीम हिंदू मजहब को एक तरफ रख दिया है, जो हर तरह से दाइश और बोको हराम जैसी जिहादी तंजीमों की तरह है। अपनी दलील में खुर्शीद ने हिंदू मजहब को एक आला मेयार का मजहब करार दिया है। उन्होंने मजीद लिखा है कि इसके लिए गांधी जी ने जो तहरीक दी है उससे बड़ा कोई मुहर्रिक नहीं हो सकता। उनका मजीद कहना था कि मैं नया लेबल क्यों कबूल करूं, मैं बोलूंगा चाहे कोई हिंदू मजहब की तौहीन कहे। मैं कहता हूं कि हिंदुत्व की सियासत करने वाले दाइश और बोको हराम की तरह गलत हैं। सिक्स फॉर जस्टिस ने पाकिस्तान की फंडिंग के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। खालिस्तान की हामी सिखों की तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस ने कनाडा की अदालत में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए पाकिस्तान की फंडिंग के इल्जामात के खिलाफ दायर मुकदमे का पहला मरहला जीत लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा के एक ब्रॉडकास्टर टेरी मेलोक्स्की ने गुज़श्ता साल सितंबर में खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट के उन्वान से एक मुतनाज़ा रिपोर्ट शाया की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि सिक्स फॉर जस्टिस और इसकी खालिस्तान की मुहिम की पाकिस्तान की पुष्टपनाही और फंडिंग कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सहाफ़ी टेरी मेलोस्की का यह दावा झूठ पर मबनी था कि सिक्स फॉर जस्टिस असल में सिखों की नुमाइंदा तंजीम नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। टेरी मेलोस्की ने जज के सामने इतराफ़ किया है कि उनके पास पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान नवाज ग्रुप की पुष्टपनाही और फंडिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से OIC के जम्मू कश्मीर पर ख़ुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी से इस्लामी ताउन तंजीम सेक्रेटरी जनरल के जम्मू कश्मीर पर ख़ुसूसी नुमाइंदे और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एम्बेसडर यूसुफ मोहम्मद साहले अल्दोबे की क़यादत में OIC के आला सतही वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने वफ़द को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वफ़द में OIC के एम्बेसडर मिस्टर तारिक अली बखीत, एम्बेसडर हसन अली हसन, एम्बेसडर अहमद सरीर, एम्बेसडर रिजवान सईद शेख, OIC में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब अल-खबीब बोरानी, मिस माहा असीरी, मिस्टर मोहम्मद अल-खाम लीची, मिस्टर वकास लतीफ़ मुगल, मिस्टर फ़रख इकबाल खान, डायरेक्टर जनरल मिस्टर मोहसन सैफ अली खान, डिप्टी डायरेक्टर OIC मिस्टर शहजाद हुसैन और दीगर शामिल थे। इस मौके पर अपोजिशन लीडर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा कि OIC के वफ़द की जानिब से
دورہ آزاد جموں کشمیر پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ یہاں آئے اور لائن آف کنٹرول پر آباد شہریوں پر ہندوستان کی فورسز کی اشتعال انگیزیوں کا جائزہ لیا. لائن آف کنٹرول پر آئے روز ہندوستان کی فورسز کی فائرنگ سے نہتے شہری شہید اور زخمی ہوتے ہیں. اسلامی تعاون تنظیم کے وفد کا آزاد جموں کشمیر میں ٹھوٹا مہاجر کیمپ کا دورہ. وفد نے کیمپ میں قائم ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا بھی معائنہ کیا. اس موقع پر وفد نے کیمپ میں مقیم مہاجرین سے ملاقات کی. وفد کو کیمپ کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی. مہاجرین کے نمائندہ وفد نے اسلامی تعاون تنظیم کے وفد سے ملاقات بھی کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ. اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وائس آف کشمیر ٹی وی USA کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سہریش. آئیں نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر. وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی سے اسلامی تعاون تنظیم OIC سیکرٹری جنرل کے جموں و کشمیر پر خصوصی نمائندے نائب سیکرٹری جنرل سفیر یوسف محمد صالح الدوبے کی قیادت میں OIC کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی، جس میں سردار عبدالقیوم نیازی نے وفد کی مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ OIC کے وفد کی جانب سے دورہ آزاد کشمیر پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئے اور لائن آف کنٹرول پر آباد شہریوں پر ہندوستان کی فورسز کی اشتعال انگیزیوں کا جائزہ لیا. لائن آف کنٹرول پر آئے روز ہندوستان کی فورسز کی فائرنگ سے نہتے شہری شہید اور زخمی ہوتے ہیں اور ان کی املاک کو نقصان پہنچتا ہے، جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ درندگی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کی فورسز روا رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف کے دو قومی نظریے کی بنا پر 1947 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. تمام کشمیریوں کا مشترکہ مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کروایا جائے اور کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا جائے، لیکن بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس وقت ہندوستان نے 9 لاکھ فوج مقبوضہ وادی میں تعینات کر رکھی ہے، جس نے پورے مقبوضہ کشمیر کو محاصرے میں لے رکھا ہے. صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ احتساب ایکٹ جو میری حکومت میں بنا تھا اسے بہتر کر کے آزاد کشمیر میں احتسابی عمل شروع ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار نچلی سطح تک منتقل ہو، اقتدار نوجوانوں، خواتین، مزدوروں، کسانوں، محنت کشوں تک جائے، لیکن بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار مشکلات آتی ہیں. اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ آزاد کشمیر میں چند مہینوں میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں. کارکن بلدیاتی انتخابات کی
तैयारी करें। मुजफ्फराबाद में एक जलसा आम से खिताब करते हुए सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मैंने सदारत का हल्फ उठाने के बाद पहले खिताब में कहा था कि मसला कश्मीर को जारहाना अंदाज में बैनुल अक़वामी फोरम पे उठाऊंगा। नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के मौका पर हमने एक बड़ा मुजाहरा करके भारत की मजम्मत और दुनिया की तवज्जो कश्मीर की जानिब मबजूल करवाई। खालिस्तान की हामी सिखों की तंजीम सिखिस फॉर जस्टिस ने कनाडा की अदालत में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए पाकिस्तान की फंडिंग के इल्जामात के खिलाफ दायर हत्या की इज्जत के एक मुकदमे का पहला मरहला जीत लिया है। कनाडा के एक ब्रॉडकास्टर टेरी मिलोस्की ने गुज़िश्ता साल सितंबर में खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट के नाम से एक मुतनाज़ रिपोर्ट शाया की थी और इल्जाम लगाया था कि सिखिस फॉर जस्टिस और इसकी खालिस्तान की मुहिम की पाकिस्तान की पुश्तपनाही और फंडिंग कर रहा है। टेरी मिलोस्की ने जज के सामने एतराफ किया कि इनके पास पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान नवाज ग्रुप की पुश्तपनाही और फंडिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया और बैरून मुल्क सिफारती मिशनों ने टेरी मिलोस्की की रिपोर्ट खालिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट की बड़े पैमाने पर तशहीर की थी और इसे पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बिजली के बदतरीन बुहरान से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली सागर ने वादी कश्मीर में जारी बिजली के बदतरीन बुहरान पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि भारतीय काबज इंतजामिया मकबूजा इलाके में बिजली की फराहमी में बेहतरी में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2016 में भारतीय काबज हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों से बिजली की बिला तातुल फराहमी के वादे किए जा रहे हैं, जबकि दर हकीकत बिजली की फराहमी की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी जानिब श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के शहरियों और तुलबा ने बिजली की बार बार लोड शेडिंग और इंटरनेट सर्विस मुअत्तली पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग और इसके बायस इंटरनेट की मुअत्तली ने इनका जीना दोबर कर दिया है। भारत के जेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में तैनात 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों के जुल्म बर्बरियत की वजह से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में शहरियों के खिलाफ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट, टाडा और दीगर काले कवानीन के नफाज के जरिए दीवार से लगाने और इनकी गैर कानूनी नजरबंदियों को तूल देने की शदीद मुजम्मत की है। हुर्रियत तर्जुमान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जबरी भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आजादी के लिए कश्मीरी अवाम की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जल्द अज जल्द हल करने के लिए अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे और कश्मीर में भारतीय अफवाज के मुजालिम जबरी गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रुकवाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना चाहिए। भारतीय फोर्सेस की जानिब से गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ज़हनी तौर पर माजूर 47 कश्मीरियों को शहीद करने का इंकशाफ हुआ है। इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद एहसन ओंतो ने कहा है कि भारतीय फोर्सेस ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ज़हनी तौर पर माजूर 47 कश्मीरी शहीद किए हैं। मोहम्मद एहसन ओंतो ने कहा है कि ज़हनी तौर पर माजूर अफराद को जिस तरह गोलियां मारकर कत्ल किया जाता है, इसे महज इत्तफाक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मसला यह है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले कवानीन भारतीय फोर्सेस को महज शक की बुनियाद पर किसी को गोली मारने की इजाजत देते हैं और हुकाम तहकीकात का वादा करते हैं, लेकिन कभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। ये थी अब तक की खबरें। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएस से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पुलिस स्टेशन में मुसलमान नौजवान के कत्ल पर योगी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है। बेटे को दौरान हिरासत कत्ल किया गया, वालिद का इल्जाम। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज के एक पुलिस स्टेशन में मुर्दा हालत में पाए जाने वाले 22 साला मुसलमान नौजवान के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि उनके बेटे को दौरान हिरासत कत्ल किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान अल्ताफ के वालिद चाहत मियां ने मीडिया को बताया है कि वो खुद अपने बेटे को पुलिस चौकी छोड़कर आए थे और पुलिस ने यकीन दहानी कराई थी कि वो पूछगछ के बाद उसे छोड़ देंगे, मगर उसे दौरान हिरासत कत्ल कर दिया गया। उधर अल्ताफ के दौरान हिरासत कत्ल पर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां भी योगी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं। कांग्रेस की यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कासगंज में पुलिस की हिरासत में मुसलमान नौजवान की मौत पर योगी हुकूमत को हदफे तनकीद बनाते हुए कहा कि कासगंज में अल्ताफ, आगरा में अरोन वाल्मीकि और सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस की हिरासत में हलाकत के वाकयात से वाज़े होता है कि रहबर रहजन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस दौरान हिरासत लोगों के कत्ल में सरे फहरिस्त है। हिंदुत्व को दाइश और बोको हराम जैसी दहशतगर्द तंजीम करार देने पर सलमान खुर्शीद पर कड़ी तनकीद। भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा और कांग्रेस के रहनुमा सलमान खुर्शीद की तरफ से अपनी हालिया तसनीफ सनराइज अवर अवधिया में हिंदुत्व नजरिए का मुवाजना दाइश और बोको हराम जैसी दहशतगर्द तंजीमों से करने से भारत में तनाज़ा खड़ा हो गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बुध को सलमान खुर्शीद की किताब की तकरीब रोनमाई के 24 घंटे के अंदर ही दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पुलिस के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। विवेक गर्ग नामी एक वकील ने सलमान खुर्शीद पर हिंदुत्व को बदनाम करने का इल्जाम लगाते हुए नई दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOKTV. After almost 20 years of more than $1 trillion spent after the US entered Afghanistan following the September 11, 2001 attack, Afghanistan has effectively fallen under the Taliban rule not very long ago. And who can talk more and who can be the more relevant personality to talk about the subject than Marman Weinbaum, who is the director at the Middle East Institute, who handles the studies for Afghanistan and Pakistan. Doctor, welcome to the show. Thank you for having me. After having seen 20 years of conflict, what is the takeaway for the world, what we see happening in Afghanistan, particularly with the announcement that the Taliban have made the announcement of their government today? Well, it's certainly, I think events are moving very quickly. We didn't expect the Taliban to have anything like the momentum that it had, its ability to take not months to solidify its control, but to be able to do it in a matter of weeks. And right now, it's going to really, I believe, shake up so much of South Asia, Central Asia. We tend to think of it just in terms of U.S. withdrawal and naturally also the problem here of refugees and people trying to flee. But there's something much more involved here. As I suggest, it will have implications here for Pakistan. It will have implications certainly for Pakistan's relations with India, and also with just the power balance here in this part of the world, because we're talking about an area which has not just Afghanistan, but Iran, Russia, China, Pakistan, India, Saudi Arabia, either close neighbors or a little bit more distant neighbors. So all of this is going to require a kind of resetting of thinking, especially if it turns out that this new government
is unable to remain stable. I think the key element here is stability. I think all of the players here would like to see that. They also would like to see a face of the Taliban, which is different than what they saw in the 1990s and until 2001. So it's very much a wait and see attitude. But one thing we seem to have been spared of this in this recent developments is that if it was going to happen, it happened quickly. That it did not bring about a messy civil war, which would, I think, then make it much more difficult for the countries in the region to avoid involvement. I have read a statement from General McKinsey and the Washington Post stating that they're working closely with the current Taliban regime. Does that mean that we have a new partner in the region that we are working with closely? Yeah, I think working closely really has to do more than anything else with the evacuation of the U.S. citizens, maybe 100 of them left, but a much larger group, naturally, of those who had an association with the United States and who qualify for at least consideration for visas in the United States. The kind of cooperation that would go beyond that, I believe, would be limited as far as the United States is concerned, with a desire not to get re-engaged here. It would be limited to seeing whether we could work together against groups like Al-Qaeda and Islamic State. That's very problematic. That has to be seen as very problematic because there's no trust between these, nor should there be any, given what has happened. Especially the Taliban have indicated that whatever promises they make, they can just as easily go back on. So it may sound good to say we will work together against a common enemy, but the fact is, I believe that the Taliban will view certainly Al-Qaeda not as an enemy. And as far as Islamic State is concerned, it seems very difficult here for them to take on Islamic State in any big way. We'll have to see how Islamic State operates. If it tries to destabilize this new government, I think it will be put down by the Taliban. They won't need the Americans for this. Now that they have pretty much consolidated power, what we're talking about here are guerrillas, effectively, and while they may not be able to completely curtail terrorist attacks that the Islamic State may mount, at the same time, they're not going to pose any kind of threat to this new regime. When U.S. forces went in 20 years ago in Afghanistan, were they expecting some sort of a result that we see today, or it is completely a surprise to them? Well, they didn't expect to be there first of all, for 20 years. When they went in, they thought, just as the Soviets had thought, we'll go in, we'll take care of the problem of installing a new government, and we'll leave. But in both cases, they quickly found out that you can't do that and expect that what you've done is going to have any lasting power. It doesn't work that way. So you get soaked in, you get pulled in, and that's what had happened. And then once you do, your investment is such that you've got to see it through, at least to some degree. But what was unfortunate for the United States and the new government, the Karzai government at the time, was that the Taliban weren't going away. Thanks to Pakistan, they found sanctuary.
And whatever you may conclude about Pakistan's role in the Taliban, they had an opportunity to rebuild. And by 2006, they had emerged as a very serious insurgency. And then what we saw here was a long period here of relative stability. Yes, gradual gains on the part of the Taliban as they took over larger and larger portions of the country, particularly the rural areas, I should stress. It's only since the United States signed an agreement with the Taliban in February of last year. They signed an agreement which effectively told the Taliban, it's all yours. You just have to wait a little while, precisely 14 months. And then when President Biden came in April of this year, he announced that we're going to honor what the Trump administration had done, and we're going to move out, but not May 1st, but September 11th, and then August 31st. So what I'm getting at here is that once the security forces, which have been the key really to the staying power of this government, the previous government here of Ashraf Ghani, the key here was whether the security forces could hold together, whether they would have the will to fight as well as the capability of fighting. Well, they didn't have that capability without American and NATO assistance. And when they realized they were going to lose that, you could see that their morale dropped. And at that point, they were all convinced, eventually all convinced, that this was a cause that was not worth fighting for. And that's what happened. So I'm going to quote two quotations, one from the former ambassadors to US, Dr. Malia Lodi and the Prime Minister of Pakistan, regarding their role in this last 20 years of conflict. Prime Minister of Pakistan states that its country have lost over $100 billion to the economy, and 80,000+ human souls were sacrificed for the war, that they had got nothing to do with it. And at the same time, Dr. Malia Lodi, in her interview to a channel, she stated that, well, had it not been Pakistan kept the conversation and the channel of communication open with Taliban, there would not have been a deal with US. How do you see both of these statements and your point of view? Well, I think I would comment on Malia Lodi's. I don't agree with that at all. Yes, Pakistan undoubtedly encouraged the Taliban to sit down and negotiate. Those negotiations never went anywhere. They only revealed that the Taliban are not interested in making compromises, and that continues to be the case. They've never really compromised on their vision of establishing an emirate and returning essentially to the form of government, maybe a little bit more less draconian in its behavior, the same kind of government that they had earlier. That's always been their goal. The Taliban negotiated with the United States because it wanted the United States and the others to leave, and it got what it wanted. The Taliban also were willing to sit down at the table. They didn't have to be pushed that hard by Pakistan. They wanted to sit down because they saw a diplomatic route to power as well as a military route. That is, if they were in strong enough military position, they could pretty much dictate an interim government, the next government, and that would clear a path ultimately to their success. Well, as it turned out, the diplomatic wasn't necessary. Aside from this, We're never alone. And that
is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Afghan security forces, national security forces. But the way things worked out, that wasn't nearly enough. Even with the promises of financial support and inheriting the equipment that the United States was leaving, you can't substitute that for the will to fight. And as I've suggested, they had lost that will when they realized that particularly without American air power, as support, close air support by the United States, their ability here to hold on was going to be severely compromised. So they left a lot of equipment. There's no question. So the last question, because I know I promised you that you're busy and you have other commitment. What do you make out of the names that appear to run the government in Afghanistan today? This is going back to the 1990s. Essentially, it is all the veteran figures here. I don't know the 33 other people who have been appointed, but if you look at the top ministerial positions, these are all, as I suggest, people with long association with the Taliban. We don't find in there, for example, technicians. Maybe they're included in the 30, but I doubt that. It looks like they're all Pashtun, or nearly all Pashtun. It looks like there are no women. The politicians who hope to get a piece of the action by talking to the Taliban and staying in Kabul, I don't see any evidence that they got anything. So it's not an inclusive government, as they said they were determined to have, at least unless there's another generation of appointments
It's not that, and above all, it doesn't have a government that would give one very much confidence that they can govern successfully. And that may be the real weakness that they face as all the problems mount now on them: financial collapse, famine, and other issues which are coming to bear now, and their ability to handle those, certainly based on what they were like in the 1990s, they're ill-equipped to do that. So do you think the U.S. will acknowledge or recognize the government in Afghanistan? The U.S. will not recognize the Kabul government until, first of all, some long period of time. For some long period of time. So obviously then the rest of the world probably will have to follow the lead. I would have to leave it right there as I promised, but you do owe me another interview that we will discuss in length. Thank you so very much for being on the show. My pleasure. Thank you, sir. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Salatu Wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Point of View from Srinagar. I'm joined by a very senior Kashmiri leader, Altaf Qadri Saab, who is based in Dallas, Texas, but he keeps a close eye on the situation that is happening in Srinagar. He is originally from that part of the valley. Currently, we have seen a surge in civilian killing on the ground, and that has worrisome Kashmiris, particularly those who are living outside of Kashmir. This is not something that we propagate, and this is not something that we advocate for. And this is a counterproductive for the movement of freedom of Kashmir. And who is doing it? Why is it happening? All of a sudden, that why this violence and killing of innocent people have started to undermine the freedom movement that Kashmiris have been propagating for so many years. Qadri sir, welcome to the show. Thank you, sir. Let's start off with these 28 killings that took place in the very recent days in Kashmir. World has been talking about it. And the sad part is that this time they have targeted people of all communities to create a rift between the communities who have been living together harmoniously for centuries. How do you read this whole situation? It's very unfortunate, of course, but at the same time, you have to look at it, why these killings are basically taking place and what do they want to achieve out of it. Basically, first of all, we must be very clear about one thing, that the killings are taking place there, either being carried out by Pakistan through its design, through its people, or by India through its own people. Now, why do they do it? They do it, they will never give you any such opportunity to Kashmiris where they could get an empowerment. These are basically meant to disempower Kashmiris. Otherwise,
an innocent killing, but there are two types of killings at the same time. You have to separate the two killings. One part of killing was where legitimate Kashmiris were targeted, and the other part of the killings where the Indian laborers or Indian citizens were targeted. I understand. I can wrap my head around the fact that why Kashmiris are basically so scared. There is a state of nervousness and insecurity being created by Government of India through abrogation of Article 370 and 35A, and which is clearly signaling to people of Kashmir that they are going to press on with the demographic change. And when you are at that state where you are being basically threatened, your identity is being threatened, your political identity is being threatened, and your livelihood is being threatened, and there is it happens all around the world where people are being kicked out of their houses, then they bring in the people from their country. So all these things have a different dimension. But the killings that were purely being carried against the people of Kashmir, local people of Kashmir, those killings are basically meant to disempower people of Kashmir. It is not, I know, in which one Kashmiri Pandit was innocent Kashmiri Pandit was killed, which is very, very lamentable and regrettable. And another was the Sikh lady, that principal, and another was the local. So that has a different dimension. But the dimension then when they carried out it against Indian laborer or any Indian one. So the Government of India and the world must understand that the Kashmiris have been thrown to the wall, whereby their livelihood is in danger, their political identity, their property, their politics all together, their society is about to be disturbed. Whether they can do it or not, that is a different story. But these are two different killings. One is highly lamentable. The another killing is that their responsibility, the Indians who are being killed, be it that Pani Puri wala or any laborer, that killing straight away falls on the shoulders of Amit Shah, Modi, and Ajit Doval, because these are the three people who have created such a situation in Kashmir. Well, how this insurgency or the killing of innocent people is going to serve. Number one, you had mentioned in the beginning of your statement that either it's Pakistan behind it or India. I mean, what is the interest of Pakistan? Pakistan has its own hands full right now. They're facing terrorism inside the country, and Prime Minister have vehemently said it many, many times that he would not allow anybody to use his territory for insurgency anywhere, any part of the world. He has been a proponent of peace. So at this time, why would you think that it will serve to the betterment or to the narrative of Pakistan if that was the case? And why would India do it? What narrative would serve them if India is behind this, creating this mess in the region? So I just need to understand the objective behind what is it that they're trying to accomplish, both of them. You see, in Kashmir, unfortunately, it is a big game of the intelligence agencies. Indian intelligence agencies are there in maybe more than 20 intelligence organizations are working there. At the same time, Pakistani intelligences are there. I'm not, I can understand their point of view. I can understand their position because it's an area where their security concerns are. So they are to be there. We understand that. But why do they do it? You see, in the region, what happened actually after the fall of Afghanistan,
the balance of power tilted towards Pakistan. Let's be honest. India was basically shunned out of Afghanistan. So I won't believe that they would not, try to do again. Try to gain some foothold some way back in Afghanistan. But at the same time, right now, the balance of power in the region has shifted between India and Pakistan towards Pakistan. So they sometimes these organizations have to communicate. Killing a Kashmiri sometimes is a means. It becomes a means of communication between ISI and RAW or IB. And sometimes the IB does something in Lahore or in Karachi or in Islamabad, some untoward incident takes place, or the killings of those innocent school children in Peshawar. What was that? That was basically these intelligence agencies communicate each other, and they try to show the extent of their grip in the situation in respective countries. So that is one purpose, how they communicate to each other. But in that situation, when that situation pops up, so these people, the innocent people, become the target of their communication. I mean, this has been happening in Kashmir for a long time. Otherwise, I have not any individual killing that took place in Kashmir. They were not. They don't kill them. First of all, I must tell you also. I want to make it sure to the people of Kashmir also that they don't kill them. In Pakistan doesn't carry out any individual killing just because they are Indians or they are not for the movement. It's not. They don't kill them just because of that. Indians do not kill Kashmiris just because they are working with Pakistan or they are Pakistanis. It's not a true narrative, or it's not a true picture of the situation. The true picture of the situation is when these killings take place. First, they disempower Kashmiris. They create a scare. Nobody can have an independent and free thinking in Kashmir. That is very dangerous for both the countries. Number two, if they were killed just because they were Indians, then Mahbooba Mufti is openly Indian. Farooq Abdullah is openly Indian. Umar Abdullah is openly Indian. Sajjad Lone is openly Indian. All these people have been this way or the other way at times accorded state honor by Pakistan. And similarly, then Hurriyat is there. All other people are there. They have not been targeted. Umar Farooq is sitting there, and that is not that. That is basically they just try to control you. They have to control you. How would they control otherwise? They have to do something spectacular so that the Kashmiris cannot have an open mind or free thinking. In the context of this recent surge in the insurgency, who is the beneficiary? You refer to the Afghan situation where Pakistan has upper hand because of this outcome that came from the war of almost 20 years in Afghanistan. And from very first day, India, the entire media started propagating that now the next war zone would be Kashmir. And we have seen very many speeches, press conferences, interviews by Imran Khan of Pakistan that he would not allow his territory to be allowed, and he would not expect anyone else to do the same. So he has been very adamant about that. But counter to his narrative, India has been propagating the otherwise. They have been, claiming that this is going to happen in Kashmir, and some people are of the opinion that this killing was designed, orchestrated by the Indian intelligence agencies to undermine the freedom movement, not from Pakistan's side. I'm not saying that I don't have any proof not to say that Pakistan was not involved, but what I'm saying is that if you connect the dots, the propaganda that was staged right after the fall of Afghanistan
in series of events that took place until today, it all as if it was scripted and played out exactly the way they wanted it to be. I don't think in India, one thing I can tell you that if I were Director General ISI, I would spend billions of dollars what Modi, Amit Shah and Ajit Doval is doing. I would honestly tell you, I would spend billions of dollars. No great leader would ever want his country to be divided. The basic purpose of a great leader is to keep his country together, thick and thin. But things are quite obvious, you know. What it is India. They have reduced India to an ethical democracy. It is an ethnic democracy now. It is no more a democracy. What they are doing, they are. I mean, I tell you honestly, if I were a Director General ISI, I would spend billions of dollars for what Modi, Amit Shah, and Ajit Doval is doing. So don't think sometimes if they do something stupid thing, they do it just because against Pakistan. They do it because I have never seen in my whole conscious life, political conscious life, I have never seen Pakistan so much controlling political landscape of India as it is today. Really? What do they have? Pakistan is practically, I tell you honestly, Pakistan can decide the prime minister. Pakistan can decide to defeat any prime minister in India today. That is the grip that Pakistan has on Indian polity. Pakistan was never so powerful as it is today in Indian political landscape. So don't think that these, you know, I'm happy. I keep on writing on social media, but I have never written a single word against Modi. I have always at the end prayed for his longer tenure. I want him to serve India at least for 50 more years. Because after 15 more years, he is going to do a great service. 1.2 billion people will be freed. Go and read the index of, look there, economic index, social index, political index, look at their corruption index. I have just got a book being written by one of the scholars. It's on my table. I didn't finish it yet, but I read the synopsis of it on my Foreign Affairs Journal. Look at where is India today. You think they are just clamoring. They are just clamoring. They are not what they are. Very interesting analysis. Very, very interesting analysis. And I'm intrigued by some of the analysis that you have presented. I'm going to, in the last 10 minutes, I'm going to digress a little bit about the situation that there was a statement by the Federal Minister of India stating that Dubai has signed a memorandum of understanding, or maybe an agreement with India to invest billions of dollars. Obviously, the number was not shared, but it is at the verge of signing an agreement, or the agreement have been signed, where Dubai is going to invest billions of dollars on the infrastructure, IT towers, hospitals, schools. What interest Dubai has in Kashmir, and why Kashmir without the will and the permission of people of Kashmir? To be very honest, I have not been able to wrap my head around this, what Dubai is doing and why they are doing. But I don't doubt their intentions. If they invest in Kashmir, is a very welcome sign. We should appreciate it because it will ease out the people, lives of the people. It can create avenues, it can create jobs and all that. It will bring a betterment and joy in Kashmiri's life. So let us not look at it through a prism of suspicion. But I know right now, as you know, the world is in the form of shaping its own positions right now. Things are completely fluxing in multiple directions. I think in future I can
I can imagine quite clearly that Dubai, Saudi Arabia, and Qatar, Doha, these countries will have a very prominent role to play in the resolution of Kashmir. I can see that. And I think Pakistan should be, if I would give them this advice, that they should not react, they should move forward with a positive mind if at all they approach to them. But I can tell you one thing, I see a role being played by Saudi Arabia and Dubai in the resolution of Kashmir dispute. And that's a very welcome sign. Will they succeed or will they succeed? I don't know, because if I would be honest, the track record of India, it has a dispute with China for 40 years, no progress. It has a dispute with Pakistan for 70 years, no progress. It has a dispute with 30 years with Assamese, no progress. It has a dispute with 23 years negotiations only with Nagas, no progress. It has a dispute with Bangladesh, border dispute with Bangladesh, no progress. So all these things are quite clear that something is Indians, sensible Indians need to ponder upon these things, that this is not the age. They are living in bygone years. The new era, if they want really a progress and a peace around. So they will have to change their mindset, because as I told you, I mean, these are indicators. Why Kashmiris are not also engaging with India. This is one of the things that, because last time I was watching one interview of a Naga leader. He was crying, that man was crying. He was finally rendered an obsolete in his own politics. They engaged him 23 years, and after 23 years, they told him nothing. They started with sovereignty, then they reduced it to the constitution and flag and constitution. Then they told them, or at the end, after 23 years, they told him that, well, we have taken this away from Kashmiri, so how can we give it to you now? So that's all there. So as Kashmiris, you think that it's a good sign that foreign investment is coming and foreigners are coming who are settling in Kashmir and changing the demography of Kashmir and taking away the properties and the land that was otherwise was supposed to have been only for Kashmiris. Are you okay with that? No, I'm not okay with demographic change. And I tell you, they would use this business development, and then they would use this as a guise to bring in the people from outside, telling the world that these are the professionals who are coming out there developing this IT infrastructure, and then they will end up giving them state subject, end up giving them residency, and end up giving them housing and the land, and they will settle there. And then the promises of the world, where they keep talking about that the Kashmiri need to have this plebiscite and the referendum, and when that happens, the demography would have already been changed, that the situation will never be in the favor of Kashmiris. You see, first of all, I can assure you, I can produce a book of 1,000 pages on this subject, on demographic change. I have studied it long. Demographic change is never going to happen in Kashmir. It will never succeed. It is a delusion, is a fascist delusion, because it is an idea being prepared and hatched in the offices of RSS. Okay. So they are just trying to carry it forward. It is never going to happen in Kashmir. Demographic change it's not a house. It's not a house that is the connection. I live in Kashmir, I have connection. Kashmiri Pandits have been, whether they have been kicked out or whether they left by themselves, whatever the circumstances, they are out of Kashmir. They have the connection. They keep on clamoring, fighting. Tell me, show me these 2-3 people were killed, and these Indian people, they left. Do you think they have connection in Kashmir? Or do you think that they will ever come back to Kashmir? It's not, you are here living in America, but you have still a connection with Azad Kashmir. I have a connection. My kids don't have connection. My daughter is, die-hard Pakistani because she was born there.
Pakistan is her Kashmir is Pakistan. My son, he was born here, raised here. He doesn't have any connection with Kashmir. Yeah, he will give me lip service. I like Kashmir and this and that all, but he doesn't have. It is not a house to build on the land. It is a connection with the land. How is it going? At times in Germany, if you see in the Tsar's time, Germany at the last age of the Tsars, Germany was so much inundated by the Germans. The Russia was so much inundated by the Germans. There were 2-3 newspapers published in Germany, in German language. But when Tsar was defeated, the communist regime took over. Where are they today? In your country, in America, there was one newspaper was published in German language here. After 43, where is that newspaper today? It's a delusion, these are delusion. If you read a book, Eye on the Gates, read that book and see what Israeli intelligentsia is talking about. They are telling people that we are producing an abnormal society now. And that is what India is doing again now. They are. I mean, Qadi Sahib, I really want to understand and learn about the demographic change, and that is an illusion that is being created. That's a news to me, and I would like to have a separate show on that subject with you, inshallah, sometime when you are available. Last questions. Why Kashmiris are not seen to be very active? I'm talking about the Kashmiri diaspora in the world. Number one, they're not. This is the last question, and you can take as much time as you like to elaborate on this one. Number one, they're not united. Number two, they don't have one united narrative that they can propagate to take it to the world. When they go out there and meet the people of the power corridors, every one of them have their own agenda. Every one of them have their own narrative for Kashmir. People who are decision makers, people who can consider thinking about it, are confused. Who should they talk to? Number one, why there has not been a concerted effort by the Kashmiri diaspora to come on one platform for the sake of Kashmir cause, give up your ego of being the sole leader, so-called the sole leader of the Kashmiri representation, come up with one narrative, and then let's take the movement to the next level. Why has that not happened? And do you see that happening in the near future? It's a very, very important, complicated, and you have to have you got to have a very dispassionate opinion and dispassionate power to listen. Suppose I tell you, Kashmiris are divided. They are divided. One group is somehow connected with India because they are scared. They have to go back homes and their houses could be impounded and all that. I can understand that. Then the other group is being propped up by Pakistan. They keep on telling them to go ahead with this right of self-determination. Mujib bhai, I'm not going to waste my time for that, nonsense. Absolutely, I tell you, I'm sorry to say it, but it's a complete nonsense. And Pakistan knows it. It's not that Pakistan doesn't know it. I know what Pakistani opinion is about it. What is the understanding behind this whole thing? They want us to keep saying something very nonsensical that would make no sense and we would look like a jokers in the international world, so that they could talk the substance. I understand this. They want substance for themselves and nonsense for us. I'm not going to do it. I don't need money. I don't need anything from anybody. I will contribute, but I will not take from Kashmir. So this is why Kashmiris are divided here. Kashmiris are corrupt. There is no doubt about it. Kashmiris in America are corrupt. Kashmiris in London are corrupt. Kashmiris in Turkey are corrupt. Kashmiris in Brussels are corrupt. This is a problem. We have to recognize this problem. You can't change the fabric of reality. You may try to twist it for some time, but it will snap back. It will snap back into the position. So Kashmiris have to realize it. We don't have to work just for
money. You know, there are people dying, their own kids, their own relatives, their own people are dying for this. I will not become part of that crime. That is the only thing. If any Pakistani, any Kashmiri can convince me on your show that right of self-determination is workable, I will join you right away. Number one. Number two, historically, what is right of self-determination? What is UN resolutions? What has it served? It has served, to me, it appears, right of self-determination to those people who play for this narrative, who are ardent supporters of this narrative, or those people who say Kashmir is an integral part of India. They are the same people. Now I will tell you, it's a very loaded word I'm telling you. Be it Gilani, he's as good as anybody is saying it is an integral part of India. Be it Umar Farooq, if he says right of self-determination, Yasin Malik says right of self-determination, or this UN resolution, it is as good as you are helping India. I don't want to be part of that. Now you may ask me how. Let me explain you how. Right of self-determination means, or the United Nations resolutions, whatever that is, that means you are asking for status quo. You maintain the status quo. That is what United Nations resolutions have done since 70 years. I want the status quo break off. I don't want status quo to maintain. When I would keep on saying this nonsense, self-determination and all that, it's not going to help me. It's an instrument for miseries. I would have to stop it here because I'm running out of time. However, I do have this question that inshallah I would ask you on the next show. The United Nations have maintained the status quo of self-determination for 73 years. And their argument would be that because that was based on the world agreement, people of all nations come to an agreement. That's why we want to pursue that route. To change, to change the status quo, we need that kind of a vigorous effort to bring the world on the same page. Hey guys, that's not going to work. Let's move on to the next step and break the ice and move on. What would be your suggestion to them? Look, first of all, I don't give much of importance to United Nations, because the world, if you see the world, new formations, the United States, basically, if I will be very blunt and honest, the world United Nations is rendered useless by United States, because United States has a one single vote, and China has a vote, so has Russia a vote. America has realized this point, so that is why they are trying to bypass now this route, right? So they have a new alliance with India, with Japan, with Thailand, with Australia. On the one side, on the other side, they have a new formation of Dubai, UAE, and Saudi Arabia. So the world is completely shifting. If you put all your eggs on the United Nations basket, it is going to break. I don't say Pakistan should give up on it. I'm not saying that. Pakistan should say it, keep it, as long as that institution is there. It is good to keep hammering on that, but I don't think it is ever going to come into real light. Qadi sahab, bahut shukriya. Thank you so much for
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen. This is Najib Qazi and you're watching Dallas Roundup on VOKTV. I'm very honored and thrilled to have a very special guest with us. He is an attorney by trade, have served on the city council, and then he was contesting for the state senate race. And all of a sudden, I saw that his campaign has been postponed, and that was a triggering point for me to invite him and see what's going on. That is none other than our brother Salman Bajani. Welcome to the show, sir. Thank you for joining us. Thank you for having me. Assalamu alaikum, sir. Wa Islam. What happened? Why did you have to suspend your campaign? So unfortunately, I was drawn out of the district that I was running in. I was running for Texas Senate District 9, and they've changed that district and pushed it more towards Northwest Tarrant County. And my home is no longer part of that district. And the district that they put me under has 10 other rural counties in it that I probably have not even seen somebody like me, a person of color. And so it's going to be a much more challenge for them to understand why I'm running for office. I know you have served on the city council, and then you decided to go for the state senate. Why did you choose to go into a public service? It's a thankless job. It is, absolutely. And I think our former president sort of forced me to go into public service. In 2016, when the United States elected, former president, I felt that was not the right decision for the country as a whole. And I felt that our community, Muslim community, South Asian community, may be marginalized. And so the first thing that he did when he came to office in January 2017 was instigate a Muslim ban for 15 countries. And I felt that was sort of the end of it. And if I stood on the sidelines and just watched everything will go in dismay. And so I had two options, right? Just get my name, put my name on the ballot or run for something, or be really active in the community and let people know what's happening. And so I thought, people pay more attention to elected officials. So it's important to have our voices heard and having a seat at the table. And I still live in Euless, city of Euless since the last 12 years. And so I felt that was a good place for me to graduate my services on city council. I was on the park board for the last, I would say, maybe 4 years at that time. And so that made me go to the next. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change.
We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. It's the public service giving back to the community that you live in. And I think that was a very monumental on your part. And you have basically paved the way forward for the other people to join. And partly because of your effort and the foundation that you've laid on, now you have other council member of the color who replaced you. Yes. But I was always intrigued to ask you this question that, you have won the election and you're part of the city council. Generally, people tend to give a few more, terms and stabilize themselves before they move on to the Senate. But on the very first term, when it was up and you decided to jump for state, what was the, if I were to ask you, I'm sure there are many reasons, but what was the triggering point? Hey, I think it's more time for me to go for state Senate. Sure. So that's a great question, because last 3 years when I was on city council, I saw that our state representatives were always at war with city council members or cities and municipalities. It's the state versus local cities, and they're always trying to push their laws on us, right? Just like how they think that the federal government is pushing the laws on state and they want more sovereignty. Cities generally, the Texas state constitution is based on the fact that all cities have the most power, right? Because we're local, we can really be agile, we can be flexible, we can adapt to what our constituents' needs are. The state over the past few years have always tried to gain more and more power and try to carve out more powers for themselves and reduce our power. They want the tax ceiling, right, that they've had, that you cannot go over 3.5%. If you go over 3.5% of the previous tax, then you will have to go to the voters and get an election done, which doesn't make sense, right? With the cities that are expanding like Euless, we have so many more things coming in Euless. We need fire, we need police, we need so many more resources. How can we do less with that, right? So there's been a struggle constantly for that. The revenues have been declining as well, because the state passed, and Kelly Hancock actually passed a law that if the city has 2 utility easements that it's getting revenue from every month, they can only get one of the 2 revenues, right? So that cut our budget even more. The court fees are cut even more. So I just see general push from that state. So I felt I need to sort of be the voice for all cities in Texas to stop that from happening. And so Kelly Hancock was a sponsor of a lot of those bills, and it made sense, for me to fight for the community at a higher level and really get them what we deserve. Diving into this remapping of the for the state Senate, obviously our state is controlled by Republican, and was it done by design, or was it just part of the routine that they just had to do it? I think any again, history has shown us that any party that's in control of the state legislature draws maps to have them stay in power longer, right? And so that's what's the unfortunate part of it is this time it's Republicans, and they want to stay in power longer, so they've drawn maps that make them stay in power for a lot more time. And the way they do that is they know the minorities and people of color will vote mostly Democrat, right? And so what they've done is they've cracked all those into smaller pieces, so that way we don't have a big voice. For example, let's say there is a district that had 20% of Asian American population or minorities or and what they did is they drew them into 4 different districts or 5 different districts, so that way their vote can be only 5 or 4% as opposed to 20%, right? So they don't have any meaningful say in who gets elected. So we usually say that people elected officials. In this case, elected officials pick what people they will vote for, right? So that way, if they pick more Republicans in their district, most likely they will be able to win again for next several elections.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सिख वफ्द की नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने पर जोर दिया गया है। सिखों के एक वफ्द ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इन पर पाकिस्तान में करतारपुर साहब गुरुद्वारा की यात्रा को यकीनी बनाने के लिए करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने पर जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब, दिल्ली और मकबूजा जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं के 11 रुकनी वफ्द ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सिखों की करतारपुर यात्रा को मार्च 2020 में कोरोना वबा की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। सिख रहनुमाओं ने 19 नवंबर को गुरु नानक देव के यौम पैदाइश से पहले करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का मुतालबा किया है। भारतीय रियासत त्रिपुरा की पुलिस ने 2 सहाफियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। भारतीय रियासत त्रिपुरा पुलिस ने रियासत में हालिया फिरका वाराना तशद्दुद की रिपोर्टिंग करने वाली 2 सहाफियों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर दी है। ज़राए के मुताबिक FIR कंचन दास की तरफ से दर्ज की गई, जिन्होंने दावा किया है कि समृद्धि के सकूनिया और जहां सवरना नामी 2 ख्वातीन सहाफियों ने पाल बाजार के इलाके में मुसलमानों से मुलाकात के दौरान हिंदू बरादरी और त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की। याद रहे कि त्रिपुरा की पानी सागर सब डिवीजन में 26 अक्टूबर को हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद के मुजाहरे के दौरान मस्जिद और मुसलमानों के घरों, दुकानों और दिगर अमलाक पर हमले किए और इनकी तोड़ फोड़ की, जिसके बाद से त्रिपुरा में कशीदगी पाई जाती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का इस्लामी तशख्खुस, रवायात और सकाफत भारत के निशाने पर है। पासबान हुर्रियत के चेयरमैन का बयान। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है और इलाके का इस्लामी तशख्खुस, रवायात और सकाफत भारत के निशाने पर है। ज़राए के मुताबिक पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन उज़ैर अहमद गजाली ने मुजफ्फराबाद में जारी एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर इस वक्त तारीख के स्याह तरीन दौर से गुजर रहा है और भारत अपनी पूरी फौजी ताकत और काले क़वानीन के जरिए आज़ादी, इंसाफ और हक़ हुदरादियत के लिए उठने वाली हर आवाज को खामोश कराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के जिंदानों में हजारों कश्मीरी नजरबंद जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। इजहार राय की आजादी पर पाबंदियां आयद करके रियासत को एक जेल में तब्दील कर दिया गया है, जबकि काबिज फोर्सेस हजारों कनाल अराजी पर जबरी तौर पर काबिज हो रही है। उज़ैर अहमद गजाली ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत और अवाम से अपील की है कि कश्मीरी अवाम के हकूक के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि तनाज़ा कश्मीर की हसासियत भारत के जालिमाना रवैये और दहशत गर्द मनसूबों से अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक के आलमी इदारों को आगाह करने के लिए रियासत गिर मुज़ाहिमती तहरीक का आगाज करना होगा। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों की खामोशी की वजह से नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत निहत्ते कश्मीरियों पर सफाकाना मुजालम ढा रही है। दुनिया भारत की हिंदुत्व हुकूमत को दहशत गर्द तंजीम करार दे, मिसाल मलिक का बयान। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और गैर कानूनी तौर पर नजरबंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया मिसाल हुसैन मलिक ने दुनिया पर जोर दिया है कि वो दाइश की तरह बुनियाद परस्त और फस्ताई हिंदुत्व हुकूमत के खिलाफ भी मुत्तहिद होकर सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि इसने जन्नत नजीर वादी कश्मीर की आवाम की जिंदगी जहन्नम बना दी है। ज़राए के मुताबिक मिसाल हुसैन मलिक ने इस्लामाबाद में एक बयान में कहा कि आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमें दाइश की तरफ से उठाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ यक आवाज हैं, जो काबिल तहसीन है। ताहम उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व हुकूमत और फलस्तीन में सिहोनी हुकूमत की तरफ से रियासती दहशत गर्दी और गैर इंसानी कार्रवाइयों पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए जाने पर दुनिया के दोहरे मेयार पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि हकीकी अमन का ख्वाब उसी वक्त पूरा हो सकता है जब आलमी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे दोगलेपन से परहेज करें और इंसानियत और इंसानी हकूक को अपने माली मुफादात और ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर रखें। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में 16,85,571 बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। प्रोविंशनल प्रोग्राम मैनेजर EPI डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान ने मरकजी ऐवान सहाफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 15 नवंबर से 27 नवंबर तक मुहिम आज़ाद कश्मीर भर में जारी रहेगी। EPI के 370 मराकिज, 1,874 आउटरीच टीमें, 4,488 तरबियत याफ्ता वर्कर्स टीम असिस्टेंट, 4119 सोशल मोबाइलर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। मॉनिटरिंग के लिए 449 फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर, 220 यूनियन काउंसिल सुपरवाइजर्स,
199 तहसील लेवल सुपरवाइजर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, मर्दाना और जनाना तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा सेहत के 60 जिले अफसरान और 15 प्रोविंशियल मैनेजर, EPI ऑफिस सुपरवाइजर को मुहिम कामयाब बनाने की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर TV USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर TV USA के साथ मैं हूं निमरा मलिक। आइए चलते हैं आज की ताज़तरीन खबरों की जानिब। आज़ादी पसंद मुजाहिदीन की यलगार में श्रीनगर में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। इंडियन फोर्सेज ने कई मकानात को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के नवाही इलाके में कल इतवार की रात आज़ादी पसंद मुजाहिदीन ने गुलाम पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार की शनाख्त 37 साला मोहम्मद मकबूल के नाम से हुई है। मुजाहिदीन ने यह हमला श्रीनगर के नवाही इलाके नवाकदल के जमालता गांव में किया है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी, इलाज की सहूलतों में भी इजाफा कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें एक का ताल्लुक मीरपुर और एक का भिंबर से है। 3 मरीज सेहतयाब हुए और 174 अफराद के कोरोना वायरस के शुबा में टेस्ट लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में अब तक 3,18,323 अफराद के कोरोना वायरस के शुबा में टेस्ट लिए गए हैं। 34,512 अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी पाई गई है। 33,727 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और इन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तालीमी अदारों में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकारीर की तैयारी और तुलबा की इसकी जानिब रुग़बत खुश आइंद है। वज़ीर ख़ज़ाना आज़ाद कश्मीर का खिताब। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना इमदाद बाहमी व लैंड रेवेन्यू अब्दुल माजिद खान ने कहा कि रसूलुल्लाह से हकीकी मोहब्बत और इश्क ही मोमिन का असासा है। तालीमी अदारों में सीरत-उन-नबी पर तकारीर की तैयारी और तुलबा की इसकी जानिब रुग़बत खुश आइंद है। तहरीर और तकरीर पर अबूर के जरिए दुनिया के कई बड़े मार्के फतेह हुए, इसलिए जुबानों पर अबूर के साथ साथ बेहतरीन अल्फाज का चुनाव और खूबसूरत असलूब निहायत जरूरी है। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली 12 रोज़ा खसरा रोबेला मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में शुरू होने वाली 12 रोज़ा खसरा रोबेला मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि महकमा सेहत आमा आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर्स और दीगर असामियों में इजाफा किया जाएगा। अवामी सहूलियात की खातिर महकमा सेहत के अदारों को अपग्रेड्स ने अदारे की क़याम में अमल में ला रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर में महकमा सेहत आमा में बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट लगाने पर इत्तफाक किया है। आज़ाद कश्मीर में तारीखी वर्सों आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म के मंसूबों को अगर CPEC में शामिल किया जाए तो सेहत को फरोग मिलेगा। सेक्रेटरी इत्तलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज़ाद जम्मू कश्मीर।
सेक्रेटरी इत्तलात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहतरमा मिद्दत शहजाद ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में CPEC के हवाले से मुनक़दा पार्लिमानी डायलॉग में प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में तारीखी वर्सों आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म के मंसूबों को अगर CPEC में शामिल किया जाए तो सेहत को मजीद फ़रोग मिलेगा। जनूबी एशिया और वस्ती एशिया की अवाम के लिए बाहमी राब्तों के फ़रोग से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। भारत में गाय के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर ने बीमार गाय के लिए मुल्क की पहली एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश की हुकूमत शदीद बीमार गाय के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि 112 इमरजेंसी सर्विस नंबर की तरह नई सर्विस संगीन तौर पर बीमार गाय की फौरी इलाज की राह हमवार करेगी। दुबई, शारजा और अजमान में ज़िलज़िले के शदीद झटके, इमारतें लरज़ उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों दुबई, शारजा और अजमान में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। ज़िलज़िले के इन झटकों से मुतअद्दिद इमारतें लरज़ उठी और इन इमारतों से लोग बाहर निकल आए। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सिस्टम पर हैकर्स का खतरनाक हमला, लाखों मेल्स भेज दी। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सिस्टम्स पर हैकर ने खतरनाक हमला करके लाखों मेल्स भेज दी। FBI ने कहा कि वाक़े से मुतासिर हार्डवेयर को मसला सामने आने के फौरी बाद ऑफलाइन कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ईमेल सिस्टम में हैकर्स ने दाखिल होकर मुमकिन साइबर हमले की लाखों इंतबाही पैगामात अरसाल कर दिए। भारत में नजरे आतिश की गई मस्जिद का बताने पर खातून सहाफी पर मुकदमा। भारत में 2 खातून सहाफी रियासत त्रिपुरा में जलाई गई मस्जिद और मुसलमानों की इमलाक की वीडियो सामने ले आई। इंतहा पसंद हिंदुओं का पर्दा चाक करने पर हुकूमत और इंतहा पसंद आग बगोला हो गए। पुलिस ने दोनों सहाफियों पर मुकदमा दर्ज करके इन्हें होटल से निकलने से रोक दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली आमिर यासीन चौधरी और यासिर सुल्तान चौधरी ने मेंबर असम्बली का हलफ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक ने 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली से हलफ लिया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर वज़रा हुकूमत ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। आमिर यासीन चौधरी और यासिर सुल्तान दोनों मेंबरान असम्बली ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होकर आए। पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन चौधरी ने अपने वालिद की खाली करदा नशिस्त पर, जबकि तहरीके इंसाफ के यासिर सुल्तान भी अपने वालिद की खाली करदा नशिस्त पर कामयाब होकर मेंबर असम्बली बने हैं। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी USA से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी USA। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कश्मीर के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में तफसीली मुलाकात हुई। इस मौके पर मुलाकात में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मसला कश्मीर और अपने अमरीका, बरतानिया और यूरोप के हालिया दौरों पर ब्रीफिंग दी। त्रिपुरा मुस्लिम मुखालिफ फसादात कौमी अकलीती कमीशन ने हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी अकलीती कमीशन ने मसाजिद, मुसलमानों के अमलाक पर हमलों पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। भारत के कौमी अकलीती कमीशन ने रियासत त्रिपुरा में मसाजिद और मुसलमानों के मकानात और दुकानों पर हमले के मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर इससे जवाब तलब किया है। जराये के मुताबिक अकलीती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में सहाफियों को बताया कि त्रिपुरा में मसाजिद और मुसलमानों के मकानों और दुकानों में तोड़ फोड़ के वाक़े का अज खुद नोटिस लेते हुए रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान शुमाली त्रिपुरा की सब डिवीजन पानी सागर में एक मस्जिद और मुसलमानों की 3 दुकानों और मकानों पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजकर हमलावरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है। इसके अलावा इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, किस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात दोबारा ना होने के लिए क्या इकदाम किए गए, इस हवाले से भी रिपोर्ट तलब की गई है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक के कारकुन को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने जिला इस्लामाबाद से इंसानी हकूक के कारकुन तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक तालिब हुसैन को पुलिस ने उनके खिलाफ 3 हफ्ते कबल लारनो पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए एक मुकदमे में जिला के इलाके कोकरनाग में उनके घर से हिरासत में लिया। तालिब हुसैन को गुज़श्ता माह जिला में भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से एक कबायली नौजवान परवेज अहमद के कत्ल के बाद मुतासरा खानदान का इंसाफ की फरहमी का मुतालबा करने पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। 7 अक्टूबर को पेश आने वाले वाक़े को तालिब ने जाली मुकाबला करार दिया था। SHO लारनो के मुताबिक तालिब ने मुकामी लोगों को काबिज इंतजामिया और भारतीय फोर्सेस के खिलाफ उकसाया था। तालिब ने अपने भाई को बताया है कि पुलिस ने इसे गुज़श्ता माह परवेज अहमद के कत्ल के बारे में जारी की गई 14 मिनट दौरानिये की वीडियो की वजह से गिरफ्तार किया है। तालिब हुसैन के वकील तारिक ने मीडिया को बताया कि उन्होंने जमानत के लिए दरख्वास्त दे दी है और उम्मीद है कि तालिब को जमानत मिल जाएगी। तालिब हुसैन इस वक्त महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता है। भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, मकबूजा कश्मीर में मजीद 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस और बदनाम जमाना तहकीकाती इदारे NIA ने बारमूला और गंदरबल के इजलास से 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक NIA के एहलकारों ने 2 नौजवानों राशिद मुजफ्फर गनाई और नासिर मीर को जिला बारमूला के कस्बा सोपुर से गिरफ्तार किया। भारतीय पुलिस ने जिला गंदरबल के इलाके सहपुरा से अरशद अहमद मीर नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। भारत के इलाके रांची में हिंदू इंतहा पसंदों का कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद। भारतीय रियासत झारखंड के इलाके रांची में हिंदू इंतहा पसंदों ने 3 कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया और इन्हें पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किया। जराये के मुताबिक रांची में तजारत की गर्ज से आए कश्मीरी नौजवानों बलाल अहमद, शबीर अहमद और वसीम अहमद को हिंदू इंतहा पसंदों ने गन पॉइंट पर पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किया और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा इन्हें धमकी दी कि वो फौरन शहर से चले जाएं, नहीं तो इन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। बलाल ने सहाफियों को बताया कि वो मौसम सरमा में गर्म कपड़े बेचने के लिए रांची आते हैं, ताहम गुज़श्ता चंद दिनों से इनके साथ मुकामी लोगों का रवैया अचानक बदल गया है और वो मुसलसल इन्हें हरासा कर रहे हैं। उधर कश्मीरी नौजवानों ने खुद पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले और पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर किए जाने के बारे में डोरांडा पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी दरख्वास्त दी है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वक्फा बराए अजान। अजान ब्रॉट टू यू बाय शाहनवाज पैलेस, डाउन ट्रैवल, धूम रेस्टोरेंट, क्रीसेंट अकाउंटिंग, वुड हेवन मेनोर, शफीक सीपीए एंड हमजा स्टूडियो। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.